Please join me in welcoming, ma'am. Please, we will be screening a short film first, so please, if you can. Yeah. Yes, yes, yes. Yeah. So, good morning, everyone. Please welcome Vice Chancellor, Honorable Vice Chancellor Dr. Pragya Paliwal Gaud, with Registrar and all the faculty members. Please, you can have your seat. I would like to inform you that this inaugural session is not confined to this hall alone. All the regional campuses of the Institute, Dhenkanal, Aizawl, Amravati, Jammu, and Kottayam, they have joined through online mode, and the newly admitted students at each of these campuses, along with their faculty members, are also watching this session live. So before we formally commence the proceedings of the orientation session, we would like to acquaint yourself with the institution which you are now part of. We shall now screen a short film about IIMC, its journey, its mandate, and its enduring contribution to media education in the country. All of you are requested to please put your mobile phones on silent mode. We'll be starting this short movie. Sanjeev, please. Institute of Mass Communication has been synonymous with excellence in media education for over 6 decades. Established in 1965 as a training institution for officers of the Central Information Service, IIMC has evolved with the changing needs of the media and communication landscape. Today, as a deemed-to-be university under the Ministry of Information and Broadcasting, Government of India, it continues to build on its rich legacy while preparing the next generation of media professionals, communicators, and researchers for an increasingly dynamic and interconnected world. Over the years, IIMC has earned the distinction of being one of India's premier institutions for media education, with 5 regional campuses extending its academic reach across the country. Thousands of its alumni today occupy positions of responsibility in newspapers, television channels, digital media organizations, advertising agencies, public relations firms, government institutions, academia, and the corporate sector. The Institute offers postgraduate diploma programs in Hindi journalism, English journalism, radio and television journalism, advertising and public relations, besides programs in Malayalam journalism, Marathi journalism, and Odia journalism. These programs combine academic rigor with extensive practical training, enabling students to understand the changing dynamics of journalism and communication, while developing the professional skills demanded by the industry. Recognizing the rapid transformation taking place across the global communication ecosystem, IIMC has expanded its academic portfolio with a range of postgraduate programs designed for emerging areas of specialization. The 2-year Master's Program in Strategic Communication and Media Business Studies have successfully completed 2 years, while the Master's Program in New Media has been introduced last year in 2025. This year, the Institute has introduced 3 new Master's Programs in Health Communication, Media and Communication Governance, and Corporate Communication and Brand Management. Beginning next year, IIMC will also launch a postgraduate diploma in Sports Management, opening new opportunities in one of the fastest growing sectors of the media and communication industry. Alongside its academic programs, IIMC continues to play a significant national role as the designated Central Training Institute for Officers of the Indian Information Service. The Institute conducts induction and in-service training programs for IAS officers at different stages of their careers and regularly organizes capacity building programs for officers from the armed forces, central and state government departments, and other public institutions.
As an active participant in Mission Karma Yogi, IIMC works closely with other central training institutes in strengthening the professional capabilities of India's civil servants through contemporary communication and media training. IIMC has been awarded the Utkrisht category in the Capacity Building Commission, marking an important milestone in its remarkable legacy. Its community radio station, among the oldest in the country, has, for over 2 decades, served as a platform for participatory communication, public awareness, and community engagement. It has also emerged as an important center for training, knowledge sharing, and capacity building, reinforcing the transformative role of community media in inclusive development. The recently established incubation centers are encouraging students to transform creative ideas into sustainable media enterprises by providing mentoring, guidance, and institutional support. These centers seek to bridge the gap between academic learning and the rapidly evolving media industry. The Institute's state-of-the-art computer laboratories, television and radio production facilities, modern classrooms, auditoriums, and conference halls provide students with an environment that closely mirrors professional media organizations. Well-maintained hostels, sports facilities, open gyms, green spaces, and collaborative learning areas contribute to a holistic educational experience, encouraging intellectual growth, creativity, and personal development. It is also strengthening its physical infrastructure. A new academic-cum-hostel block equipped with modern classrooms, advanced computer laboratories, television studios, seminar halls, a library, auditorium and hostel facilities. With the introduction of doctoral studies, IIMC has entered a significant new phase in its evolution as a university. The first batch of PhD scholars has already commenced its academic journey. The emphasis on research has received further impetus through an important initiative announced by the Honorable Chancellor, Shri Ashwini Vaishnav. Fellowships for working journalists at IIMC will provide media professionals with opportunities to undertake research on issues of contemporary relevance. Journalists are given an opportunity to specialize in a field. That way, they can work on any sector that they select to work in. कई लोग डिफेंस में स्पेशलाइज करते हैं, कई लोग इकोनॉमी में स्पेशलाइज करते हैं, कई लोग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड सब्जेक्ट्स में स्पेशलाइज करते हैं. Then they can basically create a complete kind of knowledge reservoir, and so many journalists have written good books in the subjects in which they specialize. So I will request the IIMC, now it's a university, I'll request the IIMC University to please start a fellowship program for the journalists who would like to specialize in different subjects. The Institute has also been creating opportunities that extend learning far beyond the campus. Students of IIMC participated in the International Film Festival of India in both 2024 and 2025, where they attended masterclasses, workshops, and interactive sessions conducted by eminent filmmakers, media professionals, and industry experts. Learning by doing has always been central to the IIMC experience. This philosophy found expression in the Stories of Change project, supported by the Central Bureau of Communication. Under the guidance of faculty mentors, students from all IIMC campuses conceptualized, researched, filmed and produced 10 documentary films showcasing India's remarkable developmental journey towards Viksit Bharat at 2047. Another significant milestone
came during the 57th convocation of the Institute. On this occasion, the Honorable Vice President of India announced the Sansad Internship Program for students of IIMC. The first batch has already completed the internship. That's why when I was talking to both your Chancellor, the Minister, and your Vice Chancellor, that if the outstanding students, they want to do some internship or they want to do some project, they can very well be in touch with my secretary, Amit Kare. So you can do a project, you can do one day, you can come, sir, I will organize all the programs of today as a project by myself. Yes, you can do it, and I will ask him to help you everything. You want to make a documentary film? Yes, you can make. As media continues to evolve with technological innovation, artificial intelligence, and new forms of communication, IIMC's AI Academy in Media and Entertainment is functioning with the aim to build future-ready AI capabilities in media professionals, media academia, and government officials. As India moves towards the vision of Viksit Bharat at 2047, the Indian Institute of Mass Communication remains committed to shaping professionals who will inform, communicate, inspire, and lead. Rooted in a distinguished legacy and driven by an unwavering commitment to excellence, IIMC continues its journey, preparing not only media professionals for tomorrow, but also contributing to the future of journalism, communication, and knowledge creation in India. Thank you RTV department for the beautiful film. अब किसी भी संस्थान की, अकादमिक संस्थान की ऐसी परंपरा जो हमें याद दिलाती है कि ज्ञान की एक छोटी सी लो भी अज्ञान के घने अंधेरे को हराने में समर्थ है, तो इसी क्रम में मैं अब माननीय कुलपति महोदया, रजिस्ट्रार सर प्रोफेसर राकेश गोस्वामी, प्रोफेसर प्रमोद कुमार जी को आग्रह करूंगा कि आप मंच पर आएँ और दीप प्रज्वलन के लिए पधारें। कुछ नए विद्यार्थी प्लीज़ स्टेज पर आएं।
अब सभी डिग्निटरी से अनुरोध है कि कृपया अपने अपने स्थान पर आ जाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। Now I would request everyone in this hall and those who are joining online from the regional campuses to kindly rise for the national song and national anthem. Dear students of the academic session 26-27, a very good morning to each one of you and a very warm welcome
to the Indian Institute of Mass Communication. I am Dr. Pawan Kondal, Associate Professor at New Media Department and also heading Publications, Social Media and IT Department. It is my privilege as a moderator of this session to welcome all of you to the Satraram Samaroh, the Orientation Program 26-27 of the IIMC. Today marks the formal commencement of the academic session 26-27, and this inaugural session is the first occasion on which you formally enter the academic life of this institute. साथ ही हमारे रीजनल कैंपस के सभी विद्यार्थियों का और मैं माननीय कुलपति महोदया की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप जहां भी बैठे हैं, आप एक ही इंस्टीट्यूट और एक ही एकेडमिक कम्युनिटी का हिस्सा हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। आई रिक्वेस्ट द कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन प्रोफेसर राकेश गोस्वामी टू काइंडली felicitate Honorable Vice Chancellor Dr. Pragya Paliwal God. Tanisha. I further request Dean Students Welfare Professor Pramod Kumar to kindly felicitate Registrar Shri L. Madhunag ji. Thank you. Dear students, we have some sessions on different aspects of this institute, like DSW, control of examination, academic life, and also on IT. So before starting this session, I would like to request dignitaries on the desk to please join the front row so that we can present the content. Yes. So, I now invite Professor Pramod Kumar, Dean of Students Welfare, the principal point of contact for students on all matters concerning hostel accommodation, student conduct, grievance redressal, scholarships, campus life. So, sir, floor is yours. धन्यवाद डॉक्टर पवन जी। Honorable Vice Chancellor Dr. Pragya Paliwal God ji, Registrar Sir Shri L. Madhunag, Controller Examination Professor Rakesh Goswami ji, and our faculty members, Professor Anubhuti Yadav, who is Head of New Media Communication, Professor Sunetra Sen Narayan ji, who is Head of Health Communication, Dr. Meeta Ujjain ji, who is Head of AD and PR Department, Professor Sangeeta Padavendra ji, who heads the Department of RTV and also the Community Radio, Apna Radio, Dr. Rachana Sharma ji, who heads the Department of Hindi Journalism, Dr. Rakesh Upadhyay ji, who heads the library and also is in charge of Rajbhasha, Dr. Shri Ashish ji, हमारे डिप्टी रजिस्ट्रार हैं, all our other faculty members, dear students and parents and guardians of the students. Students from all campuses have joined this orientation session, and our faculty members from other campuses have also joined. So I welcome all of you at this inaugural session. जब दीप प्रज्वलन हो रहा था, मुझे ऐसा लग रहा था कि आपकी तालियों में कुछ दम नहीं है, इसलिए एक बार अपने लिए तालियां बजा दिए जोर से। दिखना चाहिए कि आज हमारा इनॉग्रल सेशन शुरू हो रहा है। आपका एक सपना पूरा हुआ ऐसा हम मानते हैं। IIMC में एडमिशन लेना एक ड्रीम था जो पूरा हुआ है ऐसा मानते हैं, और सभी स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है, लेकिन मैं मानता हूं कि ये ड्रीम अब पूरा हुआ है। लेकिन वास्तव में जो कुछ देखने के लिए आपके पेरेंट्स और गार्जियंस भी यहाँ इस हॉल में हैं और हमारे रीजनल कैंपसेस में भी गए हुए हैं,
वो जर्नी आपकी आज से शुरू होती है। और इस यात्रा में आपको ठीक से ट्रेनिंग देने के लिए हमारे पास लर्नेड फैकल्टी है। ऑनरेबल वीसी मैम ने हमें इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स को भी एंगेज करने की फुल परमिशन दी हुई है, इसलिए आपकी ट्रेनिंग में कोई कमी नहीं होगी। और इस बार हमारे पास एक्सपर्ट फैकल्टी का नंबर पहले से ज़्यादा है। दिस टाइम वी हैव मोर असिस्टेंट प्रोफेसर्स, जो हमारे पास पहले कम होते थे लेकिन इस बार ज़्यादा हैं। लेकिन इस सारे पूरे माहौल में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मैं समझता हूं कि आपको जानकारी रहनी चाहिए। हमारी भी जिम्मेदारी, आप इस इंस्टीट्यूशन में आए, आपके गार्जियंस पेरेंट्स की भी ये चिंता रहेगी हमेशा कि हमने जिस इंस्टीट्यूशन में अपने स्टूडेंट को भेजा है वहाँ उसकी कितनी चिंता होती है। मैं एज डीन स्टूडेंट वेलफेयर आपको ये भरोसा दे सकता हूँ, अगर आप ईमानदारी से मेहनत करके अपनी पढ़ाई कर रहे हैं तो IIMC में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप कहीं थोड़ा बाएं दाएं होते हैं तो वो भी चिंता मैं ही करूँगा, उसकी चिंता आप मत करिए। बाकी आपके पेरेंट्स यहाँ बैठे हैं, उन सब से हमारा जो कनेक्ट है वो इस साल बहुत बेटर रहने वाला है। हमारे जो सभी पेरेंट्स गार्जियंस को हम रेगुलर अपडेट्स आपके बारे में देते रहेंगे। तो DSW और यहाँ IIMC में एज DSW क्या क्या आपको हम हेल्प कर सकते हैं और आप किन कामों के लिए मुझसे संपर्क कर सकते हैं, और आपकी फुल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में क्या क्या चीज़ें हैं जो क्लासरूम से बाहर आपके लिए बहुत ज़रूरी है जानना, वो सब जानकारी मैं थोड़ी आपको आज देने वाला हूँ। The overall focus of Dean Student Welfare Office is the DSW supports overall growth and well-being of students, promotes a positive intellectual, social and cultural environment in campus, helps students realize their full potential, serves as a bridge between students and IIMC administration. And the DSW represents student matters as a member of discipline committee and other student related committees. Okay. कुछ डिसिप्लिन रिलेटेड मैटर्स होते हैं तो उसमें कई बार स्टूडेंट्स को लगता है कि उनकी बात कौन कहेगा, तो उनके सब मैटर्स को रखने के लिए DSW ऐसी सब कमेटीज़ का मेंबर होता है। तो आपको कहीं आपकी बात ठीक से सुनी जाएगी, लेकिन ऐसी कोई प्रॉब्लम, ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं हो तो ये ही अच्छा है। बाकी DSW स्टूडेंट वेलफेयर एंड सपोर्ट के लिए जो भी एक्टिविटीज़ है उन सब की व्यवस्था देखता है। कल्चरल, सोशल, स्पोर्ट्स एंड को करिकुलर एक्टिविटीज़, ये बहुत सारी एक्टिविटीज़ है, मैं आगे आपको ब्रीफ करने वाला हूँ। वी हैव डिफरेंट सोसाइटीज़, जो स्टूडेंट्स अदर इंस्टीट्यूशंस से आए हैं, अलग अलग इंस्टीट्यूशन से आए हैं, उन सबको जानकारी होगी। ए गुड नंबर ऑफ इंस्टीट्यूशंस हैव स्टूडेंट्स क्लब, स्टूडेंट सोसाइटीज़। सो वी ऑल्सो हैव 6 स्टूडेंट सोसाइटीज़। 6 सोसाइटी अभी हमारे पास है, मैं ब्रीफ में आप अभी आगे थोड़ा और बताने वाला हूँ। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि 6 के बाद 7 नहीं हो सकती। इफ़ यू हैव गुड आइडिया तो हम 7वीं सोसाइटी या 8वीं सोसाइटी भी कर सकते हैं। और ये सारी सोसाइटीज़ बेसिकली आपके अंदर एक ऐसा टैलेंट है, हिडन टैलेंट है, जो क्लासरूम में भी नहीं दिखता, लेकिन आपके अंदर वो प्रतिभा है, वो प्रतिभा सामने आनी चाहिए। लेकिन ये सारी सोसाइटी ऐसी है जो कहीं ना कहीं आपको अपने देश से, समाज से, आपके आसपास के वातावरण से आपको कनेक्ट करती है। अगर इन्वायरमेंट सोसाइटी की बात करें, आपको पर्यावरण से कनेक्ट करती है। चाहे डिबेटिंग स्किल की बात करें, लिटरेचर की बात करें, मीडिया की, अलग अलग सोसाइटीज़ आपको कहीं ना कहीं किसी चीज़ से कनेक्ट करती है और नई चीज़ आपको सिखाती है। स्कॉलरशिप एंड फाइनेंशियल असिस्टेंस, ये भी बहुत सारे स्टूडेंट्स का विषय रहता है। तो स्कॉलरशिप के लिए आप कैसे, कहाँ अप्रोच कर सकते हैं, ये भी मैं आपको बताऊंगा। और हमारे कैंपस में जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। हमारे पास जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, डॉक्टर्स अलग अलग दिनों बैठते हैं, वो बताऊंगा मैं। काउंसलिंग और वेलबींग ऑफ स्टूडेंट्स, मेंटल हेल्थ काउंसलर्स भी हमारे कैंपस में हैं, उनसे
सिर्फ दिल्ली कैंपस नहीं, हमारे जो रीजनल कैंपसेस हैं उनके स्टूडेंट्स भी मेंटल हेल्थ काउंसलर से संपर्क कर सकते हैं। एलुमनाई कनेक्ट की जिम्मेदारी भी है, जितने, क्योंकि 1 साल बाद या 2 साल बाद आप भी एलुमनाई हो जाएंगे, तो आप सबसे एक कनेक्ट रहना चाहिए, क्योंकि हमारी संस्कृति ये है, हमारी सफलता इस बात में है कि यू आर पेइंग बैक आफ्टर ग्रोइंग विंग्स। आप जब अपने कैरियर में कामयाब होंगे तो वापस आप अपने इंस्टीट्यूशन से, इस इंस्टीट्यूशन में जो और दूसरे स्टूडेंट्स आने वाले हैं, आपके जूनियर्स आएंगे, उन सब के डेवलपमेंट में भी आप कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, ये भी आपको एलुमनाई कनेक्ट की जिम्मेदारी डीएसडब्ल्यू के पास है। आईआईएमसी इसका विशेष खास तौर से ध्यान रखता है। स्टूडेंट एडमिनिस्ट्रेशन कनेक्ट, सपोर्ट फॉर वीमेन एंड दिव्यांग स्टूडेंट्स, ऐसा कोई मैटर है तो वो भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मेंटेनेंस ऑफ स्टूडेंट्स रिकॉर्ड्स, आप सभी जब बाद में जाएंगे तो आपका रिकॉर्ड भी आईएमसी में रहेगा। रीजनल कैंपस कोऑर्डिनेशन, रीजनल कैंपस में भी सारे स्टूडेंट्स हैं, वो डीएसडब्ल्यू से कैसे कनेक्ट होंगे वो भी जानकारी मैं आपको दूंगा। कम्युनिकेशन विद पेरेंट्स एंड गार्जियंस, वो सिस्टम हमने इस बार स्ट्रेंथन किया है। गार्जियन पेरेंट्स को हम रेगुलर अपडेट्स स्टूडेंट्स के बारे में देंगे, उनकी अटेंडेंस के बारे में भी देंगे। आईएमसी में जो एक्टिविटीज़ हो रही हैं, स्टूडेंट्स का जो पार्टिसिपेशन उन एक्टिविटीज़ में है, उसके बारे में भी रेगुलर अपडेट्स उन्हें जाएगा। और जो कैंपस डिसिप्लिन है, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। और ग्रीवेंस रिडर्सल, वो कहीं आपकी कोई ग्रीवेंस है, उसके भी आपको कहीं हेल्प चाहिएगी तो वो आपको मिलेगी। हॉस्टल के बारे में एक जानकारी, मुझे लगता है जो स्टूडेंट्स हॉस्टल में आए हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने हॉस्टल के लिए अप्लाई किया था और पूरा सिस्टम ट्रांसपेरेंट था, पूरी इन्फॉर्मेशन वेबसाइट पर है। और हॉस्टल के बारे में किसी को कोई भी कैसे हॉस्टल अलॉटमेंट हुआ है, ये सारी जानकारी ट्रांसपेरेंट है। आपकी जो मेरिट है, सीयूटी स्कोर है, उसके आधार पर ये अलॉटमेंट हुआ है। और इसमें जो रिजर्वेशन रोस्टर है, जो रिजर्वेशन SC ST OBC EWS दिव्यांग, इन सब का भी ध्यान रखा गया है। जिसका जितनी सीट्स बनती है वो सब उन्हें दी गई है। हमारे पास 2 हॉस्टल है, एक बॉयज़ हॉस्टल है जिसमें टोटल स्ट्रेंथ 42 बेड्स की है। गर्ल्स हॉस्टल उसमें सिंगल रूम भी है, शेयरिंग भी है, डॉर्मेट्री भी है, उसमें टोटल 77 बेड्स हैं। और बॉयज़ हॉस्टल के जो वार्डन है हमारे श्री आशीष कुमार सिंह हैं, जो हमारे डिप्टी रजिस्ट्रार भी हैं। कभी किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, और वो भी आप सबकी सारी एक्टिविटीज़ का पूरा मॉनिटरिंग करते रहेंगे। आप ये मत सोचिएगा कि वो डिप्टी रजिस्ट्रार हैं, अपने काम में व्यस्त रहेंगे, वो पूरा ध्यान रखेंगे। गर्ल्स हॉस्टल की जो इंचार्ज हैं, वार्डन है मिस मीनाक्षी हैं, वो अभी इस कार्यक्रम में हैं कि नहीं अभी शायद जानकारी नहीं है, लेकिन वो बराबर आपके संपर्क में रहेंगी। स्टूडेंट सपोर्ट जो है, हॉस्टल एडमिनिस्ट्रेशन, स्टूडेंट असिस्टेंट्स थ्रू द डीएसडब्ल्यू ऑफिस, हॉस्टल से रिलेटेड कोई मैटर है तो आप ये कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन कुछ हॉस्टल के रूल्स हैं, जो आपने कुछ अंडरटेकिंग साइन भी की होंगी हॉस्टल से रिलेटेड, आपको उसमें रूल्स एंड रेगुलेशन सब बताए गए होंगे। और जब आपने वो अंडरटेकिंग साइन की है तो हम ये मानते हैं कि आपने वो पढ़कर साइन की है। अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन है उसे फिर से पढ़ लें। हॉस्टल में एंट्री का टाइम, यानी आप एंटर हुए तो रात में 10 बजे तक आपको एंटर होना है, उसके बाद फिर आप आएंगे तो वो इन्फॉर्मेशन आपके पेरेंट्स को जाएगी, सेम डे जाएगी, आप ध्यान रखें। अगर कहीं भी आपकी रिपोर्टिंग में कोई गड़बड़ होती है तो फिर आपके पेरेंट्स को जानकारी मिलेगी। आप ये मत सोचिएगा कहीं जानकारी नहीं है, पूरा कैंपस सीसीटीवी सर्विलांस है, तो कहीं भी आप घूम रहे हैं तो ऐसा नहीं कि किसी को पता नहीं है। और ये भी आपको मैं बता दूं, फुटेज हमारे पास बहुत लंबी ड्यूरेशन की हम सेव रखते हैं। कोई ऐसा नहीं कि 1 दिन 2 दिन में कोई फुटेज गायब होगी तो पता नहीं चलेगा। तो ये आप सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करेंगे तो मुझे लगता है इन सब बातों की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। मेडिकल फैसिलिटीज़ के बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं। ऑलमोस्ट एवरी डे, मंडे टू फ्राइडे, यहाँ कैंपस में कोई ना कोई डॉक्टर अवेलेबल है। 1 से 2 बजे डॉक्टर अवेलेबल है, डॉक्टर रूम है वहाँ। हॉस्टल जो गर्ल्स हॉस्टल है उसके पास डॉक्टर रूम है, वहाँ पर आप डॉक्टर से मिल सकते हैं किसी को कोई प्रॉब्लम है। इसके अलावा अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी कभी है तो आप इन्फॉर्म करेंगे हॉस्टल वार्डन को, और आपको हॉस्पिटल ले जाने की व्यवस्था IIMC करेगा।
इस बात को आप ध्यान रखें। किसी को मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ेगी तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं DSW ऑफिस से, या आप अपने वार्डन से भी कांटेक्ट कर सकते हैं। रात में भी ज़रूरत पड़ेगी तो आपको हॉस्टल पहुंचाने की जिम्मेदारी हम लोगों की है, बाकी हम हेल्प करेंगे। मेंटल हेल्थ सपोर्ट के लिए मैंने कहा वी हैव मेंटल हेल्थ काउंसलर डॉक्टर अपूर्व सप्रा। शी इज़ अवेलेबल इन IIMC कैंपस ऑन मंडे from 1 to 2 p.m. and she is also available for the students of other campuses. ऑनलाइन काउंसलिंग के लिए वो सब मैकेनिज़्म है। वाईफाई कनेक्टिविटी है पूरे कैंपस में, और CCTV सर्विलांस मैंने आपको बताया है। स्टूडेंट्स आर एक्सपेक्टेड टू फॉलो द यूनिवर्सिटी IT एंड कैंपस रेगुलेशंस। IT के बारे में डॉक्टर पवन कोंडल जी आपको जानकारी देंगे। डिटेल शेड्यूल एंड ऑपरेशनल गाइडलाइंस विल बी शेयर्ड सेपरेटली। मैंने आपको स्टूडेंट सोसाइटी के बारे में बात की थी। दीज आर द स्टूडेंट सोसाइटीज़। वी हैव अस्मिता द कल्चरल सोसाइटी, सृजन लिटरेचर सोसाइटी, जोश स्पोर्ट्स सोसाइटी, मीडिया मंथन मीडिया एंड कम्युनिकेशन, एंड देन वसुंधरा इन्वायरमेंट सोसाइटी, संवाद डिबेटिंग सोसाइटी। मैंने आपको कहा कि अगर आपके पास कोई अच्छा आइडिया है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और ये सोसाइटी बेसिकली आप में जो टैलेंट है अलग अलग, आप अपने कहीं बार आपको लगता है कि जैसे डिबेटिंग सोसाइटी है, डिबेटिंग सोसाइटी ज्वाइन करने के बाद हो सकता है अभी आप में डिबेटिंग स्किल कमज़ोर होगी, आप ये सोसाइटी ज्वाइन करके अपनी स्किल को इम्प्रूव कर सकते हैं। और सारी सोसाइटी जो कहीं ना कहीं आपको अपने आसपास के एनवायरनमेंट से, अपने सोसाइटी से, अपने देश से, अपने समाज से, अपने इंस्टीट्यूशन से कनेक्ट करती है, तो इसका आपको पूरा लाभ लेना चाहिए। अब इसमें एक सवाल आपकी ओर से आ सकता है, आप सोच रहे होंगे कि ये ज्वाइन कैसे करनी है। जो आपके सीनियर्स हैं MA कोर्सेस में खास तौर से, उनसे आप कांटेक्ट कीजिए। सब सोसाइटी के जब मेंबरशिप कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद सोसाइटी आपस में इलेक्शन सिलेक्शन जो भी करना है वो करेगी, और इसमें मतलब DSW ध्यान रखेंगे, लेकिन सिलेक्शन इलेक्शन आप ही को करना है। तो आप आपस में, यानी जो मेंबर्स उस सोसाइटी के होंगे वही करेंगे। और अभी सब सोसाइटी के सब हम आपस में कुछ फैकल्टी भी मेंटर्स बना देंगे, तो वो भी हर सोसाइटी की निगरानी करेंगे। कल्चरल सोसाइटी के बारे में मैं आपको बता दूं, एक बेसिकली इट सेलिब्रेट्स भारत रिच कल्चरल हेरिटेज थ्रू म्यूजिक, डांस, थिएटर एंड फेस्टिवल्स, encourages students to showcase their talent and celebrate the diversity of this nation. लास्ट ईयर कल्चरल सोसाइटी के स्टूडेंट्स ने एक भारत पर्व करके एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था, बहुत अच्छा इवेंट हुआ था। ऐसे इवेंट इस साल भी होंगे। लिटरेचर सोसाइटी है, जो आप लिटरेचर रिलेटेड इस चीज़ों को सबको सीख सकते हैं। और स्पोर्ट्स सोसाइटी है, ऐसे ही मीडिया एंड कम्युनिकेशन सोसाइटी है, इन्वायरमेंट सोसाइटी है, डिबेटिंग सोसाइटी है। ये सब चीज़ें मैंने आपको बताई है, और ये स्लाइड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि उन्हें स्कॉलरशिप वगैरह कहाँ से मिल सकती है। आपको जानकारी होगी IIMC ने एक स्कॉलरशिप शुरू की है, विद्या संजीवनी स्कॉलरशिप स्कीम। ये IIMC की मेरिट एंड मीन्स स्कॉलरशिप है, जो स्टूडेंट्स एलिजिबल हैं उनके लिए अवेलेबल है, ऑल कैंपसेस के स्टूडेंट्स के लिए है। और इसकी एलिजिबिलिटी सब आपको डिटेल में बता दी जाएगी। 2nd एंड 4th सेमेस्टर में ये स्कॉलरशिप दी जाएगी। जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होंगे, आप मतलब किसी ग्राउंड पर आप कहें कि मुझे मिलना चाहिए, बेसिकली ये सपोर्ट उन स्टूडेंट्स को मिलेगा जो अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं, जिनकी परफॉर्मेंस एग्ज़ाम में दिख रही है। जैसे इस बार आपकी CUET का स्कोर है, ऐसे ही जो एग्जामिनेशन का आपका स्कोर होगा उसके ग्राउंड पर आपको ये स्कॉलरशिप मिलेगी, लेकिन उसके साथ आपकी अटेंडेंस भी इसमें काउंट होगी, तो अटेंडेंस का भी ध्यान रखना है। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के बारे में आपको जानकारी होगी। SC ST OBC स्टूडेंट्स के लिए ये है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम है, और स्टूडेंट्स वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। हमारे यहाँ इंस्टीट्यूशन में एक मैकेनिज़्म है, नोडल ऑफिसर हैं, वो आपकी एप्लीकेशन को आगे जो भी वेरिफिकेशन करना वो करेंगे, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। और शायद कुछ स्टेट्स गवर्नमेंट्स ने भी कुछ स्कॉलरशिप शुरू की है, बिहार गवर्नमेंट ने की है, कुछ अदर स्टेट गवर्नमेंट्स ने की है। तो अगर किसी स्टूडेंट को लगता है कि उनके पर्टिकुलर स्टेट से कोई स्कॉलरशिप मिल सकती है, तो उसके लिए आप अप्लाई करेंगे, उसमें भी हम लोग आपको हेल्प करेंगे। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के बारे में थोड़ी सी मैं यहाँ जानकारी आपको दे रहा हूँ जिन्हें जानकारी नहीं है।
आप पोर्टल पर, नीचे पोर्टल का लिंक मैंने दिया है सिर्फ जानकारी के लिए, बाकी तो जब आप पोर्टल पर जाएंगे आपको जानकारी मिलेगी। रजिस्टर ऑन एनएसपी, कंप्लीट ऑनलाइन एप्लीकेशन, अपलोड डॉक्यूमेंट्स, वेरिफिकेशन बाय आईआईएमसी, देन स्कॉलरशिप प्रोसेसिंग। और ये सारी इन्फॉर्मेशन, चूँकि आपका अकाउंट होगा, आपके पास इन्फॉर्मेशन आती रहेगी और आपको डायरेक्ट डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र आपके अकाउंट में पैसा आएगा, इसमें कहीं कोई कन्फ्यूज़न नहीं है। विद्या संजीवनी जो हमारी स्कॉलरशिप स्कीम है उसके बारे में देख लीजिए। नोटिफिकेशन एक सभी स्टूडेंट्स के पास आएगा, सभी कैंपसेस में आएगा, तो आप उस नोटिफिकेशन के बाद एप्लीकेशन सबमिट करेंगे, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, सिलेक्शन कमेटी फिर डिसाइड करेगी, और सिलेक्शन कमेटी कोई अलग से कुछ नहीं करने वाली। जो आपकी परफॉर्मेंस है एग्ज़ाम्स में, अटेंडेंस, जो पैरामीटर्स बताए गए हैं, जो पहले से डिफाइन किए गए हैं, उन्हीं पैरामीटर्स पर आपको स्कॉलरशिप मिलने वाली है और बाद में फिर स्कॉलरशिप आपको अवार्ड हो जाएगी। कुछ हमारे पास और भी स्कॉलरशिप्स है, कुछ डिपार्टमेंट्स में है, ये सब डिपार्टमेंट्स में नहीं है। रति अग्रवाल स्कॉलरशिप फॉर हिंदी जर्नलिज्म स्टूडेंट्स, और इसमें भी मेरिटोरियस फीमेल स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप है। तो आप में से जो हिंदी जर्नलिज्म के स्टूडेंट्स हैं जो इसके लिए एलिजिबल हो सकते हैं उन्हें मिलेगी। फिर हमारे पास अचिन गांगुली स्कॉलरशिप फॉर एडी एंड पीआर स्टूडेंट्स के लिए है। 2 मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को ये स्कॉलरशिप मिलने वाली है। स्टार टीवी स्कॉलरशिप फॉर आरटीवी स्टूडेंट्स, ये भी मेरिटोरियस स्टूडेंट्स को मिलेगी। और जसविंदर सिंह मेमोरियल स्कॉलरशिप फॉर आरटीवी एंड हिंदी जर्नलिज्म स्टूडेंट्स, इसकी भी एलिजिबिलिटी 1 फ्रॉम ईच प्रोग्राम ये मिलने वाली है। तो जो मेरिटोरियस है उन्हें ये आप सब अपना ध्यान कर सकते हैं, जब आपको ज़रूरत पड़ेगी, जिन्हें जो एलिजिबल हैं वो अप्रोच कर सकते हैं अपने अपने डिपार्टमेंट्स में। हमारे पास बहुत रिच लाइब्रेरी है, मैंने बताया डॉक्टर राकेश उपाध्याय जी लाइब्रेरी देख रहे हैं अभी। लाइब्रेरी में हमारे पास मोर देन 34,000 बुक्स हैं। बहुत रेयर बुक्स भी हैं जो आपको बाहर मास कॉम से जुड़ी हुई बुक्स बाहर नहीं मिलेंगी, हमारे यहाँ मिलेंगी। देश भर से बहुत सारे मास कॉम के रिसर्चर्स भी यहाँ आते हैं। तो आप लाइब्रेरी का जितना यूज़ करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा, और मैं कहूँगा कि आप सब इसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें। Our library also subscribes to over 82 journals, magazines and 32 leading newspapers. सबके लिए न्यूज़पेपर्स अवेलेबल है, हॉस्टल में भी न्यूज़पेपर्स अवेलेबल हैं, डिपार्टमेंट्स में वो आपके न्यूज़पेपर्स अवेलेबल हैं। और मैं ये जो बात कह रहा हूँ न्यूज़पेपर वाली, बहुत मैं इम्फेसिस कर रहा हूँ। आप में से कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो अखबार पढ़ना पसंद नहीं करते, लेकिन यहाँ आपको हर डिपार्टमेंट में 9:30 पर आपकी क्लास शुरू होगी, और वो 9:30 पर क्लास न्यूज़पेपर रीडिंग एंड डिस्कशन से शुरू होगी। इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ना सबके लिए मैंडेटरी है, ये आप ध्यान रखें। और जो अपनी क्लास में अच्छा परफॉर्मेंस करेगा उन्हें अलग अलग डिपार्टमेंट्स मोटिवेट करेंगे अपने अपने तरीके से, तो ये आप ध्यान रखें। देन वी हैव इंक्यूबेशन सेंटर। इंक्यूबेशन सेंटर प्रोफेसर अनुभूति यादव जी देखती हैं। इंक्यूबेशन सेंटर आपके लिए बहुत यूज़फुल है। अगर आप में कोई आउट ऑफ बॉक्स आइडिया है और आप उस आइडिया को मटेरियलाइज करना चाहते हैं, आप प्रोफेसर अनुभूति यादव जी से, पवन कौंडल जी से, इंक्यूबेशन सेंटर से संपर्क कर सकते हैं, और आपको बीच बीच में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी जिनका आप फ़ायदा उठा सकते हैं। कैंपस फैसिलिटीज़ हमारे पास कुछ है, आपको सिर्फ मैं बता रहा हूँ, बीच में आप हर डिपार्टमेंट के स्टूडेंट जब कैंपस में घूमेंगे आपको जानकारी मिलेगी। वी हैव टीवी स्टूडियो टू एनहांस एंकरिंग स्किल्स, अपना रेडियो स्टूडियोज टू लर्न रेडियो प्रोग्रामिंग, एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ फॉर फील्ड विजिट्स एंड पार्टिसिपेशन इन वेरियस नेशनल इंटरनेशनल इवेंट्स। ये आपको अपने क्लासरूम के बेसिकली प्रोग्राम के थ्रू ये सब अवेल कर सकते हैं। प्रोडक्शन ऑफ न्यूज लेटर्स, मैगजीन्स, डॉक्यूमेंट्रीज, रेडियो प्रोग्राम्स एज पार्ट ऑफ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, फोटोग्राफी वर्कशॉप होंगी। बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली है, और ये सारी चीज़ें आपको कैंपस में भी मिलने वाली है। सिर्फ ऐसा नहीं कि दिल्ली कैंपस में आपको मिलेंगी, हमारे सभी रीजनल कैंपस में ये मिलने वाला है। मैंने पेरेंट्स के बारे में बताया था, पेरेंट्स को हम इस बार संपर्क करेंगे। IIMC वैल्यूज़ द रोल ऑफ पेरेंट्स एंड गार्जियंस इन स्टूडेंट्स डेवलपमेंट। Periodic communication will be shared with them regarding students' progress and other important academic matters. आपकी अटेंडेंस भी है, और आपकी कहीं कुछ आप ऊपर नीचे करते हैं तो वो भी जानकारी आपके पेरेंट्स को समय पर पहुंच जाएगी, इसलिए सोच समझ कर करिएगा। IIMC is a professional institution that brings together some of the finest academicians, media professionals and industry leaders
We encourage you to make the most of every opportunity by maintaining professionalism, mutual respect, and responsible conduct by both inside and outside the classroom. Maintaining a safe, respectful, and disciplined campus is a shared responsibility. Any violation of the IIMC rules and code of conduct will be dealt with as per the IIMC regulations, and where necessary may involve the parents or guardians. तो ये आप ध्यान रखें. जो हमारे रीजनल कैंपस है, रीजनल कैंपसेस में DSW से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ हैं उन सब को देखने के लिए अलग अलग लोग नॉमिनेट किए गए हैं. इन ढेकनाल कैंपस वी हैव असिस्टेंट प्रोफेसर मिस्टर पारस यादव, इन कोटाहम डॉक्टर जिशा के, इन अमरावती डॉक्टर विनोद निताले, आइजोल कैंपस डॉक्टर रुआता, इन जम्मू मिस नेहा जलाली. हमारे जो रीजनल कैंपस के स्टूडेंट्स हैं वो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं. तो ये थोड़ी जानकारी आपको देनी थी. योर जर्नी एट IIMC इज़ अबाउट लर्निंग, ग्रोइंग एंड मेकिंग अ डिफरेंस. The DSW office is here to support you throughout. For any guidance or assistance, feel free to contact the DSW office. Thank you. Thank you, Pramod sir, for the very comprehensive presentation about DSW office and other aspects of IIMC. Now, I would like to invite Professor Rakesh Goswami, Controller of Examinations, to take you through the academic and examination framework of the institute, the structure of the program, scheme of evaluation, attendance requirement, etc. Sir. Good morning, everyone. Good morning, students, their parents, my colleagues on the faculty, both here in Delhi and on the regional campuses. And welcome to IIMC, everyone. For the sake of not sounding repetitive, I'm not going to thank the Vice Chancellor, Registrar, etc. I'm going to jump straight away into what is going to be very important for all of you. A lot of times we get students who say that, sir, हमने साइन तो कर दिया था लेकिन पढ़ा नहीं था. या कई स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर हमें सीनियर्स ने तो बताया था IIMC में ऐसा ही होता है, आप तो कुछ और बता रहे हैं. So for the sake of putting the record straight right at the beginning, this time Honorable Vice Chancellor said that we should tell you the rules once again, although all of you have signed your documents, the undertakings, etc. And we presume that you've read them before signing. So here goes. These are rules regarding attendance, examination, your conduct on the campus, how should you behave on social media, what is expected from you, what is not expected from you, what are the do's and don'ts. So the playbook. So I've divided these rules into 4 components. The first one is about your financial commitments, securing your seat, so which you have secured now, but how do you keep it secured? How do you not lose this seat is what we'll talk about in the financial commitments. The academic rigor, talking about the exams, etc. The professionalism on the campus conduct rules, and the hostel harmony. So first, about the financial commitments. Everyone has paid their first semester fee, but what is to be done about the subsequent semesters, and what happens if you for any reason miss the fee submission deadline. This is the matrix. For the second and fourth semester, which are the event semesters, if the fee is not paid by 1st March, then there are serious consequences, as you can see on the matrix. Fee for the benefit of parents who are also here, fee can be paid online through UPI and smart fee payment link. This slide is something that should etch in your mind, because this is the problem that we face every year when the first semester exams are announced. When some students are debarred, then there are a lot of problems
many students are not allowed to write their exams. We also understand their problem, but you should know the rules right in the beginning so that you don't face any problems. So the minimum requirement to appear for exams is 75% attendance, which is the baseline in green color. And that is also important for retaining your hostel accommodation. Those of you who are in hostel, if you fail to achieve this amount of attendance, then there may be a problem with your accommodation also. Below 70 is the danger mark. If your attendance is under 70%, then there is a problem. Not only you are debarred, but the hostelers also face the consequence of getting evicted from the hostel. The caution category, this I want everyone to read properly. Because a lot of people say that, I fell ill, my father fell ill, my mother fell ill, my friend, etc. And I was looking after them, so I could not come to the classes. So the only condonation which is possible on any health grounds only of the candidates is 5%, which is with the Honorable Vice Chancellor. So if you have valid health reasons supported by valid documents, there is a distinct description about what documents are required for health reasons in the prospectus. I'll request all of you to read the prospectus carefully. Only then those between 70 and 75% are allowed, and 80% and above is the excellent category. Why? Because only those who achieve 80% and above are eligible to apply for the scholarships. So if you are aiming to get financial assistance from the Vidya Sanjeevani scheme or other scholarships, you should aim for 80% and above. जो लोग अंग्रेज़ी नहीं समझते हैं उनके लिए इसको मैं दोबारा बता देता हूँ। परीक्षाओं में बैठने के लिए 75% अटेंडेंस अनिवार्य है। यदि किसी कारणवश आपकी 75% अटेंडेंस नहीं होती है, आप बीमार हो जाते हैं या कोई और कारण होता है, तो उस स्थिति में सिर्फ 5% की माफ़ी आपको मिलेगी, वो भी तब जब वैलिड डॉक्यूमेंट्स होंगे मेडिकल के। सिर्फ मेडिकल के लिए अलाउड है ये, और वो भी सिर्फ कैंडिडेट के लिए। जिनकी 70% से कम अटेंडेंस होगी उनके लिए ख़तरा है, इसलिए वो लाल रंग से दिखाया गया है। दो खतरे हैं, अगर आप हॉस्टल में रहते हैं, छात्रावास में रहते हैं, तो वहाँ से आपका अकोमोडेशन लूज़ हो जाएगा और आप एग्ज़ाम में नहीं बैठ पाएंगे। अगर आपको विद्या संजीवनी स्कॉलरशिप स्कीम का लाभ लेना है या दूसरी स्कॉलरशिप्स छात्रवृत्ति स्कीम्स का लाभ लेना है, तो उसके लिए आपको 80% या उससे अधिक अटेंडेंस लाने की कोशिश करनी चाहिए। To pass exams at IIMC, you need to score a minimum of 40% separately in theory and practicals. This is also a confusion that many students have कि हमारा तो overall score 60% दिख रहा है, तो फिर हमारे नाम के आगे asterisk क्यों लगा हुआ है? Because they may not have passed in both components. So you have to pass separately in theory and practical. Only then the asterisk will not appear against your name. What if I fail? So if you fail and you have 50% attendance, then you are eligible to sit for supplementary exams. When will supplementary exams be held? That is mentioned in the prospectus also. The supplementary exams are held with the subsequent exams, regular exams of that particular semester. So suppose you fail in the odd semester, which is semester 1 and 3, you will appear for the supplementary exam of odd semesters of the subsequent batch. If you fail in the even semester exams, you will appear for the supplementary exams with the regular exams of even semester subsequent year. Do I have the opportunity to improve my marks? I got these many marks, but I think I can score more. Yes, there is a facility for improvement. So the charges are mentioned there. But that again will happen with the subsequent that particular semester's exam. Rechecking, there is no system of re-evaluation here.
You can only apply for rechecking, which means मेरे marks की totaling में कोई गलती नहीं हुई है या मेरे किसी उत्तर को जांचने से छूट गया examiner से. So if the examiner has omitted marking any of the answers, or if there is a problem with totaling, only these two are allowed as per the rechecking provision. The do's: always wear your identity card around your neck. It should be a piece of pride for, like we do. It should be a piece of pride that you wear around your neck. Attend all mandatory seminars, lectures, etc. We have, like Professor Pramod Kumar said, there is a lot of extracurricular activity happening on the campus all the time. There will be a lot of special lectures, seminars, etc. And it is mandatory for you. I mean, obviously, we know that you will attend all of them. That's for your benefit. But just to underline, it is mandatory to attend all those things. Maintaining cleanliness on the campus, inside the classrooms, in your hostels, wherever you are. There are ample number of dustbins around, so whenever you have something to throw in the bin, please find a bin and not throw it elsewhere. What is not allowed: no mobile phones in the classrooms. No mobile phones means that the phone should be on silent mode. It's not that we will ask you to deposit it somewhere. No recording in the classrooms. And no visitors. You can't invite your friends कि आजा तुझे अपनी class दिखाता हूँ. For that they need to write the CUT exam, come through the counseling, get admission, and only then they can see the classrooms. That is when the teaching is happening. Otherwise, you are always welcome to get your friends, etc. But with proper permissions, with information to your HODs, to the administration, then you can, of course, there is no harm in showcasing where you are studying, but not during the class. कि आज हमारी class में आके बैठ जाना. And that is not allowed for even different programs. So it's not that one program student will sit in some other program. These are absolute zero tolerance zones. Ragging. I know all of you are very intelligent, so you will not do this. But still, it is my duty to tell you that this is a punishable offense. And what is the punishment is also mentioned there. Harassment. There is absolutely no tolerance for harassment of any gender, people of reserved category, or if anything of that happens, the matter goes to the internal complaints committee. And if you have roamed around the campus, you would have seen that on many places we stuck these bills that IIMC is a smoke-free zone. So no drinking, no smoking, no gambling, no games. And these are not mobile phone games. So what are this is specific to the hostelers. What are the night-in timings? In the summers, which is from April 1 to September 30th, 10 p.m. is when the doors will close. 11 p.m. In the winters, 10 p.m. And between this time and 6 a.m. in the morning, you cannot move out without prior permission. Even for hometown visits, you need to get night out slips issued by the wardens. No visitors, including family, allowed in the hostel rooms. If you have visitors, if somebody has come down to meet you, there are designated spaces where you can meet them, and also designated time for that, which is from 10 a.m. to 8 p.m. Of course, you will be on the campus in the classroom, so there is no point inviting. Once the classes get over, then you can meet visitors in the designated space. How do you maintain your hostel life? Room integrity, keeping your rooms clean, not moving furnitures from here and there. Chair लेके चले जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, उस room में जा रहे हैं.
So all of this will invite penalty. Management, please be very careful about your valuables in the hostel. Those of you who have got hostels, please be very careful. The management will not be responsible for any loss of cash, mobile phones, etc. Of course, like Pramod sir said, we have a lot of CCTV footage, so we'll of course find the person, but you cannot hold us responsible. So it is important that you take good care of your cash, etc. in the hostel. Otherwise also, the mess rule, all dining has to happen in the dining hall, no food items in the rooms, no cooking in the rooms. Of course, you can cook stories, you are communication professionals, but nothing beyond that. No electric appliances except mobile phone chargers. We have washing machines kept in designated areas, common areas, so you can use them. If you still want to use other laundry services, they are also available on, of course, on payment basis. I hate to come to this slide, but we have to tell you what is the cost of indiscipline. What happens if you, despite us telling you all this, you transgress. So first is short attendance or unpaid fee. The cost is debarment from exam or eviction from hostel. If there is a gross misconduct or indiscipline, that is also recorded on your college leaving certificate. So if you, when the documents that we issue, migration, character, etc., that is recorded there. And if the offense is more serious, such as ragging, harassment, etc., then expulsion and forfeiture of fee plus reporting to the enforcement agencies. So this I deliberately kept to the last because we won't want our students to face any of these. Thank you. So this is the email ID which is mentioned at the bottom of the screen. In case you have any issue related to exams, fee, anything related to academics, which is not directly addressed by your respective heads, you can always reach out to this email. Of course, through your HODs. So don't come to us directly. Whatever issue you bring to us, to the academic department, should come to us via the HODs. Thank you. Thank you, sir. Now, I would like to take a few minutes to inform you about IT infrastructure and protocols, IT protocols at IIMC. So first of all, we all are connected through our mobile devices, laptop devices, and everything, and you are also, connected by, sometimes with Wi-Fi connection of IIMC, Wi-Fi connectivity. So there are some IT protocols, how you will, connect yourself and how will you use IT infrastructure at IIMC. So when we talk about, this is, when we talk about IIMC, it is tech-friendly campus. We have computer labs, we have internet connectivity. There are smart boards in the classrooms. We have smart classrooms, digital displays, and all these smart boards are equipped with the software which are there in the labs also, and so that you can sync with the technical infrastructure while having classes in the classrooms and also in the labs. So we have media production labs, DSLRs, videos. IT department is also responsible for that. Then IT support desk. If you are having any difficulty on IT level, or there is problems with the connectivity or anything, you can reach out to the IT help desk. We have persons to help you every time. So we have 3 computer labs equipped with around 125 workstations. And also we are having software, Adobe InDesign, Premiere Pro, Adobe Creative Cloud, where you can actually work on your newspapers, work on your films, audio editing, and so on.
So all these computer labs are equipped with the latest Adobe Creative Cloud software, which are being updated every now and then, in every week or every 15 days. After that, there are some protocols when you use internet connectivity through IIMC or the institute. You should not share your login credentials even with your friends, right? So personal hotspots, routers, or shared logins on the campus networks are not permitted. Fair and responsible use, no illegal downloads. Where obviously we have already protected our computer, you cannot download, but still there are some tech-savvy students who can, they can bypass with third-party apps. So that is not allowed. No piracy or commercial use of institute bandwidth. If you have any problem with the connectivity, you can always reach out to the IT desk. Safe browsing is very important these days, even on your mobiles, right? So two-factor authentication, multi-factor authentication, you should always apply. You should always use in your mobiles also. So don't click suspicious links and attachments, even on your personal, hotspot or personal, data which you are using on your mobile. Personal devices are welcome. You are welcome if you want to bring your laptops in the classes, no problem with that. But at the same times, you have to follow the campus network policies at all times. You should not, again, download anything on your personal laptops also, even if you are connected with the, IMC Wi-Fi, right? Don't share your password again. This is, I think, repetition. Login credential with anyone. Eating, drinking, nothing is allowed in any of the computer labs and in the classes as well. Always respect data privacy, your own and others, in every digital transaction. Never abuse anyone on WhatsApp. Never, write harsh language on email IDs, all like that. So for any problem with the IT, any infrastructure, you can always reach out to IT help desk. That is on email, imcitteam@gmail.com, and you can also reach out to the personnel which are deputed in IT department. Thank you. Dear students, now it's time to know your teachers who will be working with you throughout this academic session. I will be requesting faculty members one by one, and I will also request each faculty members to please confine the introduction to 1 or 2 minutes because of the time limitations. First of all, now I can also request if ma'am and sir, they can come on the days, because the presentation session is over. So please come. Pramod sir, Rakesh sir. This will be good for photo op actually. So first of all, I will call faculty members who are present in this hall, and after that I will call faculty members from our regional campuses as well. They are also present through Google Meet. Abhi nahi, Abhi first of all. Right. So first of all, I will call Professor Anubhuti Yadav to please introduce herself. Good morning, everyone. So I welcome all of you to Indian Institute of Mass Communication. First of all, I would like to congratulate each one of you for getting admission in IIMC. There are a lot of students who aspire to study at IIMC, but there are very few chosen ones who get to study at this institute, which is a premier institute in journalism and mass communication. So once again, congratulations to all of you, and a big round of applause to each one of you. As far as my association with IIMC is concerned, I joined this institute in 2002.
Many of you might not have been born during that particular time. So it's a long association. It's almost 24 years. So in these years, I've led number of initiatives, headed departments. So there are a lot of things which I can share, but because of paucity of time, I'll be sharing 3 initiatives which I'm working on right now, or the projects which I'm working on right now. The first one is that I am leading IIMC's AI initiatives. We have set up this academy which is called Artificial Intelligence in Media and Entertainment. Our Vice Chancellor, Dr. Pragya Paliwal, I mean, she was the keen person, and she said that, you know, we're talking about AI, we are conducting a lot of training programs on AI. So why not have our own academy on, you know, artificial intelligence? And as part of that particular academy, last year we conducted a lot of training programs in collaboration with Google. We conducted training programs for the newsrooms, private newsrooms, for media educators, for the professionals who are working in government department, media professionals who are working in government departments, and also like for our students. And last month we conducted one training program for the senior leadership of Information and Broadcasting Ministry. And this year also we have a lot of programs lined up, and of course like a lot of training programs for you people will also happen very soon. So in collaboration with Google, and also like recently we visited Mumbai, we were part of Adobe Next. So we are also planning to conduct training program in collaboration with Adobe also for you people. So that's one initiative which we are working on. Second is also, I'm chairperson of Incubation Center, as it was said by Professor Pramod Kumar. Now in Incubation Center right now we have around 15 startups working in the field of media and entertainment, and I urge each one of you, whenever you get time, go and see our Incubation Center, see creators lounge there, and interact with all these the startups who are there, the founders of all these startups. And I think it can be a beginning for you people also, your entrepreneurial journey, if in case you want to start something of your own. And how you can be part of that particular thing is that there's this one initiative which is Ideathon. By participating in that, you can be part of that particular incubation center. So I urge each one of you to go and interact with those particular people. And the third thing is that I'm also chairperson of Internal Complaints Committee, ICC. Our responsibility is to ensure that IIMC remains safe and respectful campus. So any one of you, anytime, if you face any issue, do not hesitate. Please reach out to us. All the centers, they have their own respective committees, so we are there to support each one of you. So thank you so much. These are the 3 initiatives which I thought that I should be mentioning here. But we'll have a longer interaction with each one of you in your respective departments, in your respective classes. So I look forward to interact with all of you, and all the best, and do well, and I wish you all the success in media and entertainment. It totally depends upon which stream you choose. One thing is very important, then when you are here, it's not that you are part of one department, so you cannot do the second thing. After some time, when the entire cohort, the entire group, and they'll come here, you'll realize that the students are actually those who started journalism, they are working in advertising. Those started with advertising, they are working in journalism. So use this as an opportunity to interact with each other, use this as an opportunity to make a lot of good friends, and all the very best to all of you. I got my chit of 2 minutes. Thank you, ma'am. Now I would request Dr. Meeta Ujjain to please introduce yourself. थैंक यू पवन। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर मीता उज्जैन, कोर्स डायरेक्टर एडवर्टाइजिंग पीआर डिपार्टमेंट में हूँ, और मैंने आईएमसी 2021 में ज्वाइन किया था। पर उसके साथ साथ मैं एक इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट को हेड कर रही हूँ, दैट इज़ प्लेसमेंट। तो आपका और मेरा
शुरू होगा। जब मैं क्लासेस में आऊँगी तो मैं ज़्यादा बातें कर पाऊँगी। मेरी जो पूरा जो एक्सपीरियंस है 20 साल का मेरा अनुभव है एडवर्टाइजिंग एंड पीआर फील्ड के साथ, और साथ साथ जैसे कि अनुभूति मैम ने कहा, वाइस चांसलर मैम ने हमें बहुत सारी अलग अलग अपॉर्चुनिटी, अलग अलग कमिटीज़ का मेंबर बनाया है, हमें बहुत टेस्ट किया है, हमें तैयार किया है कि हम आपको और भी अच्छी ट्रेनिंग दें। थैंक यू सो मच। Thank you, Dr. Meeta. Now I would request Professor Pramod Kumar. He has already interacted, but Thank you, Pawan ji. Once again, my name is Pramod. I am a professor in IIMC since 2020. Before that, I have been a working journalist for almost 3 decades. Currently, I head the Department of Strategic Communication, and also I am in charge of outreach activities. I am also Dean Students Welfare, and I edit the IIMC's prestigious research journal संचार माध्यम। मेरे बारे में थोड़ी जानकारी है, बाकी आपको क्लास में हम मिलेंगे। और मेरे डिपार्टमेंट में दो असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर यशस्विका यादव यहाँ हैं क्या? डॉक्टर आदित्य ओझा, मिस अर्चना, वो शायद कहीं दूसरे, अच्छा यहाँ हैं, अभी आप पीछे मिल सकते हैं। थैंक यू। thank you. I would also request Dr. Namit, because he's from New Media Department. Can you? He's Dr. Namit, Assistant Professor in Department of New Media, and Nandini. Nandini is here. Yeah. Okay. So all right. So Meeta ji आपके, हाँ, from AdPR, Dr. Beenam Yadav. He is from Ad and PR Department. Thank you. So now I invite Dr. Rachna Sharma, also request her to please introduce your staff as well. सभी को नमस्कार। मुझे यहाँ हिंदी विभाग का कार्यभार मिला हुआ है, और मेरे विभाग में डॉक्टर आकांक्षा सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, अभी क्योंकि प्लेसमेंट की बात हो रही थी, थोड़ा सा समय लूँगी, थोड़ा सा ज्ञान देना ज़रूरी समझती हूँ, क्योंकि हमारा काम ही ये है, और अगर उतना काम नहीं किया तो लगेगा आज काम नहीं किया। तो अभी प्लेसमेंट पे बहुत तालियां बज रही थी, और उससे पहले सपनों की बात हुई। तो सपना पूरा हो गया क्या? सपने हर दिन बदलते हैं, है ना? और सपनों के साथ हमारी जिम्मेदारी बदलती है, हमारी भूमिका बदलती है। अभी यहाँ क्योंकि आप सभी आ गए हैं, आईएमसी का हिस्सा बन गए हैं, यहाँ से एक बड़ी जिम्मेदारी शुरू होती है। हम राइट्स तो क्लेम करते हैं, लेकिन अभी अगर मैं आपसे ये पूछूं कि आप सब यहाँ पर क्यों हैं, मैं यहाँ पर क्यों हूँ, क्या मैं ये डिज़र्व करती हूँ या करता हूँ? तो मुझे लगता है आधे सवालों के जवाब वहाँ से मिल जाते हैं, और वहाँ से हमारी यात्रा शुरू होती है आगे के पड़ाव को पूरा करने की। हमारा जीवन जल की तरह है, सपने हर दिन बदलते हैं, और जल में धारा प्रवाह ना हो तो रुका हुआ पानी क्या हो जाता है वो आप भी जानते हैं। तो आज से सेल्फ असेसमेंट भी शुरू होगा, और आगे की मेहनत भी पूरी होगी, वो भी शुरू होगी, और हर दिन हम सब उस तैयारी में आपका हिस्सा बनेंगे। इसी के साथ साथ बहुत बहुत स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद रचना मैम। अब मैं इनवाइट करूंगा प्रोफेसर राकेश गोस्वामी जी को। My name is Rakesh Goswami. I am a professor of English journalism. The course director of English journalism. I joined IIMC in 2020. Before coming to IIMC, I have been a journalist. My last assignment was heading the editorial operations of Hindustan Times in Rajasthan. More about us in the classrooms. Thank you.
थैंक यू। अब मैं बुलाना चाहूँगा डॉक्टर राकेश उपाध्याय जी को, तो कृपया आएँ और अपने बारे में कुछ बताएं मुझे। धन्यवाद पवन जी। और जिन जी क्या हाल है? मैं जेन एक्स बोल रहा हूँ। मेरा आपका रिश्ता बड़ा गहरा है, क्योंकि मैं न होता तो आप भी न होते। हाँ, इसलिए हम सबको मिलकर चलना है। अब मैं क्या परिचय दूँ? मैं यहाँ पुस्तकालय विभाग का इंचार्ज हूँ। 5वां वर्ष मेरा IIMC में है। मैं यहाँ एसोसिएट प्रोफेसर हूँ। मैं इकलौता ऐसा हूँ जो इसके पहले काशी हिंदू विश्वविद्यालय में लगभग 5.5 वर्ष प्रोफेसर रह चुका है, और वो भी सेंटेनियल चेयर प्रोफेसर। BHU ने जब उसके 100 साल हो गए तो कुछ विशिष्ट पत्रकारों को, उसके पहले मैं आज तक में था, 3 साल आज तक की सेवा की लगभग। उसके पहले 1 वर्ष न्यूज़ 24 और लाइव इंडिया में एंकर भी रहा, डेप्यूटी एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर रहा, और उसके पहले 5 वर्ष मैंने जी न्यूज़ में बिताए। उसके पहले न्यूज़ एजेंसीज में रहा। लगभग 25-26 साल हो गए भारत की राजनीति, भारत के साहित्य, भारत के समाज, भारत के लोक जीवन, भारत की ज्ञान परंपरा, भारत की शिक्षा और भारत के प्रशासन को देखते हुए। और खुशी है कि मैं एक शिक्षक के रूप में अपने धर्म का निर्वाह करता हूँ। मैं यहाँ आया तो मेरे पास शॉर्ट कोर्सेज थे, शॉर्ट कोर्स का मैं इंचार्ज रहा। उसके बाद मैं हिंदी पत्रकारिता विभाग का 3 वर्ष विभागाध्यक्ष रहा। उसके साथ मैं पिछले 3 सत्रों से प्लेसमेंट का भी हेड रहा। इस सत्र का तो मैं नहीं जानता, पिछले 2 सत्रों में आपकी प्लेसमेंट 100% हुई है। जो है फैक्चुअल वो है। और अब मैं हिंदी के साथ पूरा जुड़ा हूँ। हिंदी की सेवा का व्रत है, क्योंकि मैं राजभाषा विभाग का भी प्रभारी हूँ। और अब मैं रेडियो टेलीविज़न विभाग के साथ हूँ। हमारी आदरणीय संगीता पड़वेन जी विभागाध्यक्ष हैं, जो निर्देश देंगे उसका पालन करूँगा। अंतिम बात, दुनिया के वीराने पथ पर, दुनिया के वीराने पथ पर जब जब नर ने खाई ठोकर, 2 आंसू शेष बचा पाया जब जब मानव सब कुछ खोकर। मैं आया तभी द्रवित होकर, मैं आया ज्ञान दीप लेकर, भूला भटका मानव पथ पर चल निकला सोते से जग कर। जग के आवर्तों में फंसकर जब बैठ गया नर आधे पथ पर, उस नर को राह दिखाना ही मेरा सदैव का दृढ़ निश्चय। हिंदी तन मन हिंदी जीवन, रग रग हिंदी मेरा परिचय, रग रग हिंदी। राजभाषा विभाग के साथ बिल्कुल न्याय कर रहे हैं आप। मैं अब प्रोफेसर संगीता प्रणवेंद्र मैम को बुलाना चाहूँगा। कृपया आएं। अ वेरी गुड मॉर्निंग। पहले दिन हॉल भरा रहता है, बाद में आप सब लोगों को जब समझ में आता है कि भागने में कितना मज़ा है, तो हम हॉल आधा देखने लगते हैं। मैं आशा आज ये करती हूँ कि साल भर ये हॉल ऐसे ही भरा रहेगा, क्योंकि इस हॉल में कार्यक्रम बहुत अच्छे होते हैं और हर कार्यक्रम से आप कुछ सीखेंगे।
मेरा नाम संगीता प्रणवेंद्र है, मैं आरटीवी की हेड हूँ। इसके अतिरिक्त यहाँ जो सामुदायिक रेडियो स्टेशन है, कम्युनिटी रेडियो, उसके भी हेड हूँ। आईआईएमसी देश के सबसे पुराने कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस में है और देश भर में ग्रासरूट कम्युनिकेशन को मजबूत करने के लिए यहाँ एक कम्युनिटी रेडियो एम्पावरमेंट रिसोर्स सेंटर है, जो गांव-गांव जो देश के अंदर कम्युनिटी रेडियो लगे हैं वहाँ कम्युनिकेटर्स को स्ट्रेंथन करने का प्रयास करता है, कैपेसिटी बिल्डिंग और ट्रेनिंग करता है। इसके अतिरिक्त आईएमसी को एक बड़ा प्रोजेक्ट मिला है सीबीसी के साथ, जिसका नाम है स्टोरीज ऑफ चेंज। इसके अंतर्गत आप ही लोगों में से छात्रों के समूहों ने अपनी क्षमता के अनुसार फिल्में बनाई थी। 10 फिल्में आईएमसी ने बनाई और ये फिल्में इन छात्रों की उपलब्धि है और साथ में आईएमसी के लिए गौरव का विषय है कि ये फिल्में अब दूरदर्शन पे और वेव्स ओटीटी पे दिखाई जाएंगी। तो ये हमारी वाइस चांसलर के जो प्रयास हैं उनसे ये प्रोजेक्ट और आगे चल रहा है और मैं आशा करती हूँ कि इस साल भी आप लोगों में से कई लोग इसके अंदर दिलचस्पी दिखाएंगे और फिल्में बनाने के लिए अपना योगदान देंगे। मेरी आईएमसी में जर्नी बहुत लंबी नहीं है, मुझे यहाँ पे 5.5 साल हुए हैं। ये छठा बैच है जिससे मैं मिल रही हूँ और मेरी जर्नी जो रही है वो न्यूज़ रूम से क्लासरूम की रही है। मैं इससे पहले पत्रकार थी। कॉलेज में आप लोगों की तरह पॉकेट मनी आकाशवाणी दूरदर्शन से मिलता था। उसके बाद जब रेगुलर जॉब्स की तो भास्कर, इंडिया टीवी में मैं ब्यूरो चीफ रही 13 साल, पॉलिटिकल एडिटर थी जी ग्रुप के अंदर और उसके बाद 2020 से मैं आईएमसी में हूँ। आईएमसी में आने के बाद सबसे बड़ा बदलाव जो जीवन में देखा था वो ये था कि 2 मिनट में पीटीसी करना और 3 मिनट में लाइव को निपटा देना, उसके बाद 2 घंटे लेक्चर देना सीख गए। पूरा का पूरा 360 डिग्री 180 डिग्री चेंज जो भी आप कहना चाहें वो हो गया। अब ऐसे में जब पवन जी कहते हैं कि 1.5 मिनट में अपनी बात कह दो, तो बस इतना ही लगता है बहुत नाइंसाफ़ी है। पिछले 2 दिनों से मैं सोशल मीडिया पे देखे जा रही हूँ आप लोगों की बेहद सुंदर, खुश, उत्साहित तस्वीरें और अधिकांश तस्वीरों पे जैसा कि सबने कहा, हम सब ने नोट किया है, लिख रहे हैं सपना पूरा हुआ। नहीं, सपना पूरा नहीं हुआ है, लेकिन यहाँ से एक चीज़ सीख लीजिए, आपने सपना शब्द का प्रयोग किया। सपना का पहला अक्षर क्या है? स। अब यहाँ से शुरू होती है आपकी स अक्षर की यात्रा, क्योंकि ये सपना नहीं है, आईएमसी साधन है। साधन का पहला अक्षर, यहाँ पे आपको क्या मिलेगा? सामर्थ्य। सामर्थ्य का पहला अक्षर क्या है? और हम क्या देंगे आपको? सहयोग और समर्थन। दोनों का पहला अक्षर, सही रास्ते चलोगे तो मिलेगी सफलता। सफलता के बाद होंगे सपने पूरे। लेकिन ये समझ लेना कि जैसे एक रोड ब्लॉक आते हैं वैसे हम सारे टीचर आपके लिए रोड ब्लॉक की तरह रहेंगे, क्योंकि हम आपसे करवाएंगे प्रतिदिन संघर्ष। हमारी अपेक्षाओं को आप पूर्ण करें, इसका हम संघर्ष आपके साथ करेंगे। तब जाकर के वो जो सपने हैं वो पूरे होंगे और मैं आशा करती हूँ कि जब आप यहाँ से निकले तब भी उतनी ही खूबसूरत तस्वीरें, उतनी ही संतुष्टि भरी तस्वीरें आप पोस्ट करके जाएं। हम समझेंगे ये हमारी उपलब्धि रहेगी। कोई भी विभाग प्रमुख अपने सहयोगियों के बिना कार्य कर ही नहीं सकता। सुनिए ना कहावत, अकेला चना भाड़ झोंक ही नहीं सकता है। मेरे विभाग में मेरे सहयोगी हैं डॉक्टर राकेश उपाध्याय, डॉक्टर दीपा रानी, इसके अतिरिक्त कम्युनिटी रेडियो के अंदर भी बहुत सारे सहयोगी हैं और इस बार वाइस चांसलर मैम ने ये कहा है कि कम्युनिटी रेडियो में आप सब लोगों का योगदान जो है वो अनिवार्य होगा। तो अब ये मान करके चलिए कि हम तकाज़ा करते रहेंगे और इस तकाज़ा करने में और आपसे बढ़िया कार्यक्रम बनवाने में हमारे सहयोगी रहेंगे विनोद शर्मा जी, कविता रानी, उदय और आरती, एक सफ़र शुरू हो गया है
और आशा करते हैं फिर वही बात, साथ साथ चलेंगे और सफल होंगे। आप सबको बहुत शुभकामनाएं, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, और मैं आशा करती हूँ कि एवरीथिंग दैट यू होप फॉर, एस्पायर फॉर एंड ड्रीम फॉर कम्स ट्रू over the next 2 semesters. Welcome once again. थैंक यू मैम। सर से संयोग ये है कि सर से सुनेत्रा मैम को मैं बुलाना चाहूँगा। Thank you, Pavan. Welcome all of you to IIMC. It's a very beautiful sight, all your young, happy faces. I do hope you leave with the same happiness, enthusiasm, and we've helped you on your journey. So it's truly a wonderful day. This happiness is something very special of entering the hallowed portals of IIMC. Please hold on to it in the tough times that do come invariably in a student's life or in anybody's life. A little bit about me. Like Anubhuti, I've been here a very long time. This is the 24th year that I'll have been at IIMC. These 2 decades have been very, very full of learning for me, apart from teaching. Of course, that's the core activity. In these years, I've headed the development journalism department, which was for mid-career journalists from around the world. I've headed the publications department. We do have 2 major journals, Communicator in English and Sanchar Madhyam in Hindi. I've headed the radio and television department for a short time. Currently, I'm holding the portfolio of, it used to be called the Short Courses Department, but today it's renamed the Center for Executive Education, which has been functional since 1994. Where we do a lot of training for defense service personnel, public sector undertaking, short training, and also various other PSU bodies. But my major charge, the one that I take great pride and joy to introduce to you, is the charge of Master of the Department in Health Communication. And it's indeed a very special day for all of us at IIMC who've been part of this journey. When IIMC was proposed to be deemed to be university, you know, we recently got our deemed to be university status. So the Masters in Health Com was one of the initial courses that was proposed to give it, because it was part of the conception of the de novo category. So we're indeed very lucky to have this special program which is offered at IIMC for the first time. So please give your colleagues in this department a round of applause that it's the beginning of something very special, and I'd like to thank everybody who's been part of this journey. I'd like to introduce to you the new assistant professor, Dr. Shivani Kasturia. Please meet her. I'd also especially like to thank Dr. She'll soon be a doctor, Ms. Manpa Konyak, who's also in the Center of Executive Education, but she's been assisting, and Ms. Rekha Rana, who's, I think, she's here. Thank you very much. Thank you. Thank you, ma'am. Now, I invite Professor Surbhi Dhaiya to please introduce herself. A very good morning to all of you, and many congratulations to the rising stars of IIMC, those who have made to the entrance exam and qualify and join IIMC. So many congratulations. I'm Professor Surbhi Dhaiya, and I completed 12 years of service at IIMC last month. I am into academics since 2003, and I started my journey as a reporter before that. So for the last 23 years, I'm into academics. At IIMC, my journey, it covers almost, heading 3 departments. I've headed a Department of Advertising, Public Relations for 2 years, Department of English Journalism for 7 years,
And for the last 2 years, we opened up this new niche course in media business studies. So Masters in Media Business Studies that we started in 2024. And this is a niche course which has an amalgamation of media and management courses. I have been on various positions here. I've been the Dean Students Welfare. I have been the editor of Communicator and on various other committees. And I always try and support all my students, and I take pride in their achievements. Today also, the next session, Mr. Samyak Jain, who is coming, is our student of English journalism. So he got an All India rank 7 in IAS and became an IAS officer. So you will be interacting with him in the next session. I try to give back to the society through books. So I have some 8 or 9 books to my credit. The recent one got published yesterday by Springer. It's on understanding communication. And I will tell you more about that in the classrooms. I would always say that, you know, some people have talked about dreams. So I would say that always dream big, because dreams are the ones that transform thoughts, and thoughts, they result in actions. So always dream big, work hard, and progress towards your ambition, and think big, because you know, you should never underestimate your potential, because every adversity is to strengthen you and to take you to greater heights. So always keep the IIMC flag high. Thank you so much. Thank you, ma'am. Now, I would like to invite Dr. Rinku Pegu. She is in IAS department. Ma'am, please come. Good morning, Vice Chancellor ma'am. Good morning, Registrar. Good morning, senior colleagues, Professor Rakesh Goswami, and all sitting on the dais, and also colleagues, and most of all the students. A warm welcome to you all. I mean, in the life of a student, to get into an institution that you have worked hard for is truly a landmark moment for you all. And to say that IIMC provides all sorts of learning. So, you know, there are, in terms of pedagogy, you will, whatever pedagogy is there, you'll find it here, and various teachers deploy various kinds of pedagogy, and most are activity based, and you will enjoy the journey here. The only thing I would request you to is to keep your ears and eyes open, and also, you know, to observe, you know, like, it's not that what is being taught or what is shared that you learn, what you observe, and then you should kind of link what is being taught and what you observed, and, you know, try and make an analysis of it. So that would be really helpful. Always maintain curiosity. That's very important. Like, even today, I would always want to, you know, be part of a course that I would like to learn something, you know, for growth. And so wish you all the very best in this very enormous green campus. Loads of learning, loads of fun, and also loads of other activities apart from studies also. And just to say that I was a student of IIMC. I went into journalism. Then again, I got back into academics, and that facilitated me to come here as a faculty. And I have witnessed, you know, the regional centers grow in terms of institutions. You had first Amravati, and then you had Aizawl, then you had Jammu, then you had Kottayam. So I've really seen the institution grow so much. And then also all the new MA courses being introduced, like my previous senior colleagues have mentioned. So it's good to have, you know, now we really feel that IIMC is like reached its kind of potential that was always there, but it's being realized now through you all. So wish you all the best. Thank you, ma'am. Now it's time to know your teachers from the regional campuses as well. They are connected online with Google Meet. So I will start with the, okay, Sanjeev? Is it okay? So I'll start with Professor Anand Pradhan, sir, from IIMC Dhenkanal. Anand sir. Connected online, Google
Yes. Dilip ji, please mute yourself. Can you hear me, Dr. Polder? Yes, you are audible. Okay. So good afternoon to all of you, Honorable VC Ma'am, Registrar Sir, dear faculty colleagues, and my dear students from Delhi, Dhenkanal, Aizawl, Kottayam, Jammu and Amravati campuses. It gives me immense pleasure to welcome and hopefully next. So my dear students from Dhenkanal, don't worry, I will be with you on Monday. I'm Anand Pradhan, and like Professor Sunetra and Bhuti, I'm also completing more than 2 decades, almost 24 years with IIMC. Mostly work in Delhi, but from last 2 years I am in Dhenkanal as a regional director. I have nothing to say more than that, you all are welcome to IIMC. I hope you all will make the most of every opportunity that IIMC offers. My doors are always open, online, offline, for any consultation related to either academics or institutional support. I welcome all of you to IIMC, and I hope you will use this institution will work hard, have fun, and make these 2 years, particularly for the master's program and for PG diploma program 1 year, most memorable of your life, and hopefully you will enjoy your stay at our campuses, especially in regional campuses. We will you will try our best to make your journey next 2 years memorable. Thank you so much, and once again, very warm welcome to IIMC. थैंक यू सर. अब मैं अनुरोध करूंगा प्रोफेसर अनिल कुमार सौमित्र से, IIMC जम्मू. अनिल सर. अनिल सर, आप क्या सुन पा रहे हैं? जी दिख रहा है. नहीं, आप आवाज दिख नहीं रहे हैं, पर आपकी आवाज आ रही है. अच्छा. आप अपना कैमरा ऑन जी. मेरे पास बहुत ज्यादा बताने को परिचय नहीं है, सिर्फ 2 परिचय है. तो भारतीय जनसंचार संस्थान का पूर्व विद्यार्थी हूँ, आपकी तरह ही. मुझे विद्यार्थी के तौर पर या आपके वरिष्ठ के तौर पर आपका स्वागत करके मुझे बहुत खुशी हो रही है. मेरा दूसरा परिचय है कि वर्ष 2020 से मैं यहाँ प्रोफेसर के रूप में कार्य कर रहा हूँ. थोड़े समय में दिल्ली कैंपस में रहा, उसके बाद अमरावती, और अभी वर्तमान में जम्मू कैंपस में. विशेष रूप से मैं हिंदी पत्रकारिता पाठ्यक्रम के साथ संलग्न हूँ, और बाकी का परिचय जब कक्षा होगी या प्रत्यक्ष आपसे मिलना होगा तो विशेष परिचय होगा. कम बताया है, ज्यादा समझना है. धन्यवाद सर. अब मैं क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर दिलीप कुमार जी से आग्रह करूंगा कि कृपया वो अपना परिचय दें. मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल. Welcome to the Indian Institute of Mass Communication. First of all, respected VC ma'am, registrars sir, and other respected senior colleagues, even colleagues, and you all. Namaste, Abhinandan. I am Dr. Dilip Kumar, Assistant Professor and Regional Director, IIMC Jammu. It is an absolute privilege to welcome the newest cohort of media professionals, journalists and communication leaders to our campus.
You are now part of the India's Premium Institute, even deemed to be university for media education. Prepared for hands-on reporting, critical deadlines, and real-world media challenges. You will learn to tell stories that matters and drive social impact. Even our Professor Sangeeta Pravenji, my senior colleague already, even emphasizes regarding the story of change. So maintain integrity, be very curious, ask those questions, chase the facts, and never stop investigating kind of attitude from your side. Only one thing, जैसे हमारे सीनियर कलीग ने कहा कि आप लोगों को सपने आपने देखा कि आपके पूरे हुए. जस्ट आई वांट टू से मैं आपको स्वास्थ्य का मंत्र दूंगा. थोड़ा सा स्वास्थ्य इन दिनों ऐसा ही है. आप इन सारे सपनों को पूरा करने में सावधान रहें, सतर्क भी रहें, सजग रहें. सक्रियता आपकी बहुत होनी चाहिए, तभी जाकर के ये जो आपने फील्ड चुना है वो सार्थक होगा. और जब सार्थक होगा तो सफलता आएगी ही आएगी, अवश्य मिलेगा. सो माय सबमिशन इज master traditional ethics while dominating digital media, all tools, multimedia platforms. Maybe the next few months will be the fast-paced, challenging and deeply transformative. Dive in at first, make every deadline count. जैसे कि क्लासरूम में आप लोग के assignments and everything. Once again, welcome you all. Thank you very much for giving me such a wonderful opportunity. I am welcome from Jammu campus. Might be possible if I'll get a chance, I'll meet soon to interact with you people as well. Thank you very much. Thank you. So there is a problem with the internet connectivity on their end. So should I continue this or should I leave it, ma'am? छोड़ दें अभी. 3. Okay. So, okay. Now, I would like to invite Dr. Jisha. Jisha, can you listen us? Jisha? Yes, sir. Am I audible? हाँ. Please introduce yourself. Yeah. Good morning, everyone. I'm Dr. Jisha K, Assistant Professor from IIMC Southern Regional Campus, Kottayam. It gives me great pleasure to invite you all to the IIMC family. Here we have a group of 6 faculty members and 20 plus non-teaching staff. I hope your life here will be filled with learning, creativity, meaningful friendship and personal growth. My best wishes to each one of you, and I personally invite you all to visit our campus. Thank you. Thank you. अब मैं अनुरोध करूंगा डॉक्टर राजेश कुशवाहा जी से कि कृपया अपना परिचय दें बहुत ब्रीफ में. राजेश जी, कौन सा आभार? आप वीडियो. हाँ मेरी आवाज आ रही है? जी. आदरणीय प्रिंसिपल महोदय, सम्मानित मंच एवं आदरणीय आचार्य सादर भारतीय जनसंचार संस्थान अमरावती परिषद की तरफ मैं डॉक्टर राजेश कुशवाहा, एसोसिएट प्रोफेसर, क्षेत्रीय निदेशक, आप सभी 9 प्रवेशित विद्यार्थियों का स्वागत अभिनंदन करता हूँ और साथ शुभेच्छा करता हूँ. वर्ष 2011 में हम IIMC अमरावती पत्रकारिता पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया गया और वर्तमान सत्र में यहाँ PG डिप्लोमा अंग्रेजी पत्रकारिता के साथ मराठी पत्रकारिता का पाठ्यक्रम भी किया जाता है. IIMC अमरावती परिसर अभी संत गाडगे बाबा अमरावती विद्यापीठ के प्रांगण में है. अमरावती के बड़नेरा में IIMC पत्रकारिता भवन निर्माण किया जा रहा है और आशा करते हैं कि हम लोग अगले वर्ष में वहाँ पे अपने नए भवनों IIMC अमरावती में पत्रकारिता पाठ्यक्रम के उच्च गुणवत्ता पर अध्ययन अध्यापन के सभी प्रकार के संसाधन एवं कौशल संपन्न शिक्षक प्रशिक्षक. इसी का परिणाम है कि आज अमरावती परिसर के विद्यार्थी देश में IIMC का नाम रोशन और आप कुछ अपने समाचार जगत और अध्यापन का 20 वर्षों से अधिक का अनुभव है.
IIMC से संबद्ध होने से पूर्व मैं अयोध्या के डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और यूनिवर्सिटी में अध्यापन कार्य किया है। इससे पूर्व मैं हिंदी समाचार अमर उजाला के संपादकीय विभाग में भी कार्य किया। अमरावती परिषद में वर्तमान में प्राध्यापकों में एक एसोसिएट प्रोफेसर, एक असिस्टेंट प्रोफेसर और एक टीचिंग कम एकेडमिक एसोसिएट है। साथ में ही अपना रेडियो अमरावती के रेडियो प्रेजेंटर है। असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में डॉक्टर विनोद निकाले हैं, एकेडमिक एसोसिएट के रूप में रोहन तायड़े हैं और एक प्रोग्राम प्रेजेंटर के रूप में ईशान अंबोले हैं। रोमांचक यात्रा का ये आपका पहला कदम है आप सभी विद्यार्थियों के लिए, लेकिन IIMC का यह मंच आपके सपनों को नई उड़ान देने और एक जिम्मेदार या एक उत्तरदायी संचारक के रूप में पहचान बनाने का स्वर्णिम अवसर प्रदान करता है। संवाद, संचार और संज्ञापन की अद्भुत यात्रा के आप सभी परिषद के विद्यार्थियों को पुनः शुभकामनाएं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद। दो वक्ता और बचे हैं। प्रोफेसर शाश्वती गोस्वामी, मैम, आर यू हियर? Yeah, can you hear me? Network is very bad here. सिग्नल का It's raining heavily. जी जी जी, तो मैम प्लीज बी ब्रीफ and please introduce yourself. Okay. So, good afternoon to all of you, my colleagues, and DC ma'am and registrar as well. And most importantly, the students of all campuses, including Delhi. I am a mixture of a journalist and a educator. This is my 33 years completed as in job, but this is my 19th batch in IIMC. I was also like Anand Pradhan, I was also in Delhi until 2024, and it will be my second year completed in September as a regional director of IIMC IIMC. I don't think I should invest much talking about myself, but please enjoy your time there. Make friends for life. And this is the time where you grow to become a journalist and understand what is journalism from your reputed teachers who will teach you there. And I'm sure I will see you all over the country, reporting, writing, and making a mark in the field of journalism. Thank you. All the best. Thank you. Last speaker we have Dr. Vineet Utpal. Vineet जी, कृपया अपने बारे में बताएं। Yes, sir. I am audible? Yes, you are. Okay. I am Dr. Vineet Utpal. I am assistant professor at IIMC Jammu. Here at IIMC Jammu, I am a coordinator of new media communication course, and several things associated with me as orientation coordinator, library in charge, IT in charge, studio in charge, event coordinator, field visit, media pressman, society coordinator, message, all things happening in IIMC Jammu is associated with me and under the guidance of my regional director, Dr. Dilip Kumar, and OSD IIC Nehal Jalal. And apart from that, I thank my Vice Chancellor and Registrar sir for giving me several opportunities from Delhi headquarters. I also welcome all the students for all the parts of India, because there are all the states, students of all the states are here, either they may be Delhi campus or Jammu or Aizawl, Kottayam and Dhenkanal. So I welcome all of you. I am mainly practical purpose because I have written first article in 1996, and apart from that 30 years have passed as a writer, as a poet, as a storyteller, as a news presenter. I was also associated with Hindustan Times, Dainik Bhaskar, Rashtra Sahara. So you know from my side all the technical parts of new media, apart from digital media, apart from
newspaper and media research. I welcome all of you. You may contact either phone or email or any other devices or personally. Whenever you want to associate with me or talk with me, any problem you can associate, you can talk with me and contact with me. Thank you. Thank you. इसी के साथ हमारा फैकल्टी कलीग्स का इंट्रोडक्शन समाप्त होता है. मैं लास्ट बचा हूँ. मैं डॉक्टर पवन कौंडल, IIMC. I have joined IIMC in 2011 in the editorial department. Before that, I was working with IP College for Women, Delhi University, and before that, I was working with IP University, Kashmiri Gate campus, in the Department of Mass Communication, obviously. So currently, I am associate professor in the Department of New Media, and I am also heading publications, IT, social media, cyber security as well. And I am also editor of Communicator Research Journal of IIMC, which was the one of the oldest journals in India. It was started in 1965. Thank you. I think I have confined myself to 1 minute only. So now it's time to hear from the senior functionaries of the institute. Now I would like to invite Shri L. Madhunag ji, Registrar of the Indian Institute of Mass Communication. I would also like to introduce him. He is a 1994 batch officer of the Indian Information Service. Before this assignment, he was Additional Director General of the News Services Division, Akashvani, New Delhi. He also served in the Central Bureau of Communications, Doordarshan News, and the Directorate of Publication Division in New Delhi. Sir, floor is yours. Respected Vice Chancellor Madam, distinguished faculty, colleagues, and my dear students. First and foremost, a very warm welcome on a rainy day. And also a warm welcome to my other student friends who have joined in the other regional campuses, Dhenkanal, Amravati, Jammu, as well Kottayam. I think one round of applause we merit for each other. For you at least, you should clap hard so that your other friends also should listen. You all have entered into a prestigious institute, an institute with a legacy of around 60 years. You have to take pride in entering this institute. Being a part of this institute, you make your family proud, your relatives proud, and also the institution proud for being here. Because the next 2 years of your journey, for people who are doing their postgraduates, and for the diploma, it's a 1 year. You got to prove that you will be the best, because this institute produces the best. We are the top-ranked university in terms of media communication. I think you have chosen just because of that. And I also take great pride when I say that I passed out from this particular institute 30 years back as a probationer of Indian Information Service. So in my 30 years journey, I worked in television, radio, DAVP. Now it's called the Central Bureau of Communication, Publication Division. I have met across various professionals who have passed out of this particular institute. Everybody are top-class professionals. And that is what I am talking of, the journey that you will be taking the next 1 or 2 years. It's got to be a hard work. Let me tell you one thing. Media, it's a 24/7. You got to work hard. So for getting to know all the skills of the trade,
this is the place. This is the place where I have been here. I have done my engineering, I did my management, then it's a total course correction change for me. We learned here. And when we entered the field, what matters is, from day one, is how you fare there. In television or in media, its opinions are made in a matter of minutes. You appear on the screen, people immediately will come out and say, yes, this person is good. You write something, a good piece, immediately a person will appreciate. The reactions are fast and thick. So what you will be learning here from our distinguished faculty matters a lot. The training that has been, the syllabus that has been curated for you would be having a mix of both practical and plenty of workshops and experiences. This is an experiential learning that we are shifting towards. And all this is done with one thing in mind, that is, when you go into the market, you are industry ready. And that's where most of our professors have mentioned the various initiatives that are being taken by this particular institute in the last few years. Please avail all the opportunities that this institute offers. Please work hard, because the learning that you get from this institute will fetch you far in your professional life. And many of us, in fact, Surabhi ji has mentioned one of the pass-outs will be taking the classes here. In fact, the orientation sessions that have been planned and curated are meant to get you exposed to the various facets of the media and communication industry, and some of them are our ex-alumni. The lessons that you will be learning in the next 2 days would be a harbinger for what the things are going to come in the future, in the next 2 years. So I wish you all the best. Make the institution proud of you. Make your family proud of you. And all the best for a great learning. Stay. All the best. Thank you. Thank you, sir, for the inspiring words for students. Now, it's time to listen to the top leadership, the Honorable Vice Chancellor, Dr. Pragya Paliwal Gaudji. Let me introduce briefly about ma'am. Dr. Pragya Paliwal Gaud, a senior officer of the Indian Information Service 91 batch, bringing with her a formidable legacy of over 34 years of experience in the media units of the Government of India. Her career is marked by high-level leadership, having most recently served as the Director General of Akashvani and the News Services Division. Throughout her professional journey, she has held several other critical positions, including DG, PIB, and Director at DDK Kendra, Jaipur. Thank you. Thank you, Dr. Pavan. First of all, we started from the morning, now it is good afternoon to everyone. So, a very hearty welcome to all the students. Not only are we welcoming, I think the rain gods also welcomed you, isn't it? So, a big shout out to you all. Big round of applause for all of you from all the campuses. Not only Delhi campus, my dear students from all Kottayam, Denkanal, Aizwal, Jammu, and Amravati. A big round of applause for all of you, because you are here because of hard work that you all did, isn't it? Not everyone has got a chance to come and study here. They have not got admissions here. So you are amongst the chosen few. So be proud of yourself, and you will. Why I'm saying this? Because all the distinguished faculty that is here and in the regional campuses, you will gain a lot of knowledge from them. You know, one can teach to only those
who are willing to learn. So now the responsibility is on all of you as to how you learn, how you gain experiences from their learning. And yes, our registrar said we have made special arrangements, we have curated special modules for you all to gain rich industry experience, which is a must. All of you know about IIMC, you saw in the film, so I won't be repeating all those details, but yes, it is the premier institute in its field, and we want to maintain this with your achievements. Once you pass out from here, we all should be proud of your achievements, and I'm very sure that I will be proud of all of you. We have started several new courses. This is because there is demand in the industry. So all those who have got admissions in the new courses, believe in yourself, believe in the syllabus, believe in the faculty who are teaching you, and you will do good. And as our record says also, that the students who have passed out from here, they get good job opportunities. Maybe not all of you will be aspiring to be journalists. You want to get into the field of advertising and PR, in the field of government sector. Many would write UPSC civil services of different states. So take this as a beginning ground, the ground where your foundation is being set here. It is being laid for you, for your future careers. You know, graduation, most of us, we have also studied, we have also gone through that stage. We are not really very clear till graduation. Of course, these days the children are very smart, they know what they want to become. But post-graduation is the stage of our lives. We have chosen that field for our careers, wherever you want to go. And it depends on you as to how you mold yourself. There are so many facilities which have been mentioned by my previous speakers. Make use of it. Make use of this time. You know, it is said, time and tide wait for none, isn't it? So this is the time. If you miss this time, this period in your life is never going to come back again. So don't lose out on this time. Whatever has been mentioned earlier, like maintenance of keeping the attendance records, this is for your good. You know how your parents have, you know, they have made all their efforts to bring you to this stage. Whatever financial expenses they have made, what all sacrifices they have made, always keep this in mind. They have to be proud of you. They are proud of you because you have entered #1 institute in the country. So they are also equally proud, the parents. But now it is your chance to make them more proud by studying here seriously, isn't it? So that is your task that you have to do. We have made special arrangements, and we'll be taking care of all of you without any, just to make your journey fruitful here, comfortable here, those who are staying in the hostels. And also I would like to mention this to my students of the regional campuses. You will also get good faculty, not only, of course, the faculty who's based there in your regional campuses is a very distinguished faculty there, but you will get chance to study from the faculty of different campuses and also from Delhi. So faculty members, senior professors, they would be sent to regional campus also, so that you get a chance to interact with them. And let me tell you, post-graduation is a stage where classroom teaching, of course it is important, but more depends on your personal studies along with the classrooms. How much you do research ahead of what is being taught, further to what is being taught in your classrooms. This is post-graduation. This is not spoon feeding. So remember, the more you study, the more you will develop your subject, the more you will develop your interest, and you will be able to focus on, have your dream, whatever dream you have.
That should be your focus area. Whether you want to write the civil services, study accordingly. Especially the new course that has been introduced in the Dhenkanal campus on communication, governance communication. It's a very important course. But this doesn't mean that the other students cannot write the civil services or other exams. So all of you, keep your options open, plan A, B also. It's not necessary that whatever we think will happen. But whatever will happen, it will be for your good, and also it will be made by you. So be very focused. This is the time to have all the focus in your life towards your careers. Remember, another 20 years we are going to, as per our Prime Minister's dream, it will be Vikasit Bharat. You are the real contributors. The more you study, the more you develop yourself, it will add to the development of the country. So think yourself as future administrators, future journalists, future researchers, future corporate leaders, and plan your journey like this. So I won't take much of your time. We will be interacting in between, and all the very best to you. Have a lovely stay here, those who are staying in the hostel. Good learning experiences for all the students here. All the best. Thank you. Thank you, ma'am, for the thought-provoking address. I think this will remain with our students throughout their academic journey in this institute and in their life as well. We now come to the concluding item of this inaugural session. On behalf of Indian Institute of Mass Communication, I place on record my sincere gratitude to the Honorable Vice Chancellor, Dr. Pragya Paliwal God, for presiding over this session and for her gracious inaugural address. I extend my thanks to all faculty colleagues for their participation, and to the officers and the staff of the administration, colleagues, examination branch, the students, welfare office, IT section, library, estate and maintenance staff, the audio and visual technical team, whose collective efforts have made this session possible. I also thank the faculty members and colleagues of our regional campuses at Dhenkanal, Aizawl, Amravati, Jammu, and Kottayam for joining these proceedings through online mode, and for making this a truly institution-wide occasion. Above all, I congratulate and welcome our newly admitted students of the academic session 26-27. We wish you a rewarding, disciplined, and intellectually enriching academic year. With this, the inaugural session of the orientation program 2026 stands concluded. एक अच्छी खबर है, रिफ्रेशमेंट बाहर आपको मिलेगी. तो मंच कैफेटेरिया के जब आप बाहर निकलेंगे, तो please mind that you throw the empty boxes in the dustbins also, dustbin only, because this is a very beautiful campus and this belongs to you. Now, once again, welcome to IIMC. Thank you. Next session. We will be having next session at 2 p.m. Please be on time at 2 p.m. in this hall only. Thank you.
खोले ना लॉगिन कर दिया अभी मैंने काटो तो से मास्क तो नहीं हो पाएगा दूसरा लैपटॉप किसका लगा अच्छा पोस्टर के लिए आपने ये रखा था फिर पोस्टर था इसमें वीडियो भी था अच्छा तभी ये बार बार स्विच करेंगे क्या ये तो मैं तो उधर से पैदल आया हूँ ये ऐसा गंदा जाम लगा था सर मेरे साथ वो होता है क्या नाम है प्रेम स्टोर वाले अरे मैं सोचा कि आज इवेंट लास्ट में मैंने पवन सर ने पकड़ा दिया मेरा फोन सर आप अटेंड मुझे इसलिए किसी को यूट्यूब लिंक ही नहीं भेजा बताऊँ क्यों नहीं गया भेजा था मैं इसने मेल नोटिफाई करना होता है ना हाँ वो नहीं हुआ और एक भी ईमेल आईडी नहीं था फिर जितना मुझे मिला उतना एडिट करके फिर मिला मैं वही फिर उस जैसे ही ये स्टार्ट हुआ था लंच टाइम में आ गया था बढ़िया हो गई पकड़ा लिया फोन पकड़ा दिया फोन सा देखी कितने फोन मैसेज फोन अब इसको लगा के भी रखना ये खत्म हो गया ये तो हटाना अब ये मेन चीज़ ही चलेगी अभी हटा दूँ या अभी चल के रखें ये पे पेन ड्राइव किसकी है उधर देगा ये प्रमोसर गेगा प्रमोसर जंगल इस तरफ से उस तरफ कीजिए ठीक है
थैंक यू पवन। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर मीता उज्जैन, कोर्स डायरेक्टर एडवर्टाइजिंग पीआर डिपार्टमेंट में हूँ और मैंने आईएमसी 2021 में ज्वाइन किया था। पर उसके साथ साथ मैं एक इम्पॉर्टेंट डिपार्टमेंट को हेड कर रही हूँ, दैट इज़ प्लेसमेंट। तो आपका और मेरा शुरू होगा जब मैं क्लासेस में आऊँगी तो मैं ज़्यादा बातें कर पाऊँगी। मेरी नमस्कार, 2 बज गए हैं। हम आज का अपना एक स्पेशल सेशन शुरू कर रहे हैं। आई वेलकम ऑन द डायस डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह, हु इज ग्रुप एडिटर ऑफ नेटवर्क 18, एंड मिस्टर सम्यक जैन, who has been an IMCN and now he is Indian Administrative Service IAS officer. He will be sharing his journey. IIMC में आप आए हैं अभी, तो आप ध्यान रखिए मंजिलें और भी हैं। सम्यक जैन उसका उदाहरण है। तो सम्यक जैन हमारे साथ अपना पूरा अनुभव शेयर करेंगे। और हमारे साथ डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह जी हैं। ब्रजेश कुमार सिंह जी का बहुत लंबा अनुभव है और इनकी सबसे खास बात ये है कि ये भी IIMCN हैं।
अभी नेटवर्क 18 के ग्रुप एडिटर हैं और इससे पहले बहुत जगह कार्य किया है। मैं कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए रिक्वेस्ट कर रहा हूं IIMC कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन प्रोफेसर राकेश गोस्वामी जी से रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि वो हमारे दोनों वक्ता का अभिनंदन करें। सबसे पहले डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह जी का अभिनंदन करेंगे प्रोफेसर राकेश गोस्वामी जी। इसके बाद सम्यक जैन जी का, मुझे लग रहा है ताली बजाने में आप बहुत कंजूसी कर रहे हैं। तालियों की गड़गड़ाहट से लगना चाहिए कि आपके सीनियर्स आज मंच पर हैं, आप उधर हैं, कल आप भी इधर हो सकते हैं। इसलिए बड़ा सपना देखिए और सपना देखने के बाद उसे कैसे पूरा करना है वो आप डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह जी और सम्यक जैन से सीखिए। ये बहुत सारे सीक्रेट्स आपके साथ साझा करेंगे। धन्यवाद राकेश जी। अब मैं बहुत ज़्यादा समय नहीं लेते हुए आपको सीधे इंट्रोड्यूस कर रहा हूं डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह जी। डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह जी का परिचय वैसे तो बहुत लंबा है, लेकिन मैंने उसमें थोड़ा संपादन कर दिया है। पत्रकारिता में 3 दशक से भी ज़्यादा समय का अनुभव है। प्रिंट, टीवी और डिजिटल सभी माध्यमों में आपने कार्य किया है, उसमें सक्रिय हैं आज भी। और काशी हिंदू विश्वविद्यालय से समाजशास्त्र में आपने स्नातक किया और फिर IIMC से आपने PG डिप्लोमा किया। अमर उजाला, जी न्यूज़, आज तक, स्टार न्यूज़, ABP न्यूज़ जैसे संस्थानों में कार्य करने के बाद 2019 से देश के सबसे बड़े न्यूज़ नेटवर्क 18 में आप ग्रुप एडिटर कन्वर्जेंस हैं और लंबे समय से देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में आपने रिपोर्टिंग की है। कई न्यूज़ चैनलों के लिए आपने काम किया, उनकी लॉन्चिंग और संचालन में आप बहुत अहम भूमिका में रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो प्रशासनिक यात्रा है उसके पहले दिन से आप गवाह रहे हैं। लगभग 25 वर्ष से आप नरेंद्र मोदी जी को, ये वाक्य ऐसा है कि आप अभी युवा हैं, आप अपने जीवन में जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे बहुत सारे लोग, लीडर्स आपके सामने आगे बढ़ेंगे। तो जब आप कुछ लोगों को शुरू से पहले दिन से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, उनके पूरी बातचीत को, काम को, निर्णय लेने की प्रोसेस को, दृढ़ता को, सारी चीज़ों को जब आप ऑब्जर्व करते हैं तो 10 साल बाद, 20 साल बाद, 25 साल बाद फिर आपके पास जो अनुभव होता है वो अपने आप में किताबें होती हैं। आप चाहें तो उन्हें किताब के रूप में लिख सकते हैं और डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह जी ने भी कुछ किताब लिख रहे हैं, ऐसी मुझे जानकारी मिली है और शायद एक किताब वो लिख चुके हैं। तो जनसंचार में आप PhD हैं और न्यूज़ ब्रॉडकास्टिंग एंड डिजिटल स्टैंडर्ड अथॉरिटी और भारतीय जनसंचार संस्थान IIMC की एकेडमिक काउंसिल के आप सदस्य रहे हैं। मैं आपका स्वागत करता हूं डॉक्टर साहब और आपसे सादर अनुरोध करता हूं कि आप विद्यार्थियों के साथ अपना इंटरेक्शन आरंभ करें। थैंक यू। नमस्कार। प्रमोद जी जिनके निमंत्रण पर यहाँ आना हुआ और सम्यक जी जो कि इसी भारतीय जनसंचार संस्थान से पढ़ने के बाद से भारतीय प्रशासनिक सेवा में गए। आप सभी लोग, ख़ासतौर पर वो छात्र जो कि जिन्होंने दाखिला लिया है IIMC के अलग अलग कोर्सेज़ में, आप सभी लोगों का स्वागत है। पूर्व छात्र होने के नाते जो है मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ, चूँकि आप ही की तरह करीब 3 दशक पहले, पूरे 31 साल पहले इस कैंपस में मेरा आना हुआ था। उस समय बहुत छोटा सा संस्थान था ये, दिल्ली के बाहर सिर्फ एक कैंपस होता था। दैट कैंपस वाज ढेंकनाल इन ओडिशा। आपको पता होगा कि KP सिंहदेव हमारे एक INB मिनिस्टर होते थे, उनकी अपनी कंस्टिट्यूंसी थी ढेंकनाल, इसलिए जो है दूसरा कैंपस वहाँ खोला गया था। आज तो देश के सारे हिस्से में IIMC के कैंपस हैं। नंबर ऑफ़ कोर्सेज जितने बढ़ गए, मैं बताऊं कि 95-96 मेरा बैच रहा है IIMC का। और जब मैं यहाँ आया था तो उसमें
कुल मिला के 5 कोर्स चलते थे और वो इसी मेन कैंपस में चलते थे। ढेकनाल में तो सिर्फ 2 ही कोर्स थे, एक इंग्लिश का कोर्स था और एक जो उड़िया लैंग्वेज में होता था। जो 5 कोर्स थे उसमें एक हिंदी जर्नलिज्म का था जिसमें कि मैंने दाखिला लिया था, दूसरा कोर्स इंग्लिश का था, तीसरा एडवर्टाइजिंग एंड पीआर का था, चौथा जो है भारतीय सूचना सेवा के अधिकारियों का भी फाउंडेशन कोर्स यहाँ पर होता था, और 5वां कोर्स जो था, जिस कोर्स के लिए एक तरह से इस संस्थान की नींव पड़ी थी, वह था नॉन अलायंड नेशंस के जो रिप्रेजेंटेटिव होते थे उनको ट्रेन करने का कोर्स। वहाँ से यहाँ तक की जर्नी जब मैं आप लोगों से मुखातिब हूँ, ये यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो चुका है इंस्टीट्यूट और इतने सारे नए पीजी लेवल कोर्सेज शुरू हो चुके हैं। हम लोग जब यहाँ से निकले तो हमें पीजी डिप्लोमा मिला था। आप लोगों में से भी जिन्होंने कि ये बेसिक कोर्स जो ओरिजिनल कोर्स लिए होंगे पीजी डिप्लोमा ही मिलेगा, लेकिन आज आपके पास ऑप्शन होगा और मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी ये प्रोवाइड करेगी कि वो पीजी में कन्वर्ट भी हो जाए। हमें तो ये सब करने के लिए गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी हिसार का सहारा लेना पड़ता था, जहाँ पर कि वो IIMC के पीजी डिप्लोमा को प्रीवियस ईयर कंसिडर करते हुए सीधे फाइनल का एग्ज़ाम दिलवाते थे। खैर, आज का जो टॉपिक आप लोगों को मोटिवेट करने के लिए मुझे दिया गया और मुझे लगता है कि शायद मेरी जो करंट डिजिग्नेशन है शायद उससे सिंक करते हुए प्रमोद जी ने ये चुना, क्योंकि मैं नेटवर्क 18 में ग्रुप एडिटर कन्वर्जेंस के तौर पर काम कर रहा हूँ पिछले 7 साल से। और जब मुझे ये डिजिग्नेशन दी गई थी तो उस वक्त तक मीडिया में कन्वर्जेंस जो है कोई बहुत पॉपुलर टर्मिनोलॉजी नहीं थी। इंग्लिश के शब्द के नाते हम सभी लोग जानते थे इसको, लेकिन प्रैक्टिस में नहीं था। तो जर्नलिज्म इन द ईरा ऑफ कन्वर्जेंस, ये जो टॉपिक मुझे दिया गया आपसे बातचीत करने के लिए, इसी के बहाने में इंडियन मीडिया की जो जर्नी है वो भी आप लोगों को थोड़ा सा उसको हाईलाइट करना चाहता हूँ, ताकि उससे आप सभी लोग, जाहिर है एक प्रोफेशनल कोर्स में आप लोगों ने दाखिला लिया है, कहीं ना कहीं आपका एम भी यही होगा कि इंडस्ट्री में कोई ना कोई रास्ता अपने लिए चुने। कुछ लोग वो भी हो सकते हैं जो कि इस मंच पर हमारे साथ हैं सम्यक जी, उनके साथ उनका जैसा रास्ता भी चुन सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्मल ढंग से अगर मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जाने वाली हों, तो इस इंडस्ट्री का जो इवोल्यूशन हुआ है पिछले कुछ वर्षों में उसको समझना बहुत ज़रूरी है। जब हम लोग निकले थे तो यहाँ से ऑब्वियसली टीवी का अलग से कोर्स भी जो लॉन्च नहीं हुआ था, रेडियो एंड टीवी जर्नलिज्म, बाद में तो रेडियो और टीवी भी हो गया, ब्रॉडकास्ट होता था। हमारे समय में यही 3 कोर्स होते थे जर्नलिज्म के मूलतः। चूँकि वो ज़माना प्रिंट का था, प्रिंट के डोमिनेंस का था। आपको याद होगा, आप लोग पढ़ेंगे भी, आपको जब हिस्ट्री ऑफ इंडियन जर्नलिज्म या इवोल्यूशन ऑफ इंडियन मीडिया जब पढ़ाया जाएगा, तो उसमें 95 वगैरह का पीरियड, जिस पीरियड में हमारा यहाँ आना हुआ था इस संस्थान में, वह बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव पीरियड था। और जब मैं उस पीरियड को ट्रांसफॉर्मेटिव कहता हूँ तो उसका कारण ये था कि प्रिंट जो है, जो कि उस समय का डोमिनेंस मीडिया था, उसके सामने टेलीविज़न जस्ट इमर्ज हो रहा था। आप में से बहुत सारे लोग आज तक चैनल को जानते होंगे, लेकिन ये भी आप में से बहुतों को शायद ध्यान में हो और ना हो तो ध्यान रखें कि वह DD2 पे, जो कि दूरदर्शन का जो सेकंड चैनल था जी को, जो कि DD मेट्रो के तौर पे भी जाना जाता था या DD2 के तौर पे भी जाना जाता था, उस DD मेट्रो चैनल पर एक 20 मिनट के बुलेटिन के तौर पे शुरू हुआ था। चूँकि इंडिया में टेलीविज़न जो रहा, ब्रॉडकास्ट अगर एज ए मीडियम आप समझना चाहें तो आपको बहुत, कॉमनवेल्थ गेम्स इंडिया में होने वाले हैं, आपको पता है कि अभी जस्ट कॉमनवेल्थ की बैटन हमें हासिल हुई है, गुजरात में होने वाले हैं अहमदाबाद में। जब एशियाड हुए थे 1982 में, तो वो साल था जब इंडिया में टेलीविज़न कलर हुआ था। उसके पहले हमारे बगल के श्रीलंका में कलर टीवी शुरू हो चुका था, तो एशियाड हमारे लिए एक माइलस्टोन था। उसके पहले इंडिया में टेलीविज़न जो था वह जो है सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए था, वो भी रिमोट एरियाज़ में लोगों के सोशियो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए, जिसे कि इसरो ने शुरू किया था साइड प्रोजेक्ट के तहत। डॉक्टर साराभाई का वो ड्रीम था। वहाँ से आते आते 80s में जो है हम लोग इंटरटेनमेंट की तरफ बढ़े, क्योंकि भारत का एक मॉडल भी सोशलिस्ट मॉडल था जिसमें कि इंटरटेनमेंट को बहुत अच्छा नहीं माना जाता था। हम चूँकि अपनी बुनियादी समस्याओं से जूझ रहे थे। वहाँ से फिर आपके सॉप ऑपेराज की शुरुआत हुई। आप में से बहुत कम लोगों को अंदाज़ा होगा कि जो पहला सीरियल इसरो ने प्रोड्यूस किया था वह अनटचेबिलिटी के ख़िलाफ़ था, चूँकि उस समय हमारा मकसद जो था एजुकेशनल था और
एक खेड़ा ज़िले का एक गांव था, वहाँ की वो स्टोरी थी। और चूँकि उसको इंटरेस्टिंग ढंग से उस मैसेज को हम लोग मासेस में पहुँचाना चाह रहे थे, इसलिए उसको सीरियलाइज्ड किया गया। उस समय किसी ने कल्पना नहीं की थी कि वो जो पर्पस था वो सास बहू और साजिश और उससे काफ़ी आगे निकल जाएगा। खैर 90s में आते आते चूँकि इंडिया में टेलीविज़न जो है ग्रो करने लगा, एक ऑडियंस आ गई, सीरियल से बढ़ने लगा, फिर फॉरेन टेलीविज़न चैनल्स आए जो कि पर्टिकुलरली इंटरटेनमेंट में थी। न्यूज़ में उस समय उनको परमिटेड नहीं था। इंटरटेनमेंट भी इंग्लिश जो जी वगैरह जैसे जो चैनल 92 में यहाँ पर आए, तो उस वजह से आए। और एक फ्रेज जो है अप्रोच था, बिकॉज तब तक जो है बहुत ही सांस्कृतिक जो है या लिटरेरी टीवी देखने की आदत इंडियन ऑडियंस को थी। उसमें एक एक्सपेरिमेंटल जो है लिंगो जो है लेकर यह प्राइवेट चैनल्स आए। उसके बाद क्या हुआ, 95 एक बड़ा इंपॉर्टेंट माइलस्टोन रहा, जिसमें कि सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसाइड किया कि जो एयरवेव्स हैं वह पब्लिक प्रॉपर्टी है, इट कांट बी मोनोपोलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट। और उसका कारण ये था कि बीसीसीआई ने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, खासतौर पे दूरदर्शन को चैलेंज किया था। दूरदर्शन फ्री में सिग्नल मांग रहा था क्रिकेट मैचेस के, जबकि बीसीसीआई ने कहा कि नहीं है, कि ये हमारी अपनी प्रॉपर्टी है। उसी को लेकर झगड़ा हुआ और फिर कॉपीराइट बीसीसीआई बेच सकती है। वो जो मसला जो है सीएवी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया का था, जहाँ से कि इंडियन टेलीविजन को एक ट्रिगर मिला, प्राइवेट प्लेयर्स को एंट्री मिली। दूरदर्शन भी उसके लिए अपने को तैयार कर रहा था और इसीलिए जो सो ये आज तक, टुनाइट, जो कि बाद में एनडीटीवी फुल फ्लेज चैनल में कन्वर्ट हुआ, ये सब इस तरह की जर्नी शुरू हुई। ओब्वियसली 2000 का जो पीरियड था, एक तरफ प्रिंट जो है उस समय डिक्लाइन कर रहा था और टीवी जो है वह डबल डिजिट ग्रोथ के साथ आगे बढ़ रहा था। जाते जाते 2010 के बाद से जो सो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स जो है उनका इवोल्यूशन शुरू हो गया, जिसका कि अर्ली फेज अगर आप देखेंगे तो 2000 वगैरह के आसपास rediff.com वगैरह जो है आए थे इंडिया में। हॉटमेल समीर भाटिया लेके, उनकी वजह से बहुत सारे लोगों ने अपने ईमेल अकाउंट खोले। हमारे यहाँ बैंडविड्थ वगैरह ठीक होने लगी, चूँकि जाहिर है डिजिटल अगर आपको जो है इस मीडियम को अगर ग्रो करना है तो आपको बहुत अच्छी कनेक्टिविटी चाहिए। तो सारी की सारी जो सो टेलीकॉम रिवोल्यूशन हुआ, उसके साथ डिजिटल हुआ, फिर टियर 2 टियर 3 सिटीज़ में गए, फिर रूरल इंडिया में गए। और इस तरीके से आज जो हालात है जिसमें कि हम कन्वर्जेंस की बात कर रहे हैं, उसका कारण ये है कि आज की तारीख में डिजिटल जो है वह डोमिनेंट प्लेयर बन चुका है, जिसकी ग्रोथ जो है डबल डिजिट ग्रोथ है और वो ग्रोथ जो है 20% से ज़्यादा की। दूसरी तरफ टीवी जो है, अगर हम पूरे M&E सेक्टर को देखें, मीडिया एंटरटेनमेंट सेक्टर, तो जो है सो टीवी निगेटिव ग्रोथ की तरफ जा रहा है। प्रिंट जो है वो जहाँ था उससे नीचे गिरा है। लेकिन अगर आप कुल मिला जुला के कहें, एक ट्रेडिशनल अप्रोच है सरकारों का भी, या फिर हमारी एक प्रैक्टिस भी है, जिसमें कि अभी भी एक कैंपेन का एक बड़ा हिस्सा जाता है। इसलिए जो है सो आप 1% के आसपास की नेग्लिजिबल ग्रोथ जो है सो प्रिंट की है। लेकिन जो सबसे बड़ा कंजम्पशन है, चूँकि जो आप लोगों को, अगर आप लोग रिसर्च करेंगे थोड़ा सा आज की गूगल की दुनिया में, AI की दुनिया में, बहुत आसान है, तो आप पाएंगे कि आज की तारीख में जो चीज़ सबसे ज़्यादा कंज्यूम की जा रही है सेक्टर में, वह जो है आपके लाइव इवेंट्स हैं, जो कि जिसकी ग्रोथ जो है सो 35% से भी ज़्यादा है। अब सवाल ये उठता है कि कन्वर्जेंस की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि जो सो अप्रोच जो है, पहले ये सारे के सारे साइलोज में काम करते थे। प्रिंट जर्नलिस्ट प्रिंट करता था, टीवी वाला टीवी करता था, डिजिटल एक अलग ब्रीड थी। इनके बीच में आपस में कोई कम्युनिकेशन नहीं था। मुझे याद है जिस ऑर्गेनाइजेशन में मैं अभी काम कर रहा हूँ, वहाँ जब मैंने ज्वाइन किया था तो पता चला कि डिजिटल के लिए अलग रिपोर्टर्स थे, टीवी के लिए अलग रिपोर्टर्स थे, दोनों का अपना कोई प्रोडक्शन भी साझा नहीं था। अब सवाल ये उठता है कि कन्वर्जेंस की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? अगर आप लोग ग्लोबल कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे, जैसे कि NYT का, NYT एक समय, न्यूयॉर्क टाइम्स जिसको हम कहते हैं, एक समय का डेड प्रोडक्ट हो चुका था। उसके पास कोई जो है लगातार उसका सब्सक्रिप्शन गिरता जा रहा था। उस समय जो है सो ने डिसाइड किया कि हम लोग कन्वर्ज एटमॉस्फेयर में जाएंगे, और आज की तारीख में NYT जो है वह उसके डिजिटल न्यूज़ रूम का एक बाई प्रोडक्ट है, जिसको कि 10 लोग तैयार बैठ के करते हैं। प्रिंट की इतनी ही वैल्यू है। नाउ इट्स ए डिजिटल फर्स्ट प्रोडक्ट। उसी तरीके से अगर आप देखेंगे, ऑस्ट्रेलिया में सिडनी मॉर्निंग हेराल्ड का एक्सपेरिमेंट रहा, ऐसे बहुत सारे पूरी दुनिया में ग्लोबो का एक्सपेरिमेंट रहा। आप लोग सर्च करेंगे तो मिलेंगे, पूरी दुनिया में अलग अलग देशों में इस तरह के एक्सपेरिमेंट हुए। और ये एक्सपेरिमेंट इसलिए हुआ कन्वर्जेंस का, क्योंकि आज की तारीख में जो आपका कंज्यूमर है, क्योंकि कई लोग जो मिशनरी अप्रोच के साथ इस संस्थान में आते हैं, उनको ये कंज्यूमर शब्द से बड़ी चिढ़ होती है। लेकिन कंज्यूमर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एंड ऑफ द डे जो आपका कंटेंट जो है, कंटेंट आज की तारीख में चूंकि सारे के सारे क्रिएटर्स बनना चाहते हैं, तो इसलिए कंटेंट शब्द को तो समझना पड़ेगा। तो कंटेंट को जो कंज्यूम करने वाला है, ऑब्वियसली वो आपके लिए कंज्यूमर है। वह कंज्यूमर जो है वह प्लेटफॉर्म न्यूट्रल अप्रोच के साथ जा रहा है।
वो जो है अगर यहाँ खड़ा है वो मोबाइल पे देखेगा, कहीं और सुविधा है वह जो सो बड़े टीवी पे देखेगा, वह अगर कार में बैठा है वो रेडियो पर सुनेगा। यानी कि आप जो है किसी एक प्लेटफॉर्म के जरिए उसको सेटिस्फाई नहीं कर सकते। और इसीलिए ये ट्रिगर आया कि अगर आपको अपने व्यूअर को, रीडर को, कंज्यूमर को अगर पकड़ना है तो आप प्लेटफॉर्म न्यूट्रल अप्रोच के साथ जाइए, मीन्स कि वो जहां है वहां उसको पकड़िए। और ये जो है कन्वर्जेंस के लिए ट्रिगर था ग्लोबली, जो कि धीरे धीरे इंडिया में भी आया, बिकॉज ओब्वियसली करीब 150 करोड़ की आबादी वाला है देश, जहां पर कि इतने बड़े पैमाने पर कंजम्पशन है। आप इस ट्रेंड को जो है फॉलो न करना अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप इन्फ्लुएंसर के रोल में रहें या नहीं, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग एक समय था जो कि फेसबुक को वह जो है सो अपने रेवेन्यू के प्लेटफॉर्म के तौर पर लेकर चल रहा था। वन फाइन मॉर्निंग जो है उन्होंने अपने एल्गोरिथम चेंज कर दिए और रातों रात जो उस पर बेस्ड जो सारा का सारा आपका रेवेन्यू का स्ट्रीम था वो ड्राई हो गया, चूँकि उसने न्यूज़ को डिप्रायोरिटाइज कर दिया। यूट्यूब, अभी बहुत सारे लोग यूट्यूबर बन के घूम रहे हैं, मुझे नहीं पता कि कब तक वह जो है आपको इसी तरीके से मोनेटाइज करते रहने का अवसर देंगे। इसीलिए ऑन प्लेटफॉर्म की आवश्यकता है कि जिस पर जो भी आपने रखा है, चाहे वो टेक्स्ट है चाहे वीडियो है, वो आपका है, वो आपके प्लेटफॉर्म पर है, वो आपके एल्गोरिथम से चलेगा। लेकिन समस्या वहाँ भी है, जो कंटेंट है जेनरिक कंटेंट के लिए डिमांड नहीं है, डिमांड जो है वह ओरिजिनल कंटेंट के लिए। एआई एरा में बहुत आसान है कंटेंट को क्रिएट करना, लेकिन अगर ओरिजिनलिटी नहीं है तो फिर वो जो है बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड नहीं होगी। आज की तारीख में आप देखते हैं व्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, आज की तारीख में इंगेजमेंट इंपॉर्टेंट है। अब जो है सो आपकी जो प्राइसिंग जो है वह वहाँ पर होने लगी है। तो ये सारा का सारा जो है मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि जब आप अपनी तैयारी कर रहे हो, आज से 1 साल 2 साल बाद निकल के जब आप इंडस्ट्री में जाएं या फिर खुद का अपना वेंचर शुरू करें, तो आपको ये चीज़ें ध्यान में होनी चाहिए कि ये इंडस्ट्री किस डायरेक्शन में शिफ्ट कर रही है और इसके लिए जो सो हमारी अपनी तैयारी क्या होनी चाहिए। तो जाहिर है आज की तारीख में आप अपने को किसी एक प्लेटफॉर्म तक लिमिट करके नहीं चलेंगे, नहीं चल सकते, बिकॉज आप जहाँ भी जाएंगे वह कन्वर्ज सिस्टम होगा। तो उसमें आप टीवी के लिए भी काम कर रहे हैं, प्रिंट के लिए भी काम कर रहे हैं, आप रेडियो के लिए भी काम कर रहे हैं, आप डिजिटल के लिए भी काम कर रहे हैं, डिजिटल में भी आप ऑन प्लेटफॉर्म के लिए काम कर रहे हैं, ऑफ प्लेटफॉर्म के लिए कर रहे हैं। ये सारी की सारी जो है एक कन्वर्ज स्ट्रक्चर में काम करने की आपकी तैयारी होनी चाहिए। और इसके लिए जो बुनियादी तैयारी है, जो बुनियादी स्किल सेट आवश्यक है, वो ये है कि चूंकि एआई ने बहुत सारी रूटीन जॉब्स को खत्म कर दिया, जैसे कि मान लीजिए कॉपी राइटिंग का काम जो कि ब्रेड एंड बटर था, वह जो सो उसका लायंस शेयर आज की तारीख में जो सो एआई के जरिए आ रहा है। लेकिन जो जॉब कभी भी खत्म नहीं होगी वो मॉडरेशन की जॉब, क्योंकि आप लोग एआई में हमेशा जब भी यूज करते हैं एक डिस्क्लेमर पढ़ते होंगे कि इसकी एक्यूरेसी जो है वो 100% है या गारंटीड नहीं है। तो यह मॉडरेशन का काम जो है एज ए जर्नलिस्ट, एज ए कम्युनिकेटर, एज ए कंटेंट क्रिएटर, अगर किसी भी ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर में आप हैं, वह बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। और अच्छे आप मॉडरेटर बन सकें उसके लिए जरूरी है कि आप डोमेन एक्सपर्ट बने। चूंकि आप अगर आपको इन्वायरमेंट से प्रेम है, आप इन्वायरमेंट के बारे में बिल्कुल डीप जाइए, अच्छी जानकारी जुटाइए, अच्छे स्किल सेट हासिल करिए, ताकि आप उस सेक्टर से जुड़ी चीज़ों को आप बेस्ट ढंग से प्रेजेंट कर सकें, मॉडरेट कर सकें। अगर आपको एंटरटेनमेंट में इंटरेस्ट है, बिकॉज एंटरटेनमेंट बहुत बड़ा सेक्टर है इंडिया में। अगर आप न्यूज़ और एंटरटेनमेंट के बीच की बात करें, एंटरटेनमेंट का जो जोनर हो बहुत बड़ा जोनर है न्यूज़ के सामने, तो उस पर आपकी मास्टरी है। चाहे चाहे आपको इन्वायरमेंट से प्रेम हो, डिफेंस से प्रेम हो, मेरी सलाह ये होगी कि प्लीज़ प्रिपेयर योर सेल्फ एज ए डोमेन एक्सपर्ट। जनरिक के लिए कोई गुंजाइश नहीं रह गई है, क्योंकि आज की तारीख में जब हम हायरिंग भी हम कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि भाई इस कैंडिडेट का जो स्ट्रेंथ क्या है। आज की तारीख में रूटीन जो है सो आप कॉपीराइट करते हैं, उसकी ज़रूरत नहीं रह गई है। आज मैं आपको बता सकता हूँ, मनी कंट्रोल हमारा एक प्लेटफॉर्म है, हज़ारों हज़ार मार्केट रिलेटेड स्टोरीज हमने एक बार अगर एआई मॉडल्स को ट्रेन कर दिया, मेरी एक्यूरेसी का लेवल 99% है। इवन आप जैसे कि ट्रांसलेटर्स की जॉब, पहले हिंदी के अखबारों में एक बहुत बड़ी जॉब होती थी कि आप अंग्रेजी की कॉपी होती थी, चाहे एजेंसीज की हो, चाहे आपके सिस्टर कंसर्न की इंग्लिश की कॉपी होती थी, आप उसको ट्रांसलेट करते थे। आज आप इंग्लिश टू हिंदी छोड़िए, भारत की जितनी भी भाषाएं हैं उसमें एक्यूरेसी का लेवल 85 to 90% हो गया है। और आज की तारीख में अनफॉर्चुनेटली हमारे लिंग्विस्टिक स्किल सेट जो हैं, आप जिस भी रीजन से आ रहे हों, जिस भी इलाके से आ रहे हों, वहाँ पर जो है सो हमने अपनी बुनियादी मातृभाषा के साथ इतना कंप्रोमाइज़ कर लिया है कि हम भी 90% के लेवल पे नहीं पहुँच रहे हैं। तो एआई जनरेटेड जो ट्रांसलेशन है वो आपसे हमसे काफ़ी बेटर है। तो इसलिए रूटीन जो चीज़ें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। अब एक्सपर्टीज़ की आवश्यकता है, और वो भी एक्सपर्टीज़ ऐसी जो कि कन्वर्ज एटमॉस्फेयर में
वह सक्सेसफुल हो सके। तो मुझे लगता है कि मेरी ये सलाह होगी कि आप साल 2 साल जो आप गुजारने वाले हैं, आप अपने इन बुनियादी स्किल सेट को मजबूत करें, और इसके साथ अगर आप तैयारी करके जाते हैं, तय मानिए बहुत एम्पल अपॉर्चुनिटी है। चूँकि 150 करोड़ के इस देश में कंटेंट कंज्यूम करने वालों की कोई कमी नहीं है। वह जो सो अर्बन पॉकेट्स तक लिमिटेड नहीं है, वह रूरल इंडिया में बड़े पैमाने पर है। इंडिया में डेटा अब भी इतना सस्ता है कि लोग बड़े पैमाने पर कंज्यूम कर रहे हैं, और टैक्स नहीं, वीडियो सबसे ज़्यादा कंज्यूम हो रहा है। तो इसलिए मुझे लगता है कि एम्पल अपॉर्चुनिटीज़ हैं, और आपके कॉन्फिडेंस को बिल्ड करने के लिए इससे बेटर कोई संस्थान नहीं हो सकता, बेटर कोई इंस्टीट्यूट नहीं हो सकता। आज भी मुझे याद है जब हम लोग यहाँ आए थे हिंदी लिटरेचर पर बात करने के लिए, यहाँ पर डॉक्टर नामवर सिंह आए थे, हिंदी आलोचना के सबसे बड़े नाम होते थे। मुझे याद है सोशियोलॉजी पे इंडियन सोशल सिस्टम्स को पढ़ाने के लिए जो हमारे पास प्रोफेसर नामवर सिंह आए थे, जिनकी किताब मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडियन ट्रेडिशन इंडियन सोशियोलॉजी की क्लासिक मानी जाती है। हमें ट्रेन करने के लिए, जैसे कि मान लीजिए AIR से उस जमाने में मिस्टर विश्वकर्मा आते थे, तो बड़े बड़े लोगों से एक्सपोजर ये संस्थान आपका कराता है। आपके पास मोस्ट मॉडर्न फैसिलिटीज़ हैं। ये जो एक्सपोजर, ये जो इंफ्रा है, इसको भरपूर यूज़ करिए और इसके साथ आप आगे बढ़िए। मुझे लगता है कि आप सभी लोगों का भविष्य काफ़ी उज्जवल है। एक बार फिर से आप सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। देश के इस सबसे बड़े, सबसे रेस्पेक्टेड इंस्टीट्यूशन जो कि अब यूनिवर्सिटी में कन्वर्ट हो चुका है, उसमें आने के लिए आपकी यात्रा बहुत अच्छी रहे, आप इसको एंजॉय करें, यही हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद ब्रजेश जी, आपने कुछ बातें कही हैं। व्यूज़ नहीं, एंगेजमेंट इम्पोर्टेंट है, और कन्वर्जेंस को आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। एक बात आपने कही है जो आपको खास तौर से ध्यान में रखनी है, आपको मल्टीपल रोल्स के लिए खुद को तैयार करना है। अगर आज मार्केट में आपको अपनी जगह बनानी है तो मल्टीपल रोल्स में आप काम करने के लिए तैयार रहने चाहिए। 150 करोड़ के देश में कंटेंट कंज्यूमर्स की कमी नहीं है, आपको अपना कंज्यूमर ढूंढना है और वो जैसा कंटेंट चाहता है वैसा कंटेंट आपको देना है। वीडियो कंटेंट की डिमांड इस समय बहुत ज़्यादा है, और AI मॉडल्स का कैसे यूज़ हो रहा है न्यूज़ रूम में, वो भी आपने एक्सप्लेन किया है। अभी ब्रजेश जी से कुछ अगर आप सवाल पूछना चाहते हैं तो 10-15 मिनट हमारे पास हैं। कुछ स्टूडेंट अगर कोई क्वेश्चन है तो हम शुरू कर सकते हैं, फिर अगले स्पीकर से हम रिक्वेस्ट करेंगे। बताइए पहला सवाल कौन पूछेगा? इधर माइक दे दीजिए। मेवालाल जी, इधर दे दीजिए, हाथ उठाइए। यस, अपना नाम बताइए और किस कोर्स से ये भी बताइए। Myself Riju Chanda from RTV. So my question is, when you talk about deep understanding and diving deep into a certain beat, but when in a generation our attention span is actually low, how deep the knowledge should be to actually give out the output that is actually needed? It's a very relevant question, because the attention span is so small. It's very difficult to engage your audience. So you have to work very, very hard to engage your consumer in a very brief period. Earlier, we were having the luxury of getting a very reasonable amount of attention span. Earlier, it was a 15 minutes, 20 minutes consumption. Nowadays, at max, it is 60 to 90 seconds. So your challenge is much more than the earlier generation. And the knowledge you will gain, the expertise you will develop, it will help you in creating the compelling content to engage your consumer, your audience, your viewer in that precise moment or that precise limitation. Hello, sir. मयंक समदरिया, MBS, MA MBS। मेरा प्रश्न एक यह है, जो भारतीय फीड में जो डाटा चलता है और जो यूरोपियन फीड में डाटा चलता है, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर और हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर एक बड़ा इंटेलेक्चुअल और एक बड़ा या डिग्री के तौर पर मैं एक बड़े अंतर के तौर पर डाटा को देखता हूँ जो यहाँ डाटा चलता है। एक तरह का, खैर यह शब्द कहना ठीक नहीं रहेगा, लेकिन यह क्या ऐसा नहीं है कि यह किसी कम स्तर का कंटेंट है जिसमें उतनी उच्च मात्रा की बौद्धिकता का सर्वथा अभाव है?
और यह एक चैन रिएक्शन की तरह तैयार हो रहा है, जिसमें मुझे नहीं लगता है कि उसे अधिक बेहतर बनाने के लिए कोई काम भी किया जा रहा है। वह या तो नीचे गिर रहा है या तो वहीं पर है। इसे आप कैसे देखते हैं? मुझे लगता है कि इंडिया में ऑडियंस वैरायटी बहुत बड़ी है। आप ये भी देखें कि जब आप अपने ऑडियंस को कैटर कर रहे हैं, जो अलग अलग प्लेटफॉर्म हैं वो अलग अलग टीजीज़ को एड्रेस कर रहे हैं, जो टारगेट ग्रुप्स जो हैं उनको एड्रेस कर रहे हैं, उसमें हो सकता है कोई बहुत ही जनरिक नॉलेज हासिल करने वाला हो, कोई बिल्कुल ऐसा हो जिसको कि बहुत ही वैल्यू एडेड कंटेंट चाहिए। जैसे कि मान लीजिए जो लोग पेट्रो सेक्टर को उसके बारे में वैल्यू एडेड इंफॉर्मेशन चाहते हैं, तो आपको पता नहीं, अगर आप गूगल सर्च करिएगा तो एक पेट्रोवाज करके बड़ा ही स्पेशलाइज्ड प्लेटफॉर्म है, और जिसको कंज्यूम करने के लिए वहाँ पर जो कंटेंट अवेलेबल है वह जो सो आप उसके लिए पे करते हैं। इंडिया में जो है कंटेंट जो है सो खासतौर पर डिजिटल स्पेस में आप कंज्यूम करने के लिए पे करें, अभी भी ये थोड़ी रेयरिटी है। हम लोग फ्री में सब कुछ चाहते हैं। तो ऐसे में जो प्लेटफॉर्म जो है पेड सब्सक्रिप्शन आज भी अट्रैक्ट कर पा रहे हैं, वो जाहिर है बहुत ही हाई क्वालिटी का कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं। तो एक तरफ अगर मान लीजिए आप रांची में बैठे हैं और रांची में मैं कहूँ कि आप प्रभात खबर टाइप का कोई अखबार, उसमें आप काम कर रहे हैं, तो आप ये भी देखिए कि झारखंड की जो पॉपुलेशन है, जो उसका मास है, वह किस तरह के कंटेंट को चाहता है। तो हमेशा हमारा जो कंटेंट है वह जो है हमारा जो कंज्यूमर है, हमारा जो यूज़र है, उसको ध्यान में रख के है, न कि जो है हम जो चाहते हैं कि हमने ये तय कर लिया कि हम ऐसा कुछ बनाएंगे। एंड ऑफ द डे आप बना किसके लिए रहे हैं, आप प्रोड्यूस किसके लिए कर रहे हैं, अपने टारगेट ऑडियंस के लिए कर रहे हैं। तो उसी के हिसाब से कंटेंट की वैरायटी है। जहाँ तक आपने कहा कि क्या क्वालिटेटिव डीप बहुत ज़्यादा है इन कंपेरिजन टू यूरोप, मुझे नहीं लगता। अगर आप देखें बहुत अच्छी अच्छी जो है मैगजीन्स आज भी सर्वाइव कर रही हैं, ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म हो गई। आज भी अगर आप अपने न्यूज़पेपर्स को देखें, न्यूज़पेपर्स आपको हर रेंज के आपको मिल जाएंगे। इवन टेलीविज़न चैनल्स जिसकी बहुत आलोचना होती है, आप देखेंगे तो उसमें कुछ बहुत ही अल्ट्रा सीरियस नेचर के हैं, कुछ बहुत ही जेनरिक। तो जहाँ पर जिसका जो ऑडियंस है उस तरीके से वो उसको मिल रहा है, और मुझे नहीं लगता कि कंटेंट के लेवल पर आपको कहीं सफ़र करना पड़ रहा है। अभी मेरे पास एक मिनट रुक जाइए। अभी मेरे पास बहुत सारे सवाल रीजनल कैंपस से आ गए हैं और इतनी स्पीड से सवाल आ रहे हैं कि मैं पढ़ नहीं पा रहा हूँ। उससे पहले अगला सवाल आ जाता है। एक कभी ढेकनाल कैंपस से अभी सवाल है, प्रज्ञांश तिवारी, ईजे ढेकनाल, which AI tools and digital tools are essential to learn according to current industry requirements? So look, this is not a single tool. For example, if you are joining some newsroom, for example, let us assume that it's a general English news website, you are going to cater that particular platform. So for edit, you can use a particular kind of AI tool, AI platform. For simple translation or the copy improvisation, you can use another. So there is a specialization also. Different kind of AI tools, AI platforms are catering different specialized things. For example, if you need something deep in Excel, to cater to Excel, or for example, if you have to do something with the scanning, the old records and converting them into the text, then you need a different kind of. So it is still an evolving process. In our newsrooms, we use different kind of AI tools, AI platforms to address different kind of jobs. So it's not a single generic AI one. Obviously, the most popular one is obviously given by Google and all. But if you are coming to a newsroom, then you have to use that AI tools as per the requirement of that particular theme or that particular function. एक सवाल जम्मू कैंपस से है, हिंदी जर्नलिज्म की स्टूडेंट है खुशी पवार। उससे पहले अगला सवाल आ गया। With journalists now expected to write, shoot, edit and publish across multiple platforms, how can students maintain depth and accuracy instead of becoming just multitaskers? So for example, because you all are starting your journey today, you have 1 or 2 years to spend in this campus or various campuses across the country, you know. You have to improve your skill set, be it writing, be it knowledge, be it tech skills. Because
if you are preparing yourself in a very organized manner in next 12 months or 24 months, you will be capable enough not to cater only the various kind of platforms, but cater it very, very efficiently. Because, you know, multitasking is the byword in the Converse setup. A simple reporter, a simple copywriter. These simple functions are not enough to survive or to create a longevity in the domain. So multitasking is a must, but then multitasking does not compel you in becoming a domain expert. You can do the multitasking at the same time, because multitasking is a skill set. And you can have the expertise in a particular field. So it's not in collision with each other, but it's, we can say simply that they will support each other in the long run in your own career. एक क्वेश्चन आइजॉल कैंपस से भी ले लेते हैं. हाउ कैन ए फ्रेशर deal with the core issues like rumors, misconceptions, and biased views? So obviously, bias is a quite subjective word, you know. In today's polarized era, anything can be termed as bias. But the question of misinformation or distortion, you know, it is very, very challenging nowadays, because in the era of AI, the distortion is very much real. And if a criminal, if he or she uses the AI or any other tech tools to do any fraud or do any crime, it's understandable, because, you know, in any society, we are having such elements. But unfortunately, if you look the global scenario in past few months or years, even the topmost leaders, for example, let me quote Donald Trump. If you remember the last Pope death occasion, he portrayed himself as a Pope using the AI. 5 years, 10 years ago, it was simply unbelievable that head of any state can do such practices. Even multiple things. If you remember the Op Sindoor, forget a petty criminal. Military intelligence department of a particular country, the neighboring country, the enemy country, the ISPR, they use the AI to distort the facts in such an intense environment. So our challenge is to decipher these frauds, to know the truth, and you have sufficient tools now. For example, creating photographs, the fake photographs, using AI is a very common phenomenon now. But after going through such problems, such issues, now even the AI platforms, they are giving you such tools to identify or to know that this photograph is AI generated or not. Because now there is a watermarking system. If you look at the Gemini, now Gemini has a watermark on each and every photograph produced using the Gemini. So there are certain safeguards also. You have to hone your skills in identifying these practices, or know the usual things to decipher such a phenomena. That is the only advice I can give you. Yes, next. हेलो, नमस्कार सर, माही मेरा नाम है और ADPR कोर्स है. सर मैं ये पूछना चाहता हूँ कि एज अ मीडिया एस्पेरेंट जब हम जैसे मैं अपना कोर्स पूरा कर लूँगा, तो अगर मुझे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में जो मीडिया से रिलेटेड हो वहाँ अपनी जगह बनानी है, म्यूज़िक या स्क्रिप्ट राइटिंग या किसी इसी चीज़ से मनोरंजन के क्षेत्र में, तो क्या स्कोप है इसके लिए और हमें किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा? मुझे लगता है काफ़ी बड़ा स्कोप है, और आप देखेंगे ख़ासतौर पे जो हिंदी पट्टी में पहले एक समय था जब बॉलीवुड के अंदर अगर आप देखेंगे तो काफ़ी कंसंट्रेशन जो है वह पुराने समय अगर आप देखेंगे तो लाहौर का एक बड़ा राइटर्स ग्रुप ऐसा था जो कि लंबे समय तक वहाँ काफ़ी सफल रहा. आज की तारीख में देखेंगे बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में, बड़े बड़े अच्छे गीत, वो मध्य प्रदेश के किसी गांव से निकल कर आया हुआ कोई यूथ, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर से निकल कर आया हुआ, बिहार के बेतिया से निकल कर आया हुआ, इस तरह के लोग लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, उनको प्लेटफॉर्म्स मिल रहे हैं. चूँकि आज की तारीख में फिल्में जो है
जो एक समय बॉलीवुड जो है हाईली मोनोपोलाइज्ड बाई सर्टेन फैमिलीज था, उसमें भी डेमोक्रेटाइजेशन आया है। इवन OTTs ने एक बहुत बड़ा जो सो आपके लिए अल्टरनेट करियर खोल दिया है, जिसमें कि आप बहुत सारी वो चीज़ें जो कि आप वाइडर स्क्रीन पे नहीं कर सकते, 70 mm में नहीं कर सकते, वह आप OTT प्लेटफॉर्म्स पे कर रहे हैं। दूसरा, आप देखेंगे कि बिगेस्ट स्क्रीन्स पर जाकर देखने का रिवाज खत्म हो रहा है। इंस्टेड ऑफ जो सो आपके अपने जो सो बेडरूम या ड्राइंग रूम में जो आज की तारीख में जो स्क्रीन है उस पर आप देख रहे हैं, या फिर अपने मोबाइल पे कंज्यूम कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कंटेंट वेराइटी जो है काफ़ी रिक्वायर्ड है, बहुत सारा कंटेंट बन रहा है, और उसमें जो आपका ये है कि क्या आप इस तरह से इंटरटेनमेंट वर्ल्ड में सफल हो सकते हैं क्या, मुझे लगता है कि बहुत अच्छी रियल पॉसिबिलिटीज़ हैं जहाँ पर कि आप बहुत अच्छे जो है जॉब्स या प्रोफाइल्स आप पा सकते हैं एज ए फ्रीलांसर, एज ए रेगुलर एम्प्लॉई ऑल्सो, बिकॉज आज की तारीख में बहुत सारे जो है इंटरटेनमेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कंपनीज हैं जो कि फुल टाइम राइटर्स को एम्प्लॉय कर रही हैं, डिप्लॉय कर रही हैं। Sir, first of all, sir, thank you for your valuable guidance and time. Sir, while your address, you address a point that many of the time we are dependent on a single platform, and what happens that one day from the top leadership of that platform, a decision come and all the algorithm changes, and the economical expectations as well as all the social expectations from that platform changes because the algorithm has changed. So what can be the best substitute for that, that one fine morning, no one from that institute come with any decision and that will change the algorithm and all our social and financial expectations will be exploited. What is Indian substitute which has a Indian origin? We are in the era of great disruptions. If you recollect the last 5-6 years, the entire globe, particularly our own neighborhood, or Central Asia, or even the Middle East, it is the extreme time of disruption. Even at the level of technology, courtesy AI, if you look at our own Indian IT companies, they are suffering a lot because the routine jobs of a coder, it is no more viable. You have to adapt to the situation. So for you also, because you know, we can't predict the future like any Alvin Toffler. You have to prepare yourself in the things which are going to come in the years ahead. And the only skill set that can give you the survival is the basics. For example, the good writing skill, the good knowledge base, the adaptability, the technological knowledge, you know. Because if you are not updating yourself, you will be obsolete very soon. If you remember in the time of 70s, there was a position called paster in the Bollywood. Normally the job was to paste the films, you know. In the era of digital films, this role is no more there. For example, when we started our television journey in 95, 96, there was a system called camera assistants or audio recorders. Basically the audio recorder assistant, you know. This job is no more viable because in the era of smart mobiles, you know, you don't need these huge ENG sets. For example, the entire industry, the Indian media industry, particularly in the news, we are using Mojo, big time. Your mobile, your smartphone is more than enough to do quality video shooting. So the adaptability plus our basics, this can be the formula for our survival, even in changing world where the tech companies are changing the rules of the business every month. सर नमस्ते। सर मैं कार्तिकेय दिवाकर हिंदी पत्रकारिता से। सर मेरा सवाल है कि आपने बोला कि जो प्रिंट की इंडस्ट्री है वहाँ पर रीडरशिप बहुत कम होती जा रही है, लोग डिजिटल की तरफ ज़्यादा शिफ्ट हो रहे हैं, पर सर बात जब क्रेडिबिलिटी की आती है तो प्रिंट ही सबसे ऊपर दिखाई देता है, क्योंकि सर जब कोई भी चीज़ अगर हम लिखते हैं तो वो ज़्यादा प्रामाणिक होती है, क्योंकि आज के डिजिटल युग में अगर हमने कोई वीडियो डाली और कोई हमसे गलती हो गई तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि हम उसे डिलीट कर सकते हैं, लेकिन एक बार जो लिखा गया वो तो छप गया। तो सर जो डिजिटल पत्रकार हैं वो क्रेडिबिलिटी कैसे लाएं और प्रिंट में और क्या बेहतर हो सकता है? मुझे लगता है कि आपके घर में कितने अखबार आते हैं? अच्छा, और आपके पड़ोस में कितने घरों में डेली अखबार आता है?
या उसको भी छोड़ दीजिए, इस हॉल में जितने लोग बैठे हैं उसमें से कितने लोग डेली अखबार फिजिकल कॉपी पढ़ते हैं? आपका जवाब आपके सामने है। नए अखबार लॉन्चेज बंद हो गए, सर्कुलेशन लगातार घट रही है। लीगेसी बिजनेस है, चूंकि इंडिया में प्रिंट जो है पहला बड़ा प्लेटफॉर्म था, इसलिए आज भी एडवर्टाइजर्स, गवर्नमेंट, इन सबका एक बड़ा सपोर्ट उसे हासिल है, जिसकी वजह से वह सरवाइव कर रहा है। और आपने जहाँ तक क्रेडिबिलिटी की बात कही, आज की तारीख में जो हम कंटेंट कंज्यूम कर रहे हैं मोस्टली हम डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे कंज्यूम कर रहे हैं, तो जो उस पे जो लोग लिख रहे हैं, और दूसरा आपने अगर ध्यान दिया हो, मैंने जब बात कही कि हम लोग एक कन्वर्स्ड इरा में रह रहे हैं। आपकी जनरेशन जो कि न्यूज़ रूम्स में जाएगी या किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाएगी, वह एक कन्वर्स्ड इन्वायरमेंट में काम करेगी। तो मान लीजिए आप जो चीज़ लिखी है आपने, मान लीजिए वो आपका आर्टिकल ही कह ले एक पल को, तो वह हो सकता है वह अखबार में भी छपे अगर उस हाउस के पास इस तरह के लीनियर प्रिंट प्लेटफॉर्म है, दूसरा उस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी छपेगा। तो ऐसा तो है नहीं कि डिजिटल में छपती ही उसकी क्रेडिबिलिटी जो है वह कम हो जाएगी और अखबार में छपती ही ज़्यादा हो जाएगी। जहाँ तक आपने कहा कि डिजिटल में आप कोई भी चीज़ रिमूव कर सकते हैं, हालात ये है कि आज की तारीख में डिजिटल की दुनिया जो है सो ज़्यादा खतरनाक है। प्रिंट में तो वह महज कुछ हज़ार कुछ लाख लोगों के पास कॉपी पहुँचती है। डिजिटल की दुनिया में अगर आप कोई चीज़ अगर आप डिलीट भी कर देते हैं तो भी वो एक्चुअल यूनिवर्स से डिलीट नहीं होती, मैं उसको जब चाहूँ उसको रिकवर कर सकता हूँ अगर मुझे उस सिस्टम की एक्सेस है। आप इस बात का ध्यान रखें, और ख़ासतौर पे जो लोग साइबर फोरेंसिक में हैं, कि डिजिटल की दुनिया में कोई भी चीज़ कहीं जाती नहीं, वो पड़ी रहती है, वो डिलीट तो कतई नहीं होती, वो अपने फुटप्रिंट्स हमेशा रखती है। तो आपने मान लीजिए आपने कोई एक्स पर कोई पोस्ट डाला, आपने जो है अगले मिनट उसको डिलीट कर दिया, लेकिन आप देखते हैं कि वो जो सो वो घूमते रहता है, आपका डिलीटेड वर्जन भी घूमते रहता है। तो इसलिए क्रेडिबिलिटी का प्लेटफॉर्म से कोई नाता नहीं है। देखिए प्रिंट में जो लोग हैं या जो प्रिंट पब्लिकेशन के जो मालिक हैं, एडिटर्स हैं या सीईओज हैं, वो इस तरह की बात करते हैं बिकॉज अपने प्लेटफॉर्म को अट्रैक्टिव बनाने के लिए उनको क्रेडिबिलिटी फैक्टर को आगे रखना होता है। लेकिन आज की तारीख में जो कंजम्पशन है, जो कंज्यूमर है, वह जो है सो ज़्यादातर कंटेंट जो है सो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे कंज्यूम कर रहा है, और अगर जाहिर अगर उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं होगी तो क्यों उसको कंज्यूम कर रहा होगा। इसलिए ये मानने का कोई कारण नहीं है कि प्रिंट अगर है तो ज़्यादा क्रेडिबल है और डिजिटल है तो वह क्रेडिबल नहीं है। ये वह हम लोगों को अपने दिमाग से निकाल देना चाहिए। ये बातचीत का सिलसिला चलता रहेगा। ब्रजेश जी आज हमारे साथ हैं, आगे भी हम बाद में उन्हें बुलाएंगे, आपसे उनसे डिटेल में बात करने का मौका मिलेगा। अब एक सवाल सिर्फ अमरावती कैंपस से एक ले लेते हैं, हमारे कैंपस को भी लगना चाहिए कि कनेक्टेड हैं, नहीं तो सिर्फ दिल्ली कैंपस डोमिनेट नहीं करना चाहिए। उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूंगा सम्यक जैन जी से। सवाल बहुत छोटा सा है लेकिन गहरा है कि डिजिटल जैसे स्ट्रेंथन हो रहा है, टीवी चैनल्स का क्या होगा? लगता है आपने ध्यान से मेरी स्पीच नहीं सुनी। मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जब 90s में जब टेलीविज़न ग्रो कर रहा था तो हर डबल डिजिट ग्रोथ थी। आज जो है सो टेलीविज़न निगेटिव है। अगर आप लेटेस्ट रिपोर्ट अगर ENY की देखेंगे, हर साल वो लोग पब्लिश करते हैं इंडियन मीडिया एंटरटेनमेंट लैंडस्केप को लेकर, बड़ी डिटेल्ड रिपोर्ट है, आप लोगों को भी पढ़नी चाहिए, अवेलेबल है वेबसाइट्स पर। तो जो 2025 का ईयर है, अगर 2024 से कंपेयर करें, चूँकि 2026 पूरा ईयर अभी बीता नहीं है, तो 2025 में जो है टेलीविज़न जो है उसने ऑलमोस्ट -10% डी ग्रो हुआ है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि जो है वहाँ पर वो डी ग्रोथ है, लेकिन उससे जो है आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अभी हम लोग बात कर रहे थे ना कन्वर्स्ड एटमॉस्फेयर में काम करने की। आपका जो कंज्यूमर है उसने अपना प्लेटफॉर्म सिर्फ शिफ्ट किया है, कंटेंट को कंज्यूम करना बंद नहीं किया है। इसलिए अगर आप जब इस इंडस्ट्री में आएंगे, चाहे इंडिविजुअल क्रिएटर के तौर पर या फिर किसी ऑर्गेनाइज्ड इंस्टीट्यूशन के साथ, आप उस कन्वर्स्ड एनवायरनमेंट में काम कर रहे होंगे जिसमें कि आपका कंज्यूमर, आपका यूजर जहां भी होगा उसको आप उन रिलेवेंट प्लेटफॉर्म्स के जरिए पकड़ ले रहे होंगे। जब प्रिंट के सामने जब टीवी आया था तब भी ये बात बहुत जोर शोर से हुई थी कि क्या प्रिंट अगले कुछ वर्षों में खत्म हो जाएगा। देखिए खत्म नहीं हुआ, आज भी अखबार वैसे ही चल रहे हैं। ये है कि जो एक एडवर्टाइजिंग पाई में उनकी जो लायन शेयर हुआ करती थी, कभी 90% बिजनेस जो है, जो एडवर्टाइजिंग है, अखबारों को जाती थी, वह आज पाई धीरे धीरे कम होती चली गई।
उसको जो है काफ़ी हद तक टीवी ने एक समय कैप्चर किया 90s और 2000 के पीरियड में, और आज जो है वो लायंस से लेके डिजिटल बैठा हुआ है। तो कंजम्पशन का पैटर्न चेंज हो रहा है, कंजम्पशन कंटेंट का वह नहीं कम हो रहा है, सिर्फ जो है प्लेटफॉर्म चेंज हो रहे हैं, इसलिए आप उसको लेकर परेशान ना हो। थैंक यू सर। अब मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं हमारे आज के अगले स्पीकर श्री सम्यक जैन। Shri Samyak S. Jain is an IAS officer of 2022 batch. He secured an All India rank 7 in the UPSC Civil Services examination. Samyak is an alumnus of the IIMC. After completing his district training in Puducherry, he currently serves as Project Director, Delhi State AIDS Control Society, Government of NCT of Delhi. He is also serving as Special Secretary Environment, Government of NCT of Delhi, in addition to his current responsibilities. I welcome Samyak Jain, please. Respected faculty members, my fellow speaker Brijesh sir, and dear students, first of all, please give yourselves a round of applause. Congratulations, you got into one of the most prestigious institutions in the country, and it is in itself a milestone and achievement. मैं ब्रिजेश जी को बड़े ध्यान से सुन रहा था, वो तो काफ़ी मतलब एक्सपीरियंस्ड वक्ता लग रहे थे मुझे, मेरा फर्स्ट टाइम है तो bear with me. मेरा IIMC से नाता 2018-19 का है। मैं 2018 में इंग्लिश जर्नलिज्म बैच में मैंने एडमिशन लिया था, दाखिला लिया था। उस समय सिर्फ 4 ही बैचेस हुआ करते थे, मुख्यतः एक इंग्लिश जर्नलिज्म, एक हिंदी जर्नलिज्म, एक रेडियो एंड टेलीविज़न, एक ADPR और थोड़ा बहुत डेवलपमेंट जर्नलिज्म वगैरह भी हुआ करता था। तो 4-5 ये मेन हुआ करते थे, तब तक ये ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन हुआ करता था। एंड अच्छा, एक चीज़ और थी अभी जो मैंने नोटिस करी, हाँ, आजकल ये टर्म बड़ा चल रहा है, जेनजी। चाहे न्यूज़पेपर वाले हों या सरकार हो, हर कोई इन्हीं के पीछे पड़ी है, जेनजी। देश और दुनिया को हिला के रखा है इस जेनजी ने। और मेरे ख्याल से जो मेरे सामने बैठे हैं यहाँ आजकल स्टूडेंट्स, ये मैक्सिमम शायद सारे के सारे जेनजी होंगे लगभग, सही है ना? तो हमारे बचपन में ना हमने एक बात सीखी थी कि बेटा ताली एक हाथ से नहीं बचती। देन जेनजी केम अलोंग, उन्होंने कहा चैलेंज एक्सेप्टेड, और उन्होंने कुछ इन्वेंट किया है ना? या सो बट मेरे को देख के बड़ा अच्छा लगा कि आप लोग दोनों हाथ से ताली बजा रहे हैं, सो दैट इज अगेन वेरी गुड। So, yeah, as I was saying, कि जब भी मैं IIMC में आया हूँ, जब से मैं IIMC में आया हूँ, मेरे को बड़ा ही एक यहाँ का एनवायरनमेंट, यहाँ का वाइब बड़ा अच्छा है, बड़ा ही वार्मथ है। लोगों ने मुझे एक्सेप्ट किया। मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया था, मेरी लाइफ का शायद सबसे पहला इंटरव्यू था, मैंने रिटर्न करके यहाँ पे इंटरव्यू देने आया था, एंड मेरी लाइफ का शायद सबसे फर्स्ट इंटरव्यू वही था। मुझे लग रहा था मैंने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, घर पे जाके एनालाइज किया तो बड़ा ही एवरेज सा इंटरव्यू दिया था मैंने। But I think the professors here, the teachers here were so good. They saw the potential, or they saw कि कुछ तो promising होगा लड़के में. They were gracious enough to accept me into this institution. उसके बाद जब मैंने इंग्लिश जर्नलिज्म में जब से मैंने शुरू किया, वो 9-10 महीने थे, कहने को 1 साल होता है बट एक्चुअली में 9-10 महीने ही थे। वो लोग जो मुझसे मिलते गए, उन सब में इतनी वार्मथ थी, इतना अपनापन था, इतना घर जैसा था कि मुझे कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं किसी बड़े इंस्टीट्यूशन में हूँ या किस में हूँ। मुझे लगता था मैं अपने दूसरे घर में हूँ। मैं आज 8 साल बाद इस इंस्टीट्यूशन में आया हूँ, सही बता रहा हूँ, टाइम नहीं मिला बीच में आने का। मैं आज आया हूँ, बट आज भी आकर के मुझे सेम फीलिंग महसूस हुई है कि आई एम बैक इन माई सेकेंड होम। तो ये एक चीज़ है जो आप सबको भी यहाँ पे महसूस होगी जैसे जैसे आप यहाँ पे पढ़ेंगे, 1 साल या 2 साल जितने भी कोर्सेज हैं, और उसके बाद लाइफ लॉन्ग आपके साथ रहेगी। आप जहाँ जाएंगे आपके साथ एक टैग जुड़ जाएगा दैट यू आर एन एलुमनाई एंड एलुमनस ऑफ IIMC। जिस भी मीडिया इंस्टीट्यूशन में जाएंगे, इनफैक्ट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में या किसी भी और प्राइवेट कंपनी में भी जाते हैं, आपको कहीं ना कहीं कभी ना कभी कोई ना कोई आपके IIMC का एलुमनाई मिल जाएगा। और एक वो होता है ना, जब आप देखते हो कि अच्छा तुम भी, अच्छा मैं भी, तो वो आंखों में एक चमक आ जाती है कि अरे जान पहचान का कोई है, कोई इतनी दूर भी कोई अपना है, और वो आपको वो आपको बिठाएगा, बात करेगा, वो आपके लिए एक गाइडिंग फिगर हो जाएगा जिस भी इंस्टीट्यूशन में, जिस भी आप मीडिया हाउस में, जिसमें जहाँ पे भी आप जाएंगे, लाइफ लॉन्ग वो आपका एक कनेक्ट क्रिएट हो जाएगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज दैट यू आर पार्ट ऑफ समथिंग मच बिगर देन जस्ट योरसेल्फ।
this is an institution which has very very deep roots, very deep roots. So आप उस चीज़ को लेकर के थोड़ा सा प्राउड महसूस कर सकते हैं और कभी आए तो उस धरोहर को मेरे ख्याल से आगे बढ़ा सकते हैं. नाउ कमिंग टू द टॉपिक जो कि मुझे दिया गया है, जो मैंने चूज़ किया है आज यहाँ पे बात करने के लिए, फ्रॉम IIMC टू UPSC, मैं कुछ चीज़ों पे रोशनी डालना चाहूँगा कि किस तरीके से IIMC की मेरी जर्नी ने मुझे UPSC के एग्ज़ाम के लिए तैयार किया. मैंने जैसे कि मैंने बताया, मैं 18 से 19 तक इंग्लिश जर्नलिज्म में मैंने PG डिप्लोमा किया और 2021 का UPSC CSE मैंने दिया था. 2022 बैच है मेरा IAS का. फॉर्चुनेटली ऑल इंडिया रैंक 7 मैंने अचीव कर ली थी. बट उसके पीछे जो मैं मानता हूँ एक बहुत बड़ा कारण था सिंगल डिजिट रैंक के पीछे, वो था IIMC. ब्रिजेश जी को शायद लगेगा, बट उन्होंने जैसे अभी बताया था कि AI बहुत आ गया है आजकल और कॉपी राइटर्स की ज़रूरत महसूस नहीं होती है. बट मैं ये कहूँगा कि IIMC ने जो मुझे कॉपी राइटिंग सिखाई, एज अ पार्ट ऑफ इंग्लिश जर्नलिज्म हमको कॉपी राइटिंग सिखाई जाती थी और बहुत सिखाई जाती थी. हमने एक एक कॉपी राइटिंग लिखनी सीखी है कि किस तरीके से अपनी बात को बेस्ट, सबसे ज़्यादा सुंदर शब्दों में लिखा जा सके, इस सबसे ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिबल शब्दों में लिखा जा सके. वो चीज़ मैं मानता हूँ कि AI आ गया है आज के टाइम पे और वो शायद आप में से मैक्सिमम लोगों को ज़रूरत नहीं पड़ेगी वो करने की. बट वो चीज़ आपके, अगर वो स्किल आपके पास आ जाएगा तो लाइफ लॉन्ग वो आपको कहीं ना कहीं मदद ज़रूर करेगा. जैसे कि मुझे किया, UPSC क्रैक करने के लिए आपको मेंस का एक एग्ज़ाम होता है, 9 पेपर्स होते हैं, 2 हफ्ते तक चलता है, बड़ा ही लेंथी एग्ज़ाम होता है. बट उसमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है कि अच्छी राइटिंग स्किल्स हैं क्या आपकी, आपको मैटर पता है, आपको पता है कि आपको क्या कहना है, बट आप उसको अच्छा अगर अपने शब्दों में नहीं कह पाएंगे तो आपका नहीं हो पाएगा. दूसरी चीज़ जो जर्नलिज्म आपको सिखाता है वो होता है एडिटिंग. आई थिंक हर कोई आपको सिखाएगा, आप किसी भी कोर्स के होंगे, चाहे वीडियोग्राफिक्स से हो, चाहे प्रिंट जर्नलिज्म में किसी भी कोर्स में हो, आप एडिटिंग सीखेंगे. एडिटिंग यही होता है कि जो ज़्यादा बड़ी बात है उसको संक्षेप में, जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं उसको काट छाट करके और जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको सजा करके कैसे कहा जाए. अगेन UPSC में सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही बात होती है क्योंकि हमारे पास एक बहुत स्ट्रिक्ट वर्ड लिमिट होती है. आंसर को हमको या तो 150 शब्दों में कहना होता है या 250 शब्दों में कहना होता है और कहने को बहुत कुछ होता है. तो कम से कम शब्दों में कैसे अपनी बात को कहा जाए, गागर में सागर कैसे भरा जाए, वो ही एडिटिंग की असली स्किल है और कहीं ना कहीं IIMC वो आपको बहुत अच्छे तरीके से सिखाता है. और एक और चीज़ है, मैं EJ में था, डॉक्टर सुरभि दहिया हमारी कोर्स डायरेक्टर हुआ करती थी और वो हमको बहुत काम देती थी. मैं अभी बता रहा हूँ, हमने बहुत मेहनत करी है, हर हफ्ते गैप जर्नल्स निकाले हैं. मंडे टू फ्राइडे कॉलेज हुआ करता था, बट लेट मी टेल यू, हम सैटरडेज और संडेज को भी काम कर रहे होते थे. हार्डवर्क की एक बहुत अच्छी आदत डाल दी उन्होंने कि आप कहाँ भी जाएं, कहीं भी जाएंगे, अगर 5 बजे कॉलेज ख़त्म भी हो गया तो भी मुझे याद है हम बैठे होते थे क्लासरूम्स में या उनके ऑफिस में बैठे होते थे 6 बजे तक, 7 बजे तक, 8 बजे तक, किसी ना किसी उनके प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होते थे, आप जर्नल पे काम कर रहे होते थे. उसने हार्डवर्क की एक ऐसी आदत डाल दी जिससे कि ना केवल UPSC की पढ़ाई में या फिर आने वाली इस IAS की सर्विस में, बल्कि मुझे लगता है आप कहीं पे भी जाएंगे, अगर आप हार्ड वर्किंग हैं, अगर आप डेडिकेटेड हैं, तो आपकी वैल्यू अलग ही होगी. तो अगेन IIMC आपसे हार्ड वर्क करवाएगा. मैं अगेन फिर से यही कहूँगा कि आप पीछे मत हटिएगा, आप अपना 100 नहीं 200% दीजिएगा उसके. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, जो चीज़ मेरे को IIMC ने सबसे ज़्यादा सिखाई वो कुछ कोर्स नॉलेज नहीं थी, वो थी एक ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट. लोगों से कैसे मिलना है, लोगों से कैसे बात करनी है, इंटरव्यूज़ में किस तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करना है, किस तरीके से चलना है, किस तरीके से बैठना है, किस तरीके से हंसना है. एक ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट, क्योंकि मेंस क्लियर करने के बाद जो बहुत लोग नहीं कर पाते वो होता है पर्सनालिटी टेस्ट, जिसको कुछ लोग इंटरव्यू भी कहते हैं, UPSC लेता है. उसमें भी जब आप बात करते हो तो बात किस तरीके से करते हो, क्योंकि जर्नलिज्म के बच्चे होते हैं, उनको P2C सिखाया जाता है, पीस टू कैमरा, कैसे माइक पकड़ करके बोलना है, कब बोलना है, कितना बोलना है. मैं ब्रिजेश जी को देख रहा था, बड़े ही अच्छे तरीके से वो बोलते हैं, एकदम एक सधे हुए पत्रकार की तरह वो एकदम बोलते हैं कि कहाँ पॉज लेना है, किस वर्ड पे कितना स्ट्रेस लेना है. वही कहीं ना कहीं चीज़ है जो कि आपको सीखनी है, क्योंकि ये चीज़ आपको लाइफ लॉन्ग मदद करेगी. और स्पेशली अगर आप किसी भी गवर्नमेंट सर्विस या किसी भी ऐसी सर्विस में जाना चाहते हैं जिसके लिए आपको इंटरव्यूज़ देने पड़े, तो ट्रस्ट मी वो फैक्टर आपका बहुत बहुत मदद करेगा. ओवरऑल
ये IIMC से UPSC की जर्नी एक बहुत ही लर्निंग जर्नी थी, बहुत ही यूज़फुल जर्नी थी, क्योंकि IIMC ने मुझे इस देश की उन प्रॉब्लम्स से अवगत कराया जो कि शायद मेरे को पहले नहीं पता थी। जर्नलिज्म में आप फील्ड पे जाते हो, आप लोगों की समस्याएं समझते हो, आप देखते हो कि देश में क्या कमी है, क्या कमियां रह गई हैं, और कहीं ना कहीं जर्नलिस्ट जो काम करता है वो अपने जर्नलिज्म के थ्रू उन कमियों को, उन प्रॉब्लम्स को उजागर करके उनको सरकार को फोर्स करता है कि वो ठीक करे। इससे ना केवल आपका जो अवेयरनेस है, सिचुएशन और डोमेन अवेयरनेस, वो बढ़ता है, बल्कि कहीं ना कहीं एक जज्बा भी बढ़ता है कि यार हम अपने देश के लिए कुछ ना कुछ कर रहे हैं। मुझे लगता है जर्नलिज्म इज अल्टीमेटली अ मिशन, अ सर्विस टू द सोसाइटी। तो वो चीज़ जो है वो आगे चल करके यूपीएससी में और ओवरऑल सर्विस में मुझे ऐसा लगता है कि मैं जर्नलिज्म के थ्रू नहीं अपने देश की सेवा कर पा रहा, बट जो देश की समस्याएं हैं वो मैं सर्विसेज में आकर के कर रहा हूँ। तो मुझे लगता है कि कभी कहीं ना कहीं जर्नलिस्ट और IAS ऑफिसर्स बहुत गहरा नाता है। आप और हम दोनों ही अपने ही देश को लेकर के चिंतित हैं। आप उसको अलग तरीके से ठीक करना चाह रहे हैं और हम उसको अलग तरीके से ठीक करना चाह रहे हैं। अल्टीमेटली हम अपने देश को आगे लेकर के जाना चाह रहे हैं, जो सबसे बड़ी बात है। तो वो जो चीज़ है आपको जोड़ता है, वो लाइफ, मतलब वो आपको धरातल की कमियों को, धरातल की प्रॉब्लम्स को समझाता है, और वही कहीं ना कहीं एक जज्बा बन जाता है आगे जाकर के, अगर आपको यूपीएससी या इस तरीके की और सर्विसेज में आपको एंटर करना है। तो लास्ट की एक और चीज़ मैं बस यही कहना चाहूँगा कि यहाँ के जो फ्रेंडशिप्स होती हैं, मैं 6-7-8 साल हो गए, मैंने बताया कि मैं काफ़ी टाइम बाद इंस्टीट्यूशन आया हूँ, कॉलेज आया हूँ, बट ऐसा नहीं है कि मैं अपने दोस्तों से नहीं मिलता। हम लोग काफ़ी रिसेंटली मिले भी थे और मिलते रहते हैं 2-4-6 महीने में। शादियों में भी एक दूसरे के जाना आना हुआ है। एंड आई हैव हैड सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल मेमोरीज इन IIMC। आई हैव हैड सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फ्रेंडशिप्स इन IIMC। मेरे बैच के 2 लोग थे एंड दे वर फ्रेंड्स, देन दे वर इनटू अ रिलेशनशिप, एंड जस्ट लास्ट ईयर दे गॉट मैरिड। तो आई हैव सीन फ्रेंडशिप्स कल्मिनेटिंग इनटू ब्यूटीफुल रिलेशनशिप्स, कल्मिनेटिंग इनटू वेरी वेरी गुड मैरिजेस। तो ये एक लाइफ लॉन्ग, मैं बता रहा हूँ जो दोस्त आप यहाँ पे बनाएंगे ना, जो कनेक्शंस आप लोग यहाँ पे बनाएंगे ना, जितने जेन्युइन लोग आपको यहाँ मिलेंगे, मुझे आज तक कहीं और नहीं मिले। वो मेरे साथ हमेशा रहेंगे, उनकी यादें, उनका साथ मेरे साथ हमेशा रहेगा, उनका सपोर्ट मेरे लिए बहुत ज़रूरी है, वो मेरे साथ हमेशा रहेगा। इसी चीज़ को लेकर के मैं आपको एक चीज़ छोटी सी बताना चाहूँगा कि मेरे को फरवरी में एक चार्ज मिला था प्रोजेक्ट डायरेक्टर डेली स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी का, एंड मुझे IIMC ने इतना दिया था, तो मुझे लगा कि इट्स माई टाइम टू गिव समथिंग बैक, और मैंने एक इंटर्नशिप प्रोग्राम स्टार्ट किया है। आप में से कोई भी, जब आपका फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर खत्म हो जाए, आप अगर इंटर्नशिप करना चाहते हैं तो डेली स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी के दरवाजे आप सभी के लिए हमेशा खुले हैं। आप आइए, 1 महीना 2 महीना इंटर्नशिप करिए। मेरे जॉइंट डायरेक्टर IAC यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं उनको साथ में लेकर आया था। गंगेश जी देख लीजिए इन सबको, इनमें से कोई भी आए, मना नहीं करना है, सबको इंटर्नशिप देनी है। ऑलरेडी कुछ बच्चे आ चुके हैं, 10 से 15 लोग ऐसे हैं आपके सीनियर्स जिनको मैंने इंटर्नशिप दी है, सर्टिफिकेट दिए हैं। एंड मुझे बड़ी खुशी होती है जब मेरे कॉलेज से कोई आता है, वो बताता है कि सर आजकल कॉलेज में ऐसा चल रहा है, ये चल रहा है। मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप, मुझे बड़ा अच्छा लगेगा कि आप लोग भी आएंगे, अगर आप में से कोई आएगा तो। और अगेन इट वुड बी अ ग्रेट एक्सपीरियंस। यू हैव एंटर्ड इनटू वन ऑफ द बेस्ट कॉलेजेस इन द कंट्री। आपका आने वाला 1 साल 2 साल, टेक इट फ्रॉम मी, इट इज़ गोइंग टू बी वन ऑफ द बेस्ट ईयर्स ऑफ योर लाइफ। इट विल बी वन ऑफ द मोस्ट मेमोरेबल ईयर्स ऑफ योर लाइफ। आप लाइफ लॉन्ग यहाँ के एक्सपीरियंसेस को याद रखेंगे, और बस यही है कि आप अपना 100% दीजिए, एंड ये कॉलेज आपको अपना 1000% देगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू सम्मक जी। आपने 3-4 चीज़ें बहुत सिंपल बातें बताई हैं, लेकिन बहुत गहरी हैं। जो बातें हम भी क्लास में बताएंगे, हम बताते रहे हैं, लेकिन स्टूडेंट कई बार लगता है कि हम तो BJMC करके आए हैं, हमें सब मालूम है। लेकिन उन्होंने 4 चीज़ें बहुत अच्छी कही हैं: कॉपी राइटिंग, एडिटिंग, हार्ड वर्क, इन्होंने कहा है डेडिकेशन, और बाद में पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ये 3-4 बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। अब आपकी जर्नी शुरू हो रही है। आप कैसे अपना प्लान करते हैं? जो 1 साल 10 महीने में स्टूडेंट जाने वाले हैं, कुछ स्टूडेंट 2 साल यहाँ टिकने वाले हैं पूरे। तो आप अपना एक कैलेंडर बनाइए, सब डिसाइड कीजिए आपको कैसे आगे बढ़ना है।
आपके कुछ सवाल हो सकते हैं जो आप सम्यक जी से पूछना चाहते हैं, तो मुझे लगता है सबसे पहले माइक दे दीजिए, क्योंकि मैं देख रहा था आधी आबादी से कोई सवाल आएगा, कोई आया नहीं अभी। कम से कम शुरुआत तो हो रही है, दीजिए। नमस्कार, मेरा हाँ। नाम अंशिका है, मैं हिंदी पत्रकारिता से हूँ। आज आपका विषय था फ्रॉम IIMC टू UPSC। एक पत्रकार और एक सिविल सर्वेंट के बीच में आज एक चीज़ कॉमन है कि जो गवर्नमेंट का प्रेशर है और जो पब्लिक का प्रेशर है, तो इस प्रेशर के बीच में आप सही डिसीजन मेकिंग कैसे कर रहे हैं और क्या ये आपके डिसीजन को अफेक्ट करता है? और दूसरा ये कि जो आने वाला पत्रकार है उसमें आप क्या खूबी देखना चाहते हैं, क्या क्वालिटी जो आज कहीं ना कहीं वो कमियां हमें दिख रही है, क्योंकि आज एक पत्रकार होना भी अपने आप में चुनौती हो गया है। आज कई सारे नाम हमें दे दिए जाते हैं, तो मुझे लगता है कि उस क्वालिटी को बताइए। आपने क्या नाम बताया अपना? अंशिका। अंशिका, बड़ा ही एनर्जेटिक और काफ़ी एकदम 3-4 सवालों से मतलब भरा हुआ आपका एक सवाल था। तो आपका सबसे पहला ये सवाल था कि प्रेशर में कैसे काम करें। प्रेशर अंशिका हर दौर में, हर ज़माने में, हर जर्नलिस्ट पे, हर ब्यूरोक्रेट पे रहा है। प्रेशर में ही काम करने को काम करना कहते हैं। मुझे लगता है बाकी खाली समय में बैठे हुए तो कोई भी कर देगा, बट टाइट डेडलाइंस में अलग तरीके के प्रेशर्स में काम करने को मुझे लगता है सबसे ज़्यादा जो उसमें ज़रूरी चीज़ है, जो आपको हमेशा ध्यान रखना है, ठंडे दिमाग से काम करना है। जब आपको आपकी स्किल्स पे पूरा भरोसा है, जब आपको आपके नॉलेज पे पूरा भरोसा है, आपकी ट्रेनिंग पे पूरा भरोसा है, और उस वक्त सिर्फ आपको ठंडे दिमाग से काम लेना है, तो चाहे आप जर्नलिस्ट हैं, चाहे आप ब्यूरोक्रेट हैं या कोई भी हैं, आप प्रेशर हैंडल कर लेंगे। एंड अगेन आपने मुझसे दूसरा सवाल यही पूछा था कि आप क्या क्वालिटी देखना चाहेंगे आने वाले जर्नलिस्ट्स में। तो जो क्वालिटी आई थिंक मैं देखना चाहूँगा वो यही होगी कि ठंडे दिमाग से काम करें, थोड़ी सी हिम्मत से काम करें और थोड़ा सा निडरता से काम करें। यही क्वालिटी मेरे ख्याल से हर वक्त, हर ज़माने में, हर दौर में, हर जर्नलिस्ट से एक्सपेक्ट की गई है, और मैं भी शायद आने वाले आपके बैच से या किसी भी जर्नलिस्ट से यही एक्सपेक्ट करता हूँ। एक सवाल हमारा ढेकनाल कैंपस से है सम्यक जी। श्रेया पांडे, MA मीडिया एंड कम्युनिकेशन गवर्नेंस, हमारा नया MA कोर्स अभी शुरू हुआ ढेकनाल से, उससे एक स्टूडेंट है, उनका सवाल है, सर आई वांटेड टू आस्क वेदर इट इज़ रियलिस्टिकली पॉसिबल टू प्रिपेयर फॉर द UPSC एग्जामिनेशन वाइल कीपिंग अप विद द एकेडमिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ द MA प्रोग्राम एट IIMC. Would managing both become too hectic, or would you recommend pursuing them simultaneously? MA के कौन से कोर्स में है वो? MA मीडिया एंड कम्युनिकेशन गवर्नेंस, ये नया मीडिया MA प्रोग्राम एक शुरू हुआ है इस बार। सो मैं बताना चाहूँगा कि डेफिनेटली इट इज़ पॉसिबल टू डू इट अलॉन्ग विद एकेडमिक्स, चाहे MA के कोई भी कोर्स हो। इसलिए मैंने पूछा कि कौन सा कोर्स है, बट इन रिगार्डलेस आपका कोई सा भी कोर्स है, आप जर्नलिज्म के उस या मास कम्युनिकेशन के कॉलेज में हैं, मैं फिर से ब्रिजेश जी से थोड़ा सा डिफर करना चाहूँगा कि आप अखबार ज़रूर पढ़िए, है ना। अगर आप अखबार पढ़ रहे हैं, चाहे आप फिजिकल कॉपी ना पढ़ें, बट अगर आप सब्सक्रिप्शन लेकर के कॉपी भी पढ़ रहे हैं तो भी वो सफिशेंट है। बट मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि IIMC की जब मैं तैयारी कर रहा था यहाँ पे एंट्रेंस के लिए, तब मैंने अखबार पढ़ना शुरू किया था, और उस दिन से लेकर के पूरा UPSC का जर्नी हो गया, पूरा ये हो गया, 4 साल हो गए आज सुबह तक भी मैं अखबार पढ़ता हूँ, और मैं रोज़ अखबार पढ़ता हूँ। तो वो एक चीज़ है जिसको आपको साथ में लेकर के चलना है। जो रिटर्न वर्ड है, अगेन उसकी वैल्यू ज़्यादा है, मतलब उसकी वैल्यू भी है, और मेरे हिसाब से अगर आप इसको तैयारी के साथ करेंगे तो एक सब्सटैंशियल ओवरलैप है आपके इस वाले करिकुलम में, और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे UPSC है उसकी जो रिक्वायरमेंट है उसमें भी एक सब्सटैंशियल ओवरलैप है। मुझे लगता है कि साथ में बड़े अच्छे से हो सकता है, कोशिश करने में तो कोई हर्ज नहीं है। यस जी नमस्कार सर, मैं अभिषेक कुमार और मेरा कोर्स है MA मीडिया बिजनेस स्टडीज़। सर मेरा भी सवाल इसी से मिलता जुलता है, लेकिन उससे पहले मुझे लगा मेरा ही टॉपिक पे आपने आज पूरा चर्चा ही रख दिया, IIMC टू UPSC। इससे पहले इस कोर्स यहाँ इनरोल होने से पहले मैं UPSC का बैच लिया, लेकिन फिर यहाँ एडमिशन हो गया तो कहीं ना कहीं मेरा माइंड डाइवर्ट IIMC की तरफ ज़्यादा हो गया। अब मेरे पास एक प्रश्न ये उठता है मेरे मन में कि आखिर IIMC के साथ UPSC को कैसे लेकर चलें। हालांकि आपने बातें बहुत सी बताई और वो सारी मेरे मन को संतुष्ट करती है, लेकिन फिर भी लगता है कि कहीं UPSC की प्रिपरेशन में IIMC का एक तरह से
प्रेशर जो मैनेज हो पाएगा कैसे करे वो मतलब मन में रह जाता है। कहीं आईएमसी में उतना बेहतर कर पाऊंगा कि नहीं, अगर यूपीएससी की तरफ रिलाई करूँ तो, अगर यूपीएससी करूँ तो फिर आईएमसी रन छूट जाए, तो ये माइंड में दुविधा रहता है सर, इसे बताइए। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मयंक नाम है आपका? अभिषेक कुमार। अभिषेक जी बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि आप आईआईएमसी के लिए भी हैं तो रोज़ अखबार पढ़ना ही पढ़ना है। एक गुड इंग्लिश मीडियम का अखबार, अगर आप इंग्लिश मीडियम से अपीयर करना चाहते हैं, अगर आप हिंदी मीडियम से अपीयर करना चाहते हैं तो एक गुड हिंदी मीडियम का अखबार। साथ ही साथ आप न्यूज़ चैनल्स और न्यूज़ तो देख ही रहे हैं, कंज्यूम कर ही रहे हैं, तो मुझे लगता है कि उससे आपकी जो करंट अफेयर्स की नॉलेज है वो तो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सब्सटैंशियली एनहांस हो गई है। उसके साथ साथ बस आपको अपनी स्टैटिक पे काम करना है। तो अगर आप दिन के 5 से 6 घंटे अगर दे पा रहे हैं कॉलेज के बाद या कॉलेज से पहले यूपीएससी या किसी भी इस तरीके के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, तो वो बहुत अच्छा होगा। नहीं तो आप वीकेंड्स पे 8-8, 10-10 घंटे अगर आप दे सकते हैं तो आप वीकेंड्स पे तैयारी करिए कि दिन में रोज़ 2-3 घंटे तैयारी कर गई, बाकी का जो गैप है वो मैंने वीकेंड्स पे कवर कर गया। मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कॉलेज पे भी पूरा ध्यान दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा तो आपका यूपीएससी का भी प्रिपरेशन हो रहा है। और इसी के साथ साथ अगर आप कॉलेज का भी सिर्फ काम करते रहेंगे तो भी मुझे लगता है कि 2 साल बाद ऐसा नहीं है कि आप जहां आज हैं वहीं पे खड़े होंगे, उससे बेहतर स्थिति में होंगे। 6 महीने या 1 साल की और प्रिपरेशन के बाद भी आप यूपीएससी क्रैक करने के ज़्यादा करीब होंगे। तो अगेन आप इसको ये मत समझिए कि दोनों में कहीं ओवरलैप नहीं है, इंटरलिंकिंग नहीं है, दोनों में बहुत सब्सटैंशियल ओवरलैप है। बस आपको ये देखना है कि आप दिन के 5 से 6 घंटे अगर आप कॉलेज के बाद इसको दे सकते हैं, वरना वीकेंड्स पे 8 से 10 घंटे अगर आप इसको दे सकते हैं तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं। करंट अफेयर्स आपका ऑलरेडी हो गया है, बस स्टैटिक पे ध्यान देना है। हेलो। यस। हाँ, नमस्ते सर। Sir, I'm Sayukta Karan and I'm from newly launched course, Masters in Health Communication. So I belong, and you're from Health Department only. So my question is from, so actually communication challenges क्या आते हैं? Like people are aware about HIV and AIDS. Being a government officials, what communication challenges you face? Behavioral changes कैसे लोगों में लाया जा सकता है? And आप लोग communication challenges platform कौन-कौन से use करते हैं? So this is my question regarding this. ओके, दैट्स अ वेरी डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन, बट अच्छा क्वेश्चन है ये भी। बिकॉज क्योंकि अभी गवर्नमेंट कम्युनिकेशन में, पब्लिक कम्युनिकेशन में स्टेट एड्स कंट्रोल सोसाइटी देख रहा हूँ, एड्स से रिलेटेड काफ़ी कम्युनिकेशन हमको करना पड़ता है। और जैसा कि आप समझते हैं कि ये टॉपिक थोड़ा ऐसा है कि जिसमें स्टिग्मा अटैच्ड है सोसाइटी में, तो हम कोशिश करते हैं कि उन जगहों पे उन तरीक़ों से या उस शैली में बात करें जिस शैली में लोग समझते हैं। कम्युनिकेशन इज़ मी कमिंग डाउन टू योर लेवल। मैं आपको वो अपनी बात आपके शब्दों में अगर समझा सकता हूँ, वही कम्युनिकेशन है। अगर मेरी बात आप समझ पा रहे हैं तो कम्युनिकेशन है। अगर मुझे आपको अपनी बात समझानी है तो कहीं ना कहीं मुझे आपके लेवल पर उतर के बात करनी होगी। तो जिस तरीके से मीडियम्स हैं, तो मीडियम्स भी वही हो जाएंगे जहाँ पे लोग मिलते हैं। चाहे सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की अगर मैं बात करूँ तो सोशल मीडिया में वही फेसबुक, इंस्टाग्राम और इस तरीके के, और क्योंकि एड्स से रिलेटेड है तो कुछ ये अपने डेटिंग प्लेटफॉर्म्स वगैरह पे भी हमारे PR वगैरह चलता है, यूट्यूब पे चलता है। और हम इन्हीं प्लेटफॉर्म्स पे, क्योंकि मैं अगर कोई नया प्लेटफॉर्म बनाऊँ और वहाँ से लोगों पे कम्युनिकेट करने की कोशिश करूँ तो वो नहीं हो पाएगा, क्योंकि मुझे ऑडियंस चाहिए। जहाँ ऑडियंस है मुझे अल्टीमेटली वहीं पे जाना पड़ेगा। तो येस, स्टिग्मा अटैच्ड है कम्युनिकेशन के लिए। मुझे लोगों से रिलेटेड, लोगों की भाषा में बात करनी पड़ती है। अगर बच्चे हैं तो उनके लिए हम कॉमिक बुक्स और कॉमिक स्ट्रिप्स की तैयारी करते हैं। अगर बड़े हैं तो उनके लिए हम कुछ और IAC मटेरियल्स हमने बना रखे हैं। पोस्टर्स हो गए, नुक्कड़ नाटक हो गए, शॉर्ट फिल्म्स हो गई। इस तरीके से हम उनसे पहुंचने की, कम्युनिकेट करने की कोशिश करते हैं। आजकल ये जेनजी जनरेशन जो आ रही है या जो इंस्टाग्राम जनरेशन आ गई है, इनके लिए हमने एक सोशल मीडिया एजेंसी हायर करके हम उनसे रील्स बनवा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का अटेंशन स्पैन 30 सेकेंड्स है। तो 30 सेकेंड्स में हम अपनी बात कैसे कह सकते हैं, उसके लिए हम तैयारी कर रहे हैं, हम रील्स बना रहे हैं और इंस्टाग्राम वगैरह पे डाल रहे हैं। तो अगेन I have to come down to your level to make you understand what I'm trying to say, and that is the essence, core essence of communication. Yes. Thank you for your valuable time and great guidance, sir. Sir, my question is, I'm Suraj Mishra from English Journalism Department. My question is something different from realistic. It may sound full of illusion because as you have cracked both IIMC and UPSC, so my question is related to UPSC. If you could advise your younger self, knowing that one day you would be an IAS officer, what would be that advice and how that advice would not compromise the academic commitments of an IIMCN student? मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप UPSC की तैयारी करने बैठते हो ना,
तो ऐसा आपके मन में कुछ नहीं रह जाना चाहिए कि यार ये और कर गया था, या फिर यार मेरे दोस्त बाहर क्रिकेट खेल रहे हैं, मेरे को भी क्रिकेट खेलना है, यार मुझे वहाँ घूमने जाना है, मुझे ये करना है, वो करना है, ये सब नहीं। तो वो सब करने से पहले, यूपीएससी की तैयारी स्टार्ट करने से पहले अगर आपके मन में ऐसी कोई इच्छा है तो जाकर के वो सारी चीज़ें कर लीजिए जो कि आपको अभी करनी है। घूमना है, फिरना है, दोस्तों के साथ हैंग आउट करना है, क्रिकेट खेलना है, या कुछ भी खेलना है, खेल कूद करना है, या कोई भी और इच्छा है। जब इन सब से आपका मन भर जाए तब आइएगा। और इसलिए मैं अपने यंगर सेल्फ से यही कहना चाहूँगा कि डू नथिंग डिफरेंट, डू एवरीथिंग दैट यू वांटेड टू डू एवरीथिंग जस्ट लाइक यू डिड इट। बिकॉज जब तक मैं फिर पढ़ाई की तरफ, यूपीएससी की तैयारी की तरफ गया, तब तक मुझे था कि यार मुझे अब मेरा बाकी सारी चीज़ों से मन भर चुका है, अब मुझे इसी तरफ फोकस करना है। इस वजह से ही शायद सेकेंड अटेम्प्ट में मैं कर पाया, क्योंकि मेरा और कहीं डिस्ट्रैक्शन नहीं था। तो अगेन माई एडवाइस टू ऑल ऑफ यू इंक्लूडिंग माई यंगर सेल्फ is to do as much, do everything that you wanted to do before you start preparation. सर मेरा नाम रोहित है और मैं हरियाणा के रोहतक से आता हूं, और मैं आप दोनों का स्वागत करता हूं आईएमसी में। कौन से कोर्स से हैं आप? ईजे से। ईजे? मैं थोड़ा सा घबरा रहा हूं क्योंकि पहली बार बोल रहा हूं ऐसे। हाँ बताइए बताइए। तो मेरा सवाल ये है कि सर मैं जब टीवी चलाता हूं तो मुझे बड़े बड़े जो मीडिया हाउसेज हैं वो दिखाई देते हैं, उनकी न्यूज़ बिल्कुल ही अलग दिखाई देती हैं। और जब मैं फ़ोन चलाता हूँ तब मुझे कुछ और रियलिटी दिखाई देती है। कंटेंट सेम है, मतलब सेम है, वो भी न्यूज़ हैं, वो भी न्यूज़ हैं। जो बड़े बड़े मीडिया हाउसेज हैं उनके पास काफ़ी पैसा है, इतना मतलब बहुत जान पहचान है और बहुत ज़्यादा पैसा है। जो छोटे कंटेंट क्रिएटर्स हैं जो सच्चाई दिखा रहे हैं, जो ट्रुथ दिखा रहे हैं, और जो कंट्री की जो असली कंडीशंस हो चुकी हैं वो दिखा रहे हैं, उनके पास इतना पैसा नहीं है, उतनी पहचान नहीं है। तो मैं अपकमिंग जर्नलिस्ट होने के नाते मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप इस सिचुएशन को कैसे देखते हैं कि जब मैं टीवी चला रहा हूँ तब तो मुझे झालमुड़ी और मेलोडी दिखाई दे रही है, और जब मैं फ़ोन चला रहा हूँ तो मुझे सच्चाई दिखाई दे रही है, जंतर मंतर दिखाई दे रहा है, और वो जंतर मंतर एकदम से गायब हो जा रहा है जब टीवी चल रहा है। तो आप इस पूरे सिनेरियो को कैसे देखते हैं, मतलब कि आप कैसे देखते हैं? ये सवाल आपने मुझसे पूछा है, ब्रजेश जी से पूछा है? ये भी बता दीजिए। चलिए, चूंकि आपने सर ब्रिजेश सर से ही पूछा है। कोई बात नहीं, क्योंकि आपने इसमें दोनों अलग अलग सिचुएशन का जिक्र किया। एक आपने, आप टीवी डेली कितने घंटे देखते हैं? छोड़ दिया ना? तो आप ये बताइए कि आपने देखना कब छोड़ा? तो एक चीज बताइए, जिस घटना का आपने जिक्र किया वो 1 साल के अंदर किया, तो आपने टीवी पे कैसे देख लिया? उसको भी आपने सोशल पे ही कंज्यूम किया, ऑफ प्लेटफॉर्म पे कंज्यूम किया। देखिए, ये कहना बड़ा आसान है कि हम टीवी पे सिर्फ यही करते हैं। आज का दिन मैं आपको बता सकता हूँ, चूंकि किसी भी दूसरा आप अपने दिमाग से ये भी निकाल दीजिए कि मीडिया संस्थान बहुत फ़ायदे का सौदा है। आप लोग चूँकि एस्पायर अगर कर रहे हैं, अगर आप इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर के तौर पर अगर फंक्शन आप नहीं करना चाहते हैं, किसी संस्थान का हिस्सा बनना चाहते हैं, इस बात का ध्यान रखें कि रेवेन्यू पैटर्न्स तेज़ी से चेंज हो रहे हैं। ज़्यादातर मीडिया हाउस जिस देश में लॉस मेकिंग प्रीपोजिशन है, प्रॉफिट मेकिंग प्रीपोजिशन नहीं है, घाटे में चल रहे हैं। और उसका कारण ये है कि किसी भी मीडिया हाउस का करीब करीब 50 से 55% एक्सपेंस जो है वो मैन पावर का है। जो आप हम जैसे लोग जो वहाँ काम करते हैं, उनकी सैलरी पर उस कंपनी के 50 से 55% पैसे खर्च होते हैं। दूसरा, चूंकि आपने मान लीजिए किसी रीजनल चैनल में आप काम कर रहे हो, किसी नेशनल चैनल में आप काम कर रहे हो, आपने देखा है कि एडवर्टाइजर्स कौन है? किसी रीजनल चैनल पे देखिए, आप कहते हैं ना कि कई लोगों का ये भी परसेप्शन होता है कि अगर आप पूरे टाइम विज्ञापन ही चलते रहता है। मैं आपको बता सकता हूँ कि ज़्यादातर राज्यों में, आप डाउन साउथ के कुछ राज्य अगर आप छोड़ दें, घंटे भर के न्यूज़ साइकिल में, चूँकि मैं आधे घंटे के तो वैसे बुलेटिन होते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि 10 से 11 देख लीजिए,
आप जो है मुश्किल से आपको 5-7 मिनट के विज्ञापन मिलेंगे। ज़्यादातर रीजनल चैनल्स की हालत है, तो पहले ही तो भ्रांति दिमाग से निकाल दीजिए कि बहुत फ़ायदे का सौदा है और बहुत ज़्यादा पैसा है। अगर जो है कुछ जगह पर, अगर कुछ ज़्यादातर राज्यों में, खासतौर पे आप जिस हरियाणा से आते हैं, आपके हरियाणा में कोई रिटेल मार्केट ही नहीं है। आपके पंजाब हरियाणा के जो चैनल हैं, आप देखिए हरियाणा में कितने चैनल चलते हैं, चूँकि कोई धंधा ही नहीं है इसलिए चलते ही नहीं है, बंद हो जाते हैं। जहाँ तक कंटेंट का सवाल है, आपने अच्छा कहा, 2 शब्द आपने इस्तेमाल किए कि भाई टीवी पर यही चलता है। हमारे इस हॉल में बैठे हुए ज़्यादातर लोग उस पर हंसे, लेकिन अगर आप किसी भी दिन अगर 18 घंटे का जो न्यूज़ साइकिल है, अगर आप उसको ध्यान से देखेंगे, आप उन मस्खरों की बात पर मत जाइए जो कि अपने किसी पर्टिकुलर एजेंडा के तहत जो है सो चीज़ों को पोर्ट्राई करते हैं। क्या जो है सो इस देश में अगर बाढ़ है, क्या हम बाढ़ की जगह कुछ और दिखा रहे होते हैं? क्या अगर इस देश में अगर कोई मेजर नेचुरल डिजास्टर हो गया, मान लीजिए कोई मेजर अचीवमेंट हो गई, क्या वो टीवी के पर्दे पे नहीं होती? क्या उस अखबार की हेडलाइन नहीं होती? मेरे ख्याल से यह डिबेट बड़ी लंबी चौड़ी है और बहुत समय से रही है कि आखिर कंटेंट क्या होना चाहिए। आपने अभी कहा कि मैं मोबाइल पे देखता हूँ तो मुझे एक पूरी अलग दुनिया दिखती है। आप जो इंस्टा पे जो रील्स देखते हैं, 90% टाइम आप जिसमें कंज्यूम करते हैं, क्या आप अपने सीने पे हाथ रख के कह सकते हैं कि उससे आपका ज्ञानवर्धन होता है? आप उससे बैठ के मजे ले सकते हैं, आप टाइम पास कर सकते हैं, लेकिन बहुत वैल्यू एडेड कंटेंट आप उस पर भी एक हाईली ओपिनियटेड कंटेंट है। दूसरा, इस बात का ध्यान रखिए कि दुनिया जो है सो ओपिनियन के मामले में काफ़ी पोलराइज्ड है और ये कोई भारत का फिनोमिना नहीं है। आप यूएस को देखिए, यूएस के अंदर जो है पोलराइजेशन किस लेवल पर है। आप एक एक कंट्री जिसको दुनिया में आप आदर्श मानते हैं उनको देखिए, तो वो जो है आप जो है एक पोलराइज्ड एनवायरनमेंट के अंदर आप शार्प डिफरेंस ऑफ ओपिनियन देख सकते हैं। और मुझे लगता है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए ये सबसे हेल्दी चीज है जिसमें कि हर किस्म का विचार रखने की आपको आज़ादी है। तो इसलिए मैं इसे इंडियन डेमोक्रेसी की खूबसूरती मानता हूं। दूसरा, ये 150 करोड़ के देश में सारी चीजें अगर बुनियादी तौर पे ठीक ठाक चल रही हैं, जिसमें कि आपकी हमारी पृष्ठभूमि से आए हुए लोग भी इन प्लेटफॉर्म्स तक पहुंच सकते हैं, तो इस इंडियन डेमोक्रेसी की खासियत है। आप इसको सेंसिबली देखिए, आपको लगेगा कि आपकी अचीवमेंट्स, आप अपने पिता से बात करिएगा, उनके ज़माने में अगर गांव में रहे होंगे किस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल था। जहां से हमने जर्नी शुरू की हम बहुत आगे तक गए हैं। आप अपने को डिमीन करना छोड़िए, अगर थोड़ी सी सकारात्मक चीज़ें देखिएगा, बहुत आसान होता है। आप समझ जी जिस सर्विस में हैं, बहुत हम आसानी से जो है ब्यूरोक्रेसी का मजाक उड़ा देते हैं, हम तुरंत करप्शन की बात कर देते हैं, लेकिन आप उस आयरन स्ट्रक्चर को देखिए। 150 करोड़ का देश अगर कहीं भी मैनेज करना हो, और मैं उन देशों की बात नहीं कर रहा हूं जहां पर कि कोई डेमोक्रेसी नहीं है, बहुत लोगों को बगल का एग्जाम्पल बहुत सूट करता है आइडियोलॉजिकल स्टांस के हिसाब से भी, लेकिन आपको याद होगा ताइनामान स्क्वायर पर क्या हुआ था। वहां पर जो है कोई फ्री स्पीच नहीं है, इतनी सारी फ्रीडम के साथ जिसमें कि आप जिसको चाहें उसे गालियां दे सकते हैं। उसके बाद भी अगर आपने इतनी अचीवमेंट हासिल की है, अगर इतने आगे तक चले हैं इस डाइवर्स सोसाइटी को लेकर, जिसमें कि लैंग्वेज के आधार पर, कास्ट एंड कम्युनिटी के आधार पर इतने सारे सोशियो इकोनॉमिक बैकग्राउंड के डिफरेंस हैं, उसमें अगर आप आ रहे हैं तो एक अच्छी चीज़ है। और उसमें जो है मुझे लगता है बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप जो कंज्यूम करना चाहते हैं, आपकी चॉइस है, आप कंज्यूम करिए। मुझे लगता है कि आप जिस कंटेंट से एग्री नहीं करते होंगे उसको कोई हो सकता है पसंद कर रहा हो, आप उसकी पसंद को क्यों कर्टेल करना चाहते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो लोग भी इस नैरेटिव को चलाते हैं कि साहब मीडिया एक पर्टिकुलर तरह की चीज़ जो है सो प्रोड्यूस कर रहा है, उनके अपने इरादे क्या हैं, उनका अपने स्टांस क्या है, कभी आप उनके हैंडल को तो देखिए, देन जो है सो आप एक फाइन बैलेंस जो है अचीव कर पाएंगे। मेरी एक छोटी सी सलाह यही आपको। धन्यवाद। इस सेशन का एक लास्ट सवाल ढेकनाल कैंपस से है, एमए कॉरपोरेट कम्युनिकेशन एंड ब्रांड मैनेजमेंट से। सवाल सम्यक जैन जी से है। सर, यू सेड IIMC डेवलप्स द होल पर्सनैलिटी। व्हाट वाज योर एक्सपीरियंस बियॉन्ड द क्लासरूम दैट चेंज्ड यू? जब मैं यहाँ आया था तो मैं बताना चाहूँगा, जो मेरा ग्रेजुएशन था वो स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग से था, तो मैं कभी एक्चुअल कॉलेज मैंने नहीं देखा था, और उस वजह से मैं थोड़ा सा शाय कह लीजिए, थोड़ा सा डरपोक कह लीजिए, मैं वो था। मैं किसी के भी ऑफिस में जाने से, उनसे बात करने से भी थोड़ा सा डरता था। बियॉन्ड द क्लासरूम्स IIMC ने मुझे ये कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ दी कि मैं जाऊँ, चाहे एडिटर्स हो गए डिफरेंट मीडिया हाउसेस में, उनसे बात करूं, डिफरेंट प्लेसेस पे बैठे कई सारे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में भी लोग बैठे थे, उनसे बात करूं, किसी ऑफिस में इंटर्नशिप करूं, कुछ लोगों से मिलूं।
उनसे मिला, उनसे बात करी, उनसे जब मैंने बताया कि मैं IIMC से हूँ, सबसे पहले तो एक इज्जत की नज़र से देखते हैं कि हाँ आप एक अच्छे कॉलेज से आते हैं, और उसके बाद उनसे सीखने को जो मिला वो कहीं ना कहीं मेरे को ओवरऑल पर्सनालिटी डेवलपमेंट में बड़ा मदद किया। यहाँ के भी इनफैक्ट जो यहाँ की फैकल्टी थी, जो यहाँ के प्रोफेसर्स थे, they took me in, they saw potential in me, some potential probably which I did not see in myself at that point of time. They saw in me, they praised me. उनकी जो हौसला अफजाई जिसको कहेंगे वो जो थी, उसने सही में मेरे मोटिवेशन को बढ़ाया, और कहीं ना कहीं मेरे को ये कहा कि हाँ यार मैं भी लाइफ में कुछ कर सकता हूँ, मैं भी कहीं लाइफ में आगे चल करके कुछ बन सकता हूँ। तो उस तरीके से जो यहाँ का पूरा एनवायरनमेंट है और जिस तरीके से यहाँ पे आपको एक्सपोजर मिलता है अपॉर्चुनिटीज़ को, वो कुल मिलाकर के आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट में एक होलसम चेंज लाने का काम करते हैं। थैंक यू। इसके साथ हम ये सेशन कंप्लीट कर रहे हैं। सम्यक जी और ब्रजेश जी का बहुत बहुत धन्यवाद। सम्यक जी ने ऑफ़र किया है कि स्टूडेंट्स इंटर्नशिप के लिए अप्रोच कर सकते हैं, और मुझे लगता है ये तो आश्वासन मैं भी दे सकता हूँ ब्रजेश जी की ओर से कि इंटर्नशिप के लिए आप संपर्क करेंगे तो आपको ज़रूर अवसर मिलेगा। मुझे लगता है ये बातचीत हमारी बाद में जारी रहेगी, और ब्रजेश जी से और सम्यक जी से बातचीत करने का हमारे स्टूडेंट्स को बाद में भी मौका मिलेगा। बाद में कुछ अलग से कुछ स्पेशल सेशंस के लिए हम उन्हें बुलाएंगे। आपने समय निकाला IIMC के लिए, IIMC स्टूडेंट्स के लिए, अपने जूनियर्स के लिए, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे संकाय सदस्य भी यहाँ पर उपस्थित हैं, मैं वहाँ से शुरू करता हूँ। राकेश उपाध्याय जी बैठे हैं, राकेश गोस्वामी जी हैं, पवन कुंडल जी हैं, सुरभि दहिया जी हैं, संगीता पणवेंद्र जी हैं, मीता जी हैं, आकांक्षा जी हैं, बीनम जी हैं, दीपा जी, अब लंबी लिस्ट हो गई, कुछ नाम मैं जानता नहीं हूँ, इसलिए सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी 10 मिनट का ब्रेक है। नेक्स्ट सेशन हमारा 3:40 पर शुरू होगा। उसके हमारे स्पीकर्स इस हॉल में आ गए हैं। आप 10 मिनट के अंदर बाहर जरा हवा खा के तुरंत आ सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।
A very good afternoon. You are requested to be seated. All of you, please settle down. We are going to start the session in a few more minutes. I would request again all the students to maintain the decorum. जो छात्र पीछे बैठे हैं वो आगे आ जाएं। हाँ हाँ आ जाइए, जो बैग उठा रहे थे अभी। और स्पेशल इनवाइटीज जो बाकी लोग पीछे हैं, उन स्पेशल इनवाइटीज से भी रिक्वेस्ट करूंगी आगे आ जाइए। And before we start the session, one more request to kindly either switch off your phones or put them on silence mode. So within 3 more minutes, we are going to start the session. I hope during the previous sessions, all of you not only enjoy it, but also learn something. So are there any takeaways to be with you? Anyone? हाँ जी, कुछ सीखा पिछले सेशंस में? हाँ, ये बुलंद आवाज बता दो क्या सीखा? हाँ जी, ठीक है। बस ये बकेट खाली पूरी ना भर जाए, ये भी ध्यान रखना है हमें। हालांकि उसमें बेस में छेद भी नहीं होना चाहिए कि सब नीचे जा रहा है, तो दोनों चीज़ बड़ी जिम्मेदारी। All right, so welcome again to the session. We have today with us Ms. Ridhima Kaul, National Health Editor, Hindustan Times. I would request Ms. Ridhima to kindly be on stage. And we also have Dr. Vimal Mohan, Senior Sports Editor, NDTV India. I would request you, sir, to kindly take the stage. So in this session, since in the morning session, we were referring to, the media and market mapping. So we were talking about the opportunities, that you have ample of opportunities, and it is our duty to match those opportunities in the, not only potential avenues, but also the reality. So we are working on that reality. We identify that health and, because again, when we say entertainment, sports become one major component of that entertainment. So in this session, we are going to discuss what opportunities you all have
towards those avenues. So we welcome you, the eminent guests are here, and I would request Professor Goswami to kindly felicitate our guests today. I request Tanisha to Thank you so much, Professor Goswami. So, in the previous session, you might have heard about, there was a reference of 1982 Asiad Games, and, how it had been brought into the entertainment sector to also, to aware people. And it is also so true about health communication or health journalism. We see the basic challenges remain there, because I think Ridhima would also be agreeing to it, that either it is stigmatized or tabooed most of the time. So looking into those challenges, we know that it is, though it is one important sector where we see the avenues, but also challenges lie there. तो उसको कैसे आप एंटरटेनमेंट में ढालेंगे? और अगर हम इतिहास की बात करें, it is very interesting that in 1965 IIMC got its foundation with the Family Health Project in research. So we started that project here, and we all know that how Bunyad, the TV series, was connected with, again, the health project of family planning. So, this is how we actually not only identify the need, but also how to cater that need becomes important. So I would not be taking much time, because we would be meeting again and again, in fact, every day in the classroom. So today we are here to listen to our esteemed guest. So I would request Ms. Ridhima Kaul to come to the dais, but before that, let me introduce her formally to the audiences. Ridhima Kaul is the National Health Editor of the Hindustan Times. She has over 25 years of journalistic experience. She joined the Hindustan Times in 2008 and has since covered everything from pandemics and infectious diseases to cutting-edge medical research and climate-related health challenges. And we all know after COVID, how important that field has become. Also, we are living climate change today. We are not only, facing the challenge, but we are living that challenge. So looking into that, I think she has one prominent figure today in those sessions. So one of our prominent news breaks has been the 2012 Baby Falak case. I do not know how many of you remember it, but that was, that was so shaky we can, still, recall. So a 2-year-old brutally battered baby girl was admitted to AIIMS Delhi with severe head injuries, multiple fractures, human bite marks and burns. So, what I feel that a health journalist, does not only have a challenge of, delivering the communication or the information to the people, but it becomes traumatized to the health journalist himself or herself. So that is,
another area which you have to remember if you're going for health communication or journalism. So interestingly and importantly, Ridhima was profiled by the Wall Street Journal for breaking that story. So she holds a master's degree from JNU prior to HT, and she worked with the India Today group as well. So we welcome you, Ridhima, here, and we are eager to listen to you. I hope I'm audible enough. Good afternoon to everyone. And first of all, let me just congratulate and thank you for inviting me here, and congratulate you all, because the journey that you guys are going to embark on or already have embarked on, I can say for sure it's going to be so exciting, so fun, thrilling, adventurous, everything that you can imagine. Not a single boring day. It cannot be a boring journey. Journalism, communications as a whole is a it's a roller coaster ride in every sense of the word. So welcome you all on the ride. So I have a lot of it has already been mentioned about me, what I have done, but a little nugget why this place feels special, because I have done my post-grad from JNU. So half the time we used to be either on IIMC campus, or we had friends here who would be over on JNU campus. So this place has always been very special. A lot of masti, a lot of adda, as we used to call around that time. Now, talking about the topic that has been assigned to me, which is opportunities in health communication. First of all, I would like to talk about the fact that you don't have to get bogged down by the term health and communication, because health it's a niche segment for sure, and it's when you talk about and you don't have to get bogged down because it is technical. You cannot help it. Health and science, they kind of overlap. So obviously they are very technical, and lots of jargons, lot of medical terminologies which you will encounter if you are really getting to find expertise in that domain. So that is one first thing, because I haven't had a formal training in science. Last time I studied science was in class 12. After that, it was more of literature and everything else, not science. So no, if you have aptitude for it, a lot of people do ask me, do we need a science background? Do we need to have probably a BSc, or not MBBS for sure, but anything related to science in graduation or postgrad? But that's not true. You just need to have an aptitude for things that are medical in nature. To also, when we talk about writing, I would say the first thing comes domain knowledge, because for me, it was not my primary subject, science. So I had to master it. So how do we do it? Read. One thing I would say is reading. There's no shortcut to reading. You have to read voraciously. Whatever medical journals are there, whatever, because I'm specifically talking about health communications, and that's the area I'm dealing with. So that is how and events, workshops, wherever you can lay your hands on, if they are happening around you, you must participate. That is how you enhance your knowledge base. That is how you hone your skills. There's no shortcut to that. Then I come from reporting background. My background is actually reporting. Editor I became like 5 years back, but before that I had done a lot of reporting. So there is no shortcut to shoe leather reporting, I would say. You have to be out, you have to meet people, boots on ground, as we say in our parlance, journalistic parlance. Times have changed. The flow of information is such that you get bogged down, because back in the day, I have seen COVID was pandemic 5 years ago, but I have also seen H1N1, which used to be called swine flu in 2008. Trust me, the difference between 2008 and 2019-20 has been tremendous, because we didn't have Twitter back then, we didn't have Facebook or WhatsApp back then, we didn't have so many digital platforms that we have now, which has made life convenient as well as challenging for us.
But that has helped also. And now, if anything, we are seeing artificial intelligence also taking over gradually. So we have GPTs and perplexities and God knows what all. So somehow I feel I might get redundant in some days. So we have to kind of reinvent ourselves. So reinvention is very important, again, I would say. And how do we do that? It has to be, the more skills you acquire, the better it is. You cannot escape technology. You cannot escape what's happening around you. That is one thing I have taken away from me, with me over the years. What I see, what is something that is strange to you, something that you don't understand, you tend to have resentment towards it. But trust me, when you befriend that, when you make it a part, because eventually it is going to be part of your lives. So you realize that life does become simpler. It actually becomes better, and you know how to use those tools better, which you will. I'm sure you are a generation much ahead of mine, so you will definitely know how to do it. I don't have to teach anyone how to use technology. We all know how to do it. Another thing that is important that I would want after reading, it's language. So back in the day, I had a great mentor. So she would always say that we have to write news which people can use. So when we are talking about news which people can use, when we are talking about people, we are talking about masses. We are not talking about doctors. We are not talking about scientists. So masses have to understand what you're trying to communicate. Essentially, when you're becoming health communicators, it is what you have lots of information at your disposal. So what you have to do is you have to transfer that knowledge, transfer that information amongst people. So that is masses. So they have to understand what you're trying to communicate. That is the sole key responsibility of a successful communicator, health and science, both. Because as I said, it is a technical and niche segment. So you have, what I used to personally do, if I have to pick an example from my journey so far, I used to go to doctors, sit with them, help them, they would help me understand. I would like literally chew their brains, and I would like, please help me understand, what did you do? If it's a surgery, how did you do it? Can you please explain it to me step by step? Because if my concepts are clear, only then will I be able to make other people understand what I'm saying. And forget about people. Before it reaches the masses, there are a lot of people sitting on your desk. That's how I am from a newspaper. So there are a lot of people on your desk who, again, are not trained in medical journalism or anything related to medicine. So what do you have to do? You have to make them also understand that why is it important? Why are we taking it? Ma'am just said that it's stigma associated with healthcare. But, more than healthcare, stigma, I would say, the biggest challenge for a health communicator is to make diseases sound interesting. How do you do that? I mean, not many people want to read about diseases. How many would be? I mean, you go back home and tell your parents or grandparents or extended family, oh, ye bimari ke bare mein likha, us bimari ke bare mein, this new thing has come. Not many people are open to hearing about. So how do you make it interesting for them? So you make it relatable. How do you do that? You look for faces. So if there is a case study that you can use to tell your story, that makes it interesting. That makes it very interesting. I have noticed people don't want to listen what Ridhima is saying. But if there is a person who has suffered or experienced some disease, for example, if there is a COVID pandemic that recently happened, so if you take an example from a patient who suffered and experienced it, and if I haven't experienced it yet, so I would really be interested in knowing what happened to you. How did you deal with it? How did you manage? What were the side effects? What were the complications, if at all? So you went to hospital. What were the medicines you used? How did that help? So if you put a face there, it always ensures that you have a good ear listening what you have to say. Then another important thing that I personally feel is sourcing, which is correct sourcing. If you're using information, obviously we're not primary people, we get information from others. Now if I tell you I go and meet people in the health ministry, so they give me information. So that is my primary source of information. So it is coming from a reliable source. When you are writing and when it is being put out, so if sourcing is not solid,
then people these days call you out. I mean, I don't have to tell you, X has become one cesspool, you know, where even if sites slip, and you will find you are getting trolled left, right, and center. So if you're not sure about the content, if you're not sure about the quality or information, source of information, then please do not run it before cross-checking. You have to, even if it takes like 10 calls, 15 calls, 20 calls, we live in today's age and time when correct source of information. And another thing, which we must not forget, is attribution. If you are taking stuff from anywhere, a medical journal, somebody's quote, some story, if you think that your article, your piece, or your bite is going to get, there's going to be value addition, and you want that information, you have to give attribution to the original source from where you have taken. Otherwise, it can land you in soup. I'm telling you from my personal experience, this doesn't happen anymore. Back in the day, when there was not enough exposure, people could easily lift stuff and nobody would get to know. But this time, no. Now we live in different times now. So this is one key advice for everyone. Now I'm talking about, let's go to opportunities. When I started out, there were just a few things. There was newspaper, print journalism, there was broadcast journalism, radio, websites were coming up, not in a big way then. But if you look at it now, print and broadcast are seen as dinosaurs, you know, which are going to die anytime. So there are a lot of other things that are there. So websites are coming up. We are working on apps now, how to boost that traffic. And then people are actually opening up YouTube channels. There are Instagram stories, if you look at, they are monetizing that and you're using to give out information. So a lot is changing and a lot will change. Journalism, as I understand and probably you understand today now, it will see a huge change in coming days. I thought I'll see my lifetime through, but no, I think it's just coming, and it will, in just a matter of probably a year or 2 years, when we see how the whole scenario, journalistic scenario, is going to change. How we give out information, it will change. So the opportunities are diverse now, thanks to that. But with that comes obviously challenges, because there is more responsibility. You cannot deny that. So apart from print and digital media and broadcast, other things that I can think of is medical publishing. That is coming up in a big way. So a lot of publishing houses want to put out content related to medicine, science and medicine, and they need people who can explain things better, who can write it down in the simplest possible manner, which everyone can understand. Break down the jargons, make it as simple as possible. So that is called medical content generation. A lot of content generators we used to have earlier, but now the medicine is becoming big, especially after pandemic. People have realized the role of it. It is not as boring as it used to be some time back. Then there are hospitals. I'm not just plain talking about journalism here. I'm like to diversify a little more. Hospitals want people who can communicate better, who have understanding of health and medicine and science. So there are a lot of patients. There are a lot of international organizations that are coming in. So, and they need people. So this is one area which you can tap on. It's interesting. And health corporate communications. Again, very interesting, because there are a lot of liaising, I would say, work, because you need people from the government, what information is coming, then what the agencies, there are pharmaceutical industry which needs people who can put out pamphlets, literature, which is related to health. So there is scope over there. Then we have non-profits, a lot of them coming in, who need people who have sound understanding. It's preferable. They don't really insist on somebody with a medical background, or you guys have started a course also in health communications now, I believe I just heard. So that if you have it, brilliant. I mean, that is definitely +1. But if you don't, then no problem. They can still hire you. But it's always, value addition always helps. So a lot of international organizations are coming in, which they're opening NGOs and stuff. There are a lot of segments like HIV, tuberculosis, and other tropical diseases, because India is a tropical country, so neglected tropical diseases. So different segments where they are working on ground in different states. So they need health communicators. So that's another area which is important. Then we have UN health bodies like WHO, UNICEF,
they also need people. They also need people on ground. They also need local population because they work in different countries. So probably somebody from the West may not be well versed with the problems that India faces. So they need people on ground from that country so that they know what they can. Language is an additional advantage, so obviously that you know the local language. Apart from that, they need people who understand what is happening on ground. So that is another thing. And then medical journal writing. The opportunities have become endless now. There's so many people who are there who want you to write journals from them. They set up websites for them. So all the content comes from us. So we generate that. So that is the, I would say, scope of this particular segment, which is health. It's not, I mean, I would say it's not as interesting as when we look at a newspaper. When we open a newspaper, probably defense gets more space, finance gets more space. I mean, these are beats which are heavy beats, considered heavy beats. Health is still considered a soft beat. But thanks to pandemic, things are moving a bit. We are getting more money now, thankfully, in our budget. So things are changing. And if you talk, honestly, I've been asked to talk about the opportunities that this segment presents. They are endless. And it's a diverse field. There's it's I would say meta-analysis if we do. That is one part of it. So there are a lot of segments to it. Like I said, health is a very broad umbrella term. There are diseases, there are hospitals, there is medical research, then there are pharmaceutical companies which are manufacturing medical devices. So there are a lot of things that come under health. The ICMR, which does a lot of fantastic work on ground. So you just have to know what you want to do. One thing is very important. You should know what you're comfortable with, so that you don't land up at a place where you don't feel home. So if once you attain that foothold where you know that this is the place I belong to, this is what I want to do, then there are limitless opportunities. So I would just say, go for it. That's it. Thank you so much. And if there are questions, I would be happy to take them up. Hello, ma'am. My name is Sayukta Karan, and I am from Masters in Health Communication. So I'm more curious about this particular whatever you shared. So as you have told many things, my question is like health misinformation, health rumors spreads very quickly, and it's also very dangerous. People believe very fast because when something is about health, it's very sensitive, and local people, they are not aware about it. So how do you tackle this problem? And after that, how you also evaluate that if you have presented some awareness health campaign, then what is the process of its evaluation to see its effectiveness? So yeah, infodemic as we call it, and we got to know about it in its the barest form during COVID. So we saw there are a lot of misinformation that was going around. So if you had paid attention, I specifically mentioned about sourcing, from where you are getting your source, the primary information. That is extremely important. So like I said, even if you have to make 1,000 calls, please do. Luckily, I'm with print journalism, so I have time by my side, on my side. Unlike, unfortunately, television, they have to run things quite fast. We have that much leeway. We can sit, we can make calls, we can cross-check, double-check the information that is going around, and then go. So it's the next day we have to put out, but even then we have websites now, so which are sitting on our heads. The website people is like, you know, this is what is running, this is what is running, is it true, is it true? But you know, we do not confirm unless we get confirmation ourselves. And it's not confirmation picking up from some website or some news channel, no. I mean, I still follow it. I still follow the fact that I would make calls to the person concerned and check. If it is confirmed to me, personally, then I go ahead and confirm it to my team in office. That is the only way to go about it. There is no shortcut to that, no matter how much under pressure you are.
but like I said, the caveat is I work for print, for the print for a print organization. So it probably TV doesn't have that much. They're not that lucky, yeah? But whatever you have to make do with that. So please cross-check, cross-check, cross-check. There's no shortcut to it. Okay, thank you, ma'am. Thank you so much. Since the regional centers are also attached with this session, for this session, and we are receiving questions from regional centers as well. There's one question from IIMC Aizawl, EJ department. Bhumi Sharma is asking, how do you break down complex epidemiological data into simple, universal language for citizens through your articles or stories? Bhumi, good question, because two things. One is data. So thankfully we have data teams in our office, so we sit with them, I chew their brains to understand any complex data that is thrown at my face, which Health Ministry is very good at. They keep sending me data after data after data, which is very complex. And when it comes to medical procedures or any other research work, so then I go to the scientists concerned, sit with the person, he helps me understand, unless, I mean, there is no other way. So you have to sit, you have to understand, you have to get your concepts cleared first before you put it out. So that is the line I follow and have been following for almost 25 years now. Hope that helps. Okay, thank you. There's another question from Amravati, PG Diploma in Marathi Journalism. Ajinkya Kawale is asking, what are the barriers to health communication, and what should we do about them? The biggest barrier I would say is not reading enough. Because if you are not informed, you will not ask informed questions. As simple as that. Your concepts have to be clear. You should know. If you know what you know, then you will be able to ask hard questions that are to be asked. There, again, no shortcut there. So read as much as you can. If you really want to do health journalism or health communication, then you, instead of reading, it's good to read everything, but focus on health-related topics, whatever journals are coming out, whatever research papers are coming out, whatever developments there are related to health, all that helps. So you have to keep yourself well-versed. You have to keep yourself clued in. Only then you will be able to ask questions, right questions, and explain it better. So that is the biggest barrier, I would say, when people don't know what they are asking, when they don't know what they have to ask. That's it. Okay, so thank you. So since you were referring to digital transformation, here we have one question for specifically in reference to AI. So here's one student, Devesh Pandey from MA in Corporate Communication and Brand Management from Dhenkanal campus, and he is asking, if you do see, and how do you see actually the future of a health communicator in the contemporary time of AI? Yeah, this is a question that we have been getting a lot in our newsroom. We have been contemplating over it a lot. But the thing is, right now, the stage that AI is in, it's working as an aggregator of sorts. It is taking information from everywhere and presenting it before you. So essentially there are times that I have also seen my article being quoted. So verbatim, probably a para, or some other person's article also quoted from there, probably a para, because the AI wants to explain something. So the thing is, there is no escaping it. So it will become better at one point in time. But right now, it is not fully, I would say, tuned. So we still have time. We still have time to actually work. So we can work for some time before AI takes over completely. But I don't see it taking over completely, because we get original source. Our source of information is quite original. So we have to stick to that. We will probably sail through. That is my hunch. Yeah, thank you so much. And there's another question coming from the audiences. So we are just coming to you. First of all, ma'am, thank you for your valuable time and guidance. Thank you. As the topic is opportunities in health communication, my question is 100% associated with the topic.
my question is that as the FOMO has been created that AI will drag out these jobs and that AI will do this and that. So my question is that how AI is shaping health communication, and is there any skill in health communication that will remain untouched by the effect of AI, and what are all those skills one should learn that will remain uniquely human? I think you're right. I mean, it will uniquely human. Humans are unique. There's no doubt about it. So we are still seeing. We don't know exactly the scope of it. We don't know how it is going to play out in future. I am sitting here, I am also learning. I mean, I haven't seen what it is. I have also heard that, you will be redundant. We would not need writers anymore. GPT will write stories for us. But we have right now seen errors also in the copies. If you read up a lot, whatever I have read so far, it's not error-free at the moment. So we don't know what future entails. So we need not fear it at the same time. So what is better, we learn it. We hone our skills, we adapt. That we have been doing. I think long back people even were afraid of computers, I was told. So then that computers now these are our lifeline, suddenly become our lifeline. Not necessarily, we don't fear them anymore. So I have a feeling there will be a way out for humans and machines to coexist. So let's just see how it works out. We'll see it together. Thank you. I think this session is shifting from health communication to AI, and we are going to have a communications separate now, as we understand, it's AI. technology driven. Yes, it's going to be yes, totally. yes. So Yes. I'm not blaming them. Yes. So we have another question. I hope this will not be related with AI, because if we are going to talk about AI, we will be talking about not only generative AI but also calculative AI. Hello, ma'am. Hello, ma'am. Ma'am, I'm from MA in health communication only, and I want to ask you that कि आप print की बात कर रहे थे, आप news media की बात कर रहे थे. जी. But मैम जो short documentaries होती हैं, जो UNESCO, जो WHO जो निकालती है, जिनसे हमें ये भी पता चलता है कि ये नेबुला क्या होता था, ये पोलो क्या आया, जिस तरीके से इफेक्ट हुआ, जिससे लोगों को इमोशनली उससे ज़्यादा अटैच हुए मैम. बिल्कुल. तो मैम व्हाट इफ अगर हम प्रिंट मीडिया के थ्रू भी और न्यूज़ एजेंसीज के थ्रू अगर साइड से अगर हम 10 to 15 मिनट्स की एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट्री, एक शॉर्ट फिल्म, लाइक फॉर एन एग्जांपल किसी भी चीज़ को लेकर के, क्योंकि हेल्थ कम्युनिकेशन इज नॉट अबाउट द कोरोना, इट्स अबाउट द मेंटल स्ट्रेस आल्सो, बिकॉज ऑफ द कॉर्पोरेट लाइफ, बिकॉज ऑफ द आईटी सेक्टर आल्सो. बहुत कुछ है. हाँ, मेंटल हेल्थ तो बिल्कुल है. सो यही मेरा क्वेश्चन है कि हम हेल्थ कम्युनिकेशन को एक नैरेटिव फॉर्म में, एक फिल्म मेकिंग फॉर्म में भी शो कर सकते हैं किसी एजेंसीज के साथ मैम? बिल्कुल कर सकते हैं. अगर आपने HT का वेबसाइट देखा होगा, हम लोगों ने उसमें छोटे छोटे क्लिप्स डालने शुरू कर दिए हैं. सो इफ़ इट्स एन इम्पॉर्टेंट स्टोरी कोई स्पेशल स्टोरी है किसी रिपोर्टर की, तो वो साथ में जाके शूट भी करते हैं. और वो बहुत बड़े बड़े वीडियोज़ नहीं होते, छोटे छोटे 1 मिनट 2 मिनट की वीडियोज़ होती हैं जो आजकल स्टोरीज़ के साथ में जा रही हैं. प्रिंट का स्कोप थोड़ा लिमिटेड हो जाता है इसमें, बट चूंकि हमारे पास वेबसाइट है, सो वी आर मेकिंग यूज़ ऑफ इट. बट अगर आप टेलीविजन में देखेंगे, उनके जो बाइट्स होते हैं वो तो 1-1 मिनट 2-2 मिनट या 30 सेकंड्स के होते हैं, जिसमें वो ऑलमोस्ट आपको पूरी इन्फॉर्मेशन एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं कि कैसे चलेगा. वेबसाइट्स पे भी वही हाल है, वो उस पर छोटे छोटे से इन्फॉर्मेशन देते हैं ताकि लोग समझ सकें क्विकली. जितना छोटा हो उतना बेटर, क्योंकि अब हमारे पास अटेंशन स्पैन उतना रहा नहीं कि हम वो लंबे लंबे 5-5 10-10 मिनट के वीडियोज़ देखेंगे. तो वो तो साथ में साथ चल रहा है. जब मैं एडेप्टेबिलिटी, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट एडेप्टेबिलिटी, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट लर्निंग न्यू स्किल्स, these things are happening simultaneously. People are in parallel doing these things also. So we are writing also, we are also filming, we are also shooting those small nuggets. So it is happening. आप देखोगे, अगर आप आगे आप कोर्स कंप्लीट करके when you will move, you will realize that ये तो करना ही पड़ेगा. वो तो साथ में है ही. आप ये नहीं बोल सकते कि मैं सिर्फ पत्रकार लिखने वाला हूँ, मैं सिर्फ लिखूंगा, मैं शूट नहीं कर सकता, आई एम कैमरा शाय. वो ऑप्शन ही नहीं होगा आपके पास. फॉर ऑल यू नो, nobody is going to be interested in your written samples anymore. For all you know, you will be all videos, small videos. आपको स्टोरी उसमें समझानी पड़ेगी. तो वो तो है ही, फ्यूचर ही है ये. You cannot escape it. Thank you, ma'am. Now we can accommodate one last question, and here's the girl asking that question. She raised the hand first, so. Hi, myself Niali from HealthCom. Hi. So my question is basically, it's like a very realistic on-ground experience, since you are experienced like that. So how accessible these
medical institutions and doctors are like in real life, since you are in a position where you can, you know, you have contacts and you can get through the security and access. But those days are gone, ma'am, trust me. You know, nobody can boast of having contacts now, especially in the government, but yeah, I know what you mean. Yeah, yes. so like on a regular basis, how many rejections do we face? Like how many rejections are we, do we think like we can expect in a day? And another question is like, what's the emotional toll you go through every day looking at this, like since health is a very sensitive topic in general. So yeah, if you could give like an idea about it. Thank you so much. Yeah, that's quite interesting actually. Now that reminds me of my actual hardcore reporting days where I've actually eaten food outside a mortuary where the body was getting embalmed. So if you're talking about sensitivity, after a point it goes out of the wind, literally. So if you become sensitive and you just think, you know, you take the trauma home, you cannot. That is not an option. So otherwise your whole life will get like topsy-turvy. It'll turn upside down. It's like doctors. If they start empathizing with their patients, then they are going to have a very, sorry to say, very fucked up day and personal life. So which is why you cannot carry your work home. And that is one part. So you have to train yourself like that. So if I see a patient who's extremely sick, probably going to die, that is a story for me. Okay, she talked about my battered baby. So she was a 2-year-old girl child. I got a call from one of my doctors I knew from earlier in IIMS. So he said, you know, there is a 2-year-old girl who's admitted and they have a trauma center, IIMS Trauma Center. So would you like to come and have a look? So that 2-year-old girl had bite marks, or human bite marks all over her body. She had broken arms. Her head was particularly probably hit by some blunt object, or she was smashed against a wall, something like that. She had severe head injury, and there were other injuries. So she was just right in front of me, and she was a baby, all of 2. Imagine the kind of PTSD, what we call now post-traumatic stress disorder. But thankfully, a good support system, a good family, good friend circle, you talk about it and you forget it. You cannot carry it home. That's one part. First part of your question was accessibility. So there are different segments. So accessibility, government, it is restricted now, obviously. Not everybody meets you as often as they used to at one point in time. But doctors, they are more than willing to talk. So if there is a good surgery, if there is a good disease, for example, when COVID was there, they were more than, though they were also learning on job because it was a new disease, but they were willing to explain whatever little they were getting to know through the day, whatever the medicine was working, what patient, how he was responding, they were willing to share it. So that is there. And when we talk about officials, research scientists and all, I have stayed outside, waited outside offices for 3 hours, 4 hours, even 5 hours, just because the person is in a meeting and the meeting just stretched, went beyond whatever particular time it was supposed to, and then gone inside. So that, like I said, shoe leather reporting, there is no shortcut to it. You have to slog. You will have to go, at least initial years of your life. Once you build contacts, if we can call them contacts now, then you can still rest a bit easy, but otherwise it's just that you have to keep reinventing yourself. You have to be on ground, boots on ground, like I said. It's a drill. You cannot escape that. I hope I answered your question. Thank you. There's one more last question coming from the regional center, Jammu, and it is a related one. So we are taking this. Ankit Singh from New Media Communication is asking, you know, as you have the experience in the times of a pandemic, what responsibilities a journalist must fulfill in such a tense period, and how to segregate essential information from the non-essential ones? Yeah, so the biggest responsibility is that not to spread misinformation. That is extremely important. Do not create, because that can lead to a lot of panic. So we don't want that. When masses already are in a panic mode, they don't know what is hitting them. They don't know what kind of disease it was when COVID hit. I'm talking about H1N1 was long back. That time we didn't have social media. We didn't have that much exposure to information. But during the time of COVID,
Everything was out there, out in the open. People would, slightest of thing and people would suddenly start panicking. So our biggest responsibility lies in cross-checking information before putting it out, so that we do not create panic among masses. That is the worst we can do. So I would say cross-check, cross-check, cross-check. Do not run anything if you are not sure, if you have not gotten the confirmation from reliable people. That's it. Thank you so much, Ridhima. It was insightful, and I think most of the insight of the whole semester they have already got in one session. So thank you so much. I'm glad. Thank you. तो अब हेल्थ से फिटनेस की तरफ थोड़ा आगे बढ़ते हैं, है ना. अभी तक जो हुआ हमने बात सुनी स्टोरी टेलिंग के बारे में, हाउ टू मेक स्टोरीज इंटरेस्टिंग, एंड व्हेन यू टॉक अबाउट वन फील्ड फुल ऑफ इंटरेस्ट, दैट ऑलवेज रिमेन्स स्पोर्ट्स. सो स्पोर्ट्स एक ऐसा, इससे पहले वाले सेशन में हम लोग सुन रहे थे कि टेलीविज़न नीचे जा रहा है, प्रिंट नीचे जा रहा है, डिजिटल में ग्रोथ है, लेकिन वो भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा ड्यूरिंग द कमिंग ईयर्स. लेकिन एक ऐसा फील्ड है जो वाकई फील्ड है, लाइव है, एक्शन से भरपूर है, एंटरटेनमेंट से भरपूर है, और जिसमें संभावनाएं बहुत हैं. और हम लोगों ने ये भी देखा कि एक मोमेंटम क्रिएट हुआ है. 1960 में जो एक कछुआ चाल के साथ हम लोग आगे बढ़े, वो 2016 या उससे पहले भी अगर 2012 की बात करें, लंदन ओलंपिक्स और उसके बाद रियो ओलंपिक्स, हम देख रहे हैं कि वो मोमेंटम लगातार बढ़ रहा है. उसमें सरकार का भी सहयोग हम लोगों को उसको भी रेफ़र करना पड़ेगा, चाहे वो खेलो इंडिया हो या फिर वो टॉप्स हो. ये ऐसी स्कीम्स हैं जिनसे एक न केवल एक अवेयरनेस क्रिएट की जा रही है, बल्कि पूरी एक तैयारी, हम कहेंगे कि तैयारी का माहौल बन रहा है, जिसमें हमें हर तरह से फाइनेंस का भी सहयोग मिल रहा है. और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मीडिया में भी बहुत सारे नए फॉर्मेट्स आ रहे हैं, ख़ासतौर पे डिजिटल में अगर हम बात करें या सोशल मीडिया में बात करें, तो अभी फीफा का फीवर, अभी मैं ये नहीं कहूँगी कि कम हुआ है या ख़त्म हुआ है, क्योंकि एक पैरेलल ऑरेंज इकोनॉमी भी है, जिसमें हम लोग देख रहे हैं कि कंटेंट कैसे क्रिएट हो रहा है, एम बापे से एम बापू तक. तो सर, इस पूरे जो एक अपॉर्चुनिटी से भरा संसार है, उसके बारे में बात करने के लिए हमारे बीच यहाँ डॉक्टर विमल मोहन जी मौजूद हैं. और इससे पहले कि मैं उनको पोडियम पर बुलाऊं, मैं एक छोटा सा ब्रीफ उनका एक इंट्रोडक्शन बताना चाहूँगी. डॉक्टर विमल रामनाथ गोयनका अवार्ड फॉर एक्सीलेंस उनको मिला हुआ है in the field of journalism, and he is an award-winning author with more than 25 years of experience in different organizations, a journalist who has covered 5 Olympics. आप अपनी एज कैलकुलेट कर लीजिए. क्रिकेट वर्ल्ड कप, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स, IPL, besides several other major इवेंट्स. और इंटरेस्टिंग बात ये भी है कि ओलंपिक्स की बात करें, क्रिकेट वर्ल्ड कप की बात करें, एशियन गेम्स की बात करें, कॉमनवेल्थ की बात करें, तो ये सारे गेम्स अभी लाइन से 2030 तक होने जा रहे हैं. तो उसकी तैयारी भी हम यहाँ पर सर हम लोग देखेंगे कि संभावनाओं के ज़रिए कैसे हम उसे कैसे एक रियलिटी में बदल सकते हैं. करंटली he is senior sports editor and anchor with NDTV. He has also worked with Sahara News from 2000 to 2003 as sports correspondent and functioned as assistant director to the eminent filmmaker Prakash Jha for a series of 11 short films on budgetary and economic terms. His documentaries, particularly Devnagari and Pinjore Garden, were among the popular, those are 2 renowned documentaries. So, sir, आपका स्वागत है. Thank you, ma'am. Hello, everyone. First of all, I'm so happy that a field is discussed in a classroom or in a hall.
there is always a dichotomy, ma'am. I mean, when you talk about classrooms, you don't talk about field. When you talk about field, you don't talk about classrooms. और ज़्यादातर टीचर्स के बीच में भी स्पोर्ट्स में जैसे मतलब क्लिशेड लाइन है, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब. ये this is so true. I mean, when you talk to the new players and everyone, and unfortunately, I mean, I'll ask just one question, and I'm so happy that many people were raising hands for questions, because all of you, you and me, all journalists, need to ask questions calmly, quietly. You don't need to be animated television anchors. I mean, many people asked many good questions, and they were not animated. The answers were also given in that composed manner. So आप सवाल पूछिए. सबसे तो मैं पूछना चाहूँगा, इतने बड़े हॉल में कितने लोग स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट वाकई बनना भी चाहते हैं? मतलब काफ़ी अच्छा नंबर, और ज़्यादातर लोग क्रिकेट जर्नलिस्ट बनना चाह रहे होंगे. जर्नलिज्म, स्पोर्ट्स जर्नलिज्म का सबसे बड़ा फ़ायदा है जो बाहर दिखता है. ऐसे बहुत सारी उसके अलग फ़ायदे हैं, लेकिन आप सबसे ज़्यादा अक्रॉस द वर्ल्ड ट्रैवल किए रहोगे जर्नलिस्ट. आप किसी भी न्यूज़ रूम में जाते हो, कहीं भी जाते हो, ये सबसे बड़ा एडवांटेज है. So when Nelson Mandela came out of the jail, he went to a football ground and said, "Sport has the power to change the world." स्पोर्ट्स जितनी ताकत किसी और चीज़ में नहीं है जो कि वर्ल्ड को चेंज कर सके. और बहुत सारे टूल्स हैं आपको इसके लिए. जैसे आप इंडिया की लिटरेसी, क्यों इसमें स्पोर्ट्स में संभावना है? क्योंकि आप इंडिया की लिटरेसी देखोगे तो 80% है, और फीमेल में 74% है. आपको स्पोर्ट्स लिटरेसी पता है किसी को कितनी है इंडिया में? स्पोर्ट्स लिटरेसी कितनी होगी? कोई हज़ार्ड गेस, एनी नंबर? So I'll tell you, it is 6% amongst men and 3% among women. So there is a huge possibility. Newsrooms में sports desk जो shrink कर गया है. We were 30 people on the desk in NDTV. Now we are just 2. No news channel is showing a sports show at a definite time and all. But so there is a space. I mean, अभी पॉलिटिक्स उसको ले जा रहा है. पॉलिटिक्स ज़्यादातर टाइम खा जाता है. लेकिन एक फिल्म में डायलॉग था ना कि फिल्म में 3 चीज़ें से चलती है, एंटरटेनमेंट. विद्या बालन ने किसी का था. अब स्पोर्ट्स और एंटरटेनमेंट से चलती है न्यूज़ इंडस्ट्री जितनी भी है. और स्पोर्ट्स में आप देखो, IPL अभी हुआ है, वो इकॉनमी डाउन है इंडिया की. जब भी 50,000 करोड़ में उसका डील होता है, ब्रॉडकास्ट डील होता है. सो यू हैव ह्यूज पॉसिबिलिटी. और जर्नलिस्ट कम हो गए, सवाल पूछने वाले भी कम हो गए, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट कम हो गए. आप देखोगे, आप यू कैनॉट नेम 5-6 स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हु आर वर्किंग फॉर मेन प्राइम न्यूज़ चैनल, नेशनल न्यूज़ चैनल्स. देर आर ओनली 4-5 renowned faces who are doing sports, who are doing cricket, who are doing other sports like Commonwealth Games and all. But there are huge, I mean, fantastic stories. Like there is a girl called Sharmila Dhankad who won, I mean, gold medal in shot put in Commonwealth Games in Glasgow. What a story she has. I mean, she was thrown out of the house, she was divorced, she was beaten up, she was undressed in front of the neighbors, and now at the age of 36, she picked this sport and won gold medal. Gold medal in, so I mean, our job as a sports reporter is to bring out stories. There are multiple forms. Forms will change. Now it is doing in real form on Insta and YouTube and all. But these forms will change. The content is king. I mean, when I joined NDTV, Dr. Roy, who was a visionary, he told all of us, I mean, whatever you do, content will be king. So, I mean, unfortunately, we don't have the art and craft of bringing out good stories, good content for the people. That's why it has faded down. Earlier, I mean, 20 years back and all, people used to, I mean, when you talk about sports, they would ask, what is the result? Abhi bhi log pooch lete hain, ki arey, kaun jeeta, kaun hara? For our parents, this was sport. I mean, nothing more than that. They would ask, Sachin ne kitna banaya? Acha century banayi, nahi banayi, phir television band. But now you have I mean, so this is our job, to bring out stories, to bring out people who are marginalized into the mainstream. If we do that, and if you are bringing out good content, people are earning hell lot of money, they're getting jobs. I mean, see, the job criteria will change. I mean, you will not get job in television or print, because print के पहले हिंदू में 6 पेज का स्पोर्ट्स आता था, अब 2 पेज आता है.
HT टाइम्स ऑफ इंडिया में 2-2, 3-3 पेज आता था, अभी 1 पेज आता है. टेलीविज़न में हमारे यहाँ शोज़ होते थे, वो शोज़ नहीं हैं. तभी शोज़ होता है आइदर देयर इज़ अ कंट्रोवर्सी और समवन हैज़ डन क्रिएटेड हिस्ट्री. तो वो फॉर्म चेंज हुआ है, बट आप अगर स्टोरी ला सकते हो, क्वेश्चंस आपको पूछना आता है, आपके पास कंटेंट है, देन यू आर द किंग. मतलब और आपके पास बहुत पैसे हैं और बहुत सारे फील्ड हैं. इफ़ यू टॉक अबाउट एवेन्यूज, there are not only television channels or newspapers or digital media. You have PR groups, social media. I mean, social media is emerging like anything. I mean, every sports department, sports federation, every state units in Indian Olympic Association, every state Olympic Association, they want social media team, but they don't have. We don't have experts. Fortunately, your generation is doing, I mean, weirdly creative things. And you people could lead at one point of time if you want to pursue sports as a journalistic career. You have huge opportunities. And there was a period of transition in sports also. When we started, people would say, अरे सौरभ गांगुली कैप्टन बन गया, एक headlines बना देना. But now, I mean, you run so many, I mean, backside stories, I mean, there are stories of struggle, stories of struggle to success. There are multiple stories, but we don't know the story because we don't go to the ground. I mean, we don't do hard yards. And if we start chasing our stories and all, you will be doing breaking, you will be doing exclusive stories. That is not a difficult thing, but of course, hard work, your questions, I mean, honing your skills and craft. These are the most important elements. I mean, sports we can talk, पूरे दिन हम लोग बातचीत कर सकते हैं, एक एक प्लेयर के बारे में बातचीत कर सकते हैं. आप ये देखो, शर्मिला की स्टोरी कहीं नहीं थी, एक हिंदू में या स्पोर्ट्स स्टार में किसी एक लड़के ने की थी. नाउ अनफॉर्चुनेट थिंग इज every anchor, every reporter would read that the same piece and will ask similar questions. मैम आपको क्या सबसे प्रॉब्लम हुई थी? पहले एक बड़ा मजाक उड़ाया जाता था, समवन वुड रन 100 मीटर और उसके बाद जाके आप पूछते हो कि आपको कैसा महसूस हो रहा है, जो पिपली लाइव वगैरह में भी. तो ये आपको उससे निकलना होगा. फॉर दैट यू नीड टू डू होमवर्क, यू नीड टू रीड एज मच एज यू कैन. And there are many stories, man. I mean, there are multiple books. I mean, आपको इंडिया में पहला गोल्ड मेडल किसने जीता था इंडिविजुअली? आप लोग किसी को याद है? ओलंपिक्स में, हाँ? और उसकी बुक का क्या नाम है? A shot at history. That's what I'm trying to say. If you want to become a sports journalist, you should be knowing more things about him. And that is one of the, I mean, I've gone through that. That is one of the best books across the world. There are 2-3 books, like Ramchandra Guha has written a book, Corner of a Foreign Field, that will tell you the complete history of India. I mean, how the Indian society and polity was transforming, and side by side, your sports was transforming at the same time. It has a different pace because sports was always marginalized, but now it is not. Now it has become the mainstream thing. कई बार आप देखोगे दिन भर एक बॉक्सर्स जीत के आए तो सारे चैनल्स बॉक्सर्स कर रहे हैं. सो वो इसलिए कर रहे हैं, उनको उतनी ही समझ है. यू नीड टू क्रिएट दोज स्टोरीज. आपको बताना होगा कि अरे ये किसी को नहीं पता था कि वो लड़की है. रात में बिकॉज आई टॉक टू दीज पैरालंपिक गाइज एंड ऑल्सो, एंड आई कीप डूइंग दोज देयर स्टोरीज. समहाउ आई न्यू इट. And I also forgot, but when I asked that you have worked as maid, you have worked as a sweeper and all, then she said, no, I have also worked as maid and I was beaten up. तो मैं डर गया कि ये बोलना चाह रही है on air, but she was saying so, and suddenly this became a story. Now she is a star. So you need to create stories, you need to do hard work, and there is no alternative. As Ridhima was saying, there is, I mean, even if you want to make contacts and all, you need to go again and again. You will get as many rejections, but hard yard is the only way out, and hard work, of course. I mean, we used to say कि hard work, ये parental थोड़ा लगता है कि अरे hard work करो, लेकिन जर्नलिज्म में आपके पास स्पेस नहीं है. आप अगर हार्ड वर्क नहीं कर रहे हो, आप कोई स्टोरी मिस करोगे या गलत करोगे, सेकेंडरी सोर्स से आप लोगे इन्फॉर्मेशन, वो गलत होगा. टेलीविज़न हो या प्रिंट हो, कभी भी आपको गलती के, अब तो प्रिंट में भी आपको डिजिटली सबसे पहले डालना पड़ता है. यू गेट एन इन्फॉर्मेशन एंड यू पुट इट डिजिटली ऑन योर वेबसाइट. सो इट माइट गो रॉन्ग इफ यू डोंट हैव डायरेक्ट सोर्सेज. यू हैव टू बिकम SHO, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, FIR डालना है आपको.
सो FIR जब तक सही नहीं होगी तो स्टोरी सही नहीं होगी. That is all about, I mean, sports journalism today. If you want to ask any question, I mean, more than okay. Should I come there now? Yes, now you can come forward. I think we can start from there. We know that you all have, most of you have questions, and we are going to come to you, but it would be only one by one. Yes. Good afternoon, sir. Yes. Sir, Hi, good afternoon. I'm Shantanu Rastogi, and I'm in RTV. So I also have a sports background. I've played table tennis for a lot of time, and I've also been played nationals. So that's why I've chose to do the RTV course, particularly from here. What is and RT? Radio and television. Okay. So my main interest is also in sports journalism. So my main question is कि अब हम देखते हैं कि जो क्रिकेट है वो एक शॉर्ट फॉर्मेट की तरफ काफ़ी ज़्यादा प्रोग्रेस कर रहा है, और सब्सिक्वेंट स्पोर्ट्स हैं जो कि हम इंडिया में नहीं भी खेलते हैं, उनके बारे में अगर हम बात भी कभी करते हैं या तो हम तभी बात करेंगे जैसे आपने बताया कोई माइलस्टोन अगर वर्ल्ड लेवल पे होता है तो हम उसके बारे में बात करते हैं. अगर कोई स्पोर्ट इंडिया में हम खेल भी रहे हैं, फॉर एग्जांपल भी कॉमनवेल्थ हुआ, उसमें कई अचीवमेंट्स आए, या फिर अभी अनाहत सिंह का जो उन्होंने जीता यूथ चैम्पियनशिप, तो हम उसके बारे में बात करेंगे. बट ओवरऑल थ्रू आउट द ईयर हम क्रिकेट स्पेसिफिक ज़्यादा बात करते हैं. सो ऐसा क्यों है, और हम अगर फॉर एग्जांपल मैं अगर इस फील्ड में आगे आऊँगा तो मैं कैसे उस चीज़ पे वर्क कर सकता हूँ, और अभी ये चीज़ हम डाइवर्सिफाई क्यों नहीं कर पा रहे हैं उस कवरेज, स्पोर्ट्स कवरेज को थ्रू आउट ऑल स्पोर्ट्स, whether it's in India or in the world, like for example Formula 1, tennis or any other sports. Very nice question. You will become a good sports journalist. So I mean, that is the challenge, but that is the opportunity also, because people don't know these kind of stories. आप ये बताओ, शर्मिला धनखड़ की स्टोरी अगर कॉमनवेल्थ गेम्स से पहले मैं अपने ऑफिस को बताता कि सर देयर इज़ अ गर्ल हु वाज बीटन अप, उनको उसके हस्बैंड ने बाहर पड़ोसियों के सामने नंगा खड़ा कर दिया था, और वो उसके एक पाँव नहीं है, उसको डिवोर्स दिया, पीटा, बाहर रखा, क्या ये स्टोरी नहीं चलती? और आप कहते कि वो जा रही है कॉमनवेल्थ के लिए, लेकिन किसी ने ये स्टोरी की ही नहीं. वो तब कर रहे हैं जब गोल्ड वो जीत गई है. So that is an opportunity. If you get these kind of stories, see, you have to bring out stories. Any journalist, health, education, politics, what is our job? To bring the marginalized people to the mainstream. So this was a marginalized story, and our job is to bring it to the mainstream. Now because she has won a gold medal, people are doing it. But everyone is doing the same thing, so it becomes repetitive. So after a point of time, you say every channel, every anchor is asking same questions. And to make it, I mean, to bring it optics to it, what do? They ask animated questions, shouting, and now this era will also go. This is the worst era of journalism we are going through, but this era will also go. I mean, when we started in 2003 and all, we used to ask questions very softly, and we used to do meaningful journalism also. Now, because you don't have content, you don't study, you are in a rush to bring everything now and then. So in those circumstances, you get an opportunity also to bring out good stories and bring it to your newsroom, give it to your editor. 2 या 3 बार डिनाई करेगा, एक बार आपने स्टोरी, अब ये भी है उसके पास भी चैलेंज, अगर आपने डिजिटली 4 जगह डाल दी, उसको मिलियन व्यूज आ गए, योर एडिटर विल बी इन क्वेश्चन कि यार यहाँ मिलियन आया, तुमने लिया क्यों नहीं? सो यू हैव गॉट मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज एज वेल. सर नमस्ते सर, मेरा नाम राहुल कुमार है. हाँ. और मैं हिंदी पत्रकारिता का विद्यार्थी हूँ. सर मेरा प्रश्न है खेल पत्रकारिता से संबंधित जो पारंपरिक खेल हैं, मैंने इसी वर्ष लगभग 17 पारंपरिक खेलों पर मैंने डॉक्यूमेंट्री बनाया था, और भी मेरे पास 12-13 पारंपरिक खेल है जिन पर मुझे डॉक्यूमेंट्री बनाना है. लेकिन वो जो अभी खेल हैं वो विलुप्ति के कगार पर हैं. हमारा जो अभी एक जनरेशन ही उससे खेल रहा है, उसके बाद जो हमारा जनरेशन आ रहा है, न्यू जनरेशन आ रहा है, वो खेल नहीं रहा है, यानी वो विलुप्ति के कगार पर हैं. तो एज हम एक पत्रकारिता के विद्यार्थी, स्पोर्ट्स के विद्यार्थी,
तो हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्या करें कि वो खेल बचे रहें, सुरक्षित रहें और वह ओलंपिक जैसे यहाँ पर चीज़ें यूज की गई है ऐसे मंचों पर वह जाए। मैं जैसे विभिन्न खेलों का नाम ले सकता हूँ, लुका छुपी, गिल्ली डंडा, अत्ता पता, चिकीत कीत आदि विभिन्न खेल हैं जिन पर मैंने वर्क किया है। तो सर आपका क्या सलाह है कि ये खेल बचे रहें और हमारा जो पारंपरिक विरासत है जिस पर हम इतना अपनी संस्कृति अपनी परंपरा पर गर्व करते हैं उसे संरक्षित कर सकें? आप अपनी ज़िंदगी मुश्किल मत बनाइए। आप बहुत जो आत्या पात्या लुका छिपी और इसको अगर मेन स्ट्रीम में आप लाने की कोशिश करेंगे तो एक ज़िंदगी में नहीं हो पाएगी। आपको घर से आपको रोज़ी रोटी भी कमानी है, आपको क्रिकेट करना ही पड़ेगा, ओलंपिक स्पोर्ट करना ही पड़ेगा और फिर ये कीजिए कि आप डॉक्यूमेंट्री बनाते। एक अच्छी चीज़ हुई है मैम, अभी कुछ दिनों पहले स्पोर्ट्स को मेन स्ट्रीम जो 2% CSR होता था उसमें आपको ला दिया गया। इफ़ यू वांट टू डू डॉक्यूमेंट्रीज ऑन दोज, ट्राई टू कॉन्टैक्ट गुड कंपनीज जिसको इंटरेस्ट हो ये। तो आप पैसे के लिए बनाओ क्योंकि इसमें पैसा लगेगा, टाइम लगेगा और फिर आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे कि इनको कुछ नहीं पता है, इनको केवल क्रिकेट पता है। फिर आप 10-15 साल के बाद आप लोगों को चिढ़ाते फिरोगे, फिर लोग आपको चिढ़ाएंगे। पैसे चाहिए ना घर में, तो आपको स्पोर्ट्स करना है तो क्रिकेट और मेन स्ट्रीम को भी करिए। और ये वाले जो आपका अपना आइडिया, ओरिजिनल आइडिया, यू टॉक टू जिनको CSR में खर्च करना होता है, पैसा खर्च नहीं कर पाते हैं, आप उनसे बातचीत कीजिए कि आई कैन मेक गुड डॉक्यूमेंट्रीज ऑन दिस, आई मेड दिस। आप उसमें कुछ बड़े नाम को भी जोड़ सकते हैं। अगर बहुत सारी वो काम करेंगी, लेकिन आपको अगर जर्नलिज्म में सर्वाइव करना है तो आप ये नहीं कह सकते कि ये गेम हो रहा तो ये हम नहीं करेंगे। थैंक यू सर। हम लोगों को रीजनल सेंटर से भी कुछ क्वेश्चंस मिल रहे हैं, आपके पास दोबारा आएंगे। उससे पहले 1-2 सवाल हम लोग रीजनल सेंटर से ले रहे हैं। ये देवेश पांडे हैं, MA इन कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन एंड ब्रांड मैनेजमेंट ढेनकनाल से। देशज से सीधे विदेशी पर पहुंच गए हैं, तो पूछ रहे हैं क्या विदेशी भाषाओं का ज्ञान होना चाहिए और अगर किसी विदेशी भाषा का ज्ञान ज़रूरी है तो वो कौन सी विदेशी भाषा होगी जो आप सजेस्ट करेंगे? Not necessarily, ma'am. Messi, even now he speaks in Spanish. You don't need to know. I mean, you should be knowing. If you are knowing Hindi, आपको अच्छी हिंदी आनी चाहिए। वो मतलब आपको सवाल ढंग से, जो कई बार क्या होता है ना कि अभी मैं शिखर धवन का भी आज ही मैं एक इंटरव्यू कर रहा था, तो अब उससे एक लड़के ने सवाल पूछ लिया कि इसमें किसका रोल है, आप जो आइडिया लेके आए हैं, जबकि वो बेचारा पूछना चाह रहा था कि उसकी वाइफ बाहर की है, सोफ़ी। वो सिर्फ ये कहना चाह रहा था कि आप एजुकेशन के बारे में कर रहे हैं तो आपकी वाइफ का इसमें कितना कंट्रीब्यूशन है। अब वो उसने सवाल वो एक शब्द मिस कर गया तो वो सवाल गलत। इसलिए भाषा कोई उतना, ऑफ कोर्स अगर हम जर्नलिस्ट है जैसे मैम कह रही थी, अब आप ये नहीं कह सकते कि हम सिर्फ प्रिंट जर्नलिस्ट हम वीडियो नहीं करेंगे, हम सिर्फ वीडियो जर्नलिस्ट हम टेलीविजन नहीं करेंगे। आपको लिखना भी आना चाहिए, बोलना भी आना चाहिए, पढ़ना भी आना चाहिए और पढ़ना चाहिए, तभी आप स्टोरीज निकाल सकते हो। तो लैंग्वेज कोई भी हो, 1 या 2 लैंग्वेज आपके अपने आते हैं। आपको हाँ स्पेनिश लीग में काम करना है या फ्रेंच लीग में, जैसे लास्ट 2018 फ्रांस बिकेम वर्ल्ड चैंपियन, so they called few journalists like us to and of course had we been knowing French at that point of time, that would certainly give us some kind of advantage. So those 5 languages are there, but what are you aiming to do? If you, I mean, languages are always आपको हमेशा फायदा करेंगे, लेकिन if you are really want to become a sports journalist, then you need to know at least 1 or 2 language in Hindi and English। कोई भी चीज़ अच्छे से आए, मतलब अंग्रेजी आए तो अच्छी अंग्रेजी बोलिए, हिंदी आए तो आप शुद्ध हिंदी बोलिए। मतलब ये नहीं कि हमने करी थी गई थी, वो आप लिख नहीं सकते हो उसमें से। तो मुझे लगता है ये इनसाइट सबके लिए है, सबने ध्यान से सुना होगा। नहीं यहाँ से कुछ एक फीडबैक मैं देना चाहूँगा, मतलब एंड विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट, आई डोंट नो योर जनरेशन। मेरे पास IIMC के जब हमारे यहाँ से लोग आते हैं और लोग हमारे पास आए थे, कई सारी कॉपीज़ मैंने चेक की थी। इंग्लिश जो लिखते हैं वो टेंस की गलती कर रहे हैं, जो हिंदी लिखते हैं इतनी ख़राब हैंड राइटिंग है, पढ़ना डिफ़िकल्ट है, और हिंदी शुद्ध नहीं लिख रहे हैं आप, है ना। तो वो आपको लैंग्वेज, क्योंकि आपका जो भी एग्ज़ाम लेगा, अब हो सकता है कंप्यूटर पे हो जाए तो आपको हैंड राइटिंग से बच जाओगे, बट ग्रामर से आप नहीं बच सकते हो। दे विल नॉट प्रोवाइड यू AI एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम टू मेक योर स्क्रिप्ट एंड ऑल। प्लेसमेंट तो वो डैश डैश डैश, कुछ लोग क्वालिफाई किया भी आपके IIMC से। हमारे यहाँ जिन लोगों की मैंने कॉपी चेक की थी,
एंड दे आर डूइंग गुड ऑल्सो, लेकिन मतलब ये आपको अपने लैंग्वेज पे, बिकॉज लास्ट क्वेश्चन यू आस्क्ड अबाउट लैंग्वेज, सो आई एम सेइंग यू नो हिंदी और यू नो इंग्लिश, बट नो इट वेल. ये नहीं कि हिंदी बोल रहे हैं तो फिर 4 शब्द आपके अंग्रेजी एक के बगैर कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, और इंग्लिश बोल रहे हैं तो बीच बीच में हिंदी भी, जो भी जानना है अच्छे से जानना है. अब हम यहाँ से सवाल ले सकते हैं. हेलो सर, मैं हिंदी पत्रकारिता का छात्र हूँ, हर्षित मिश्रा. तो सर मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे मैं अपनी पर्सनल बात करूँ तो मुझे क्रिकेट में ज़्यादा इंटरेस्ट है. अगर अदर स्पोर्ट्स से मैं कंपेयर करूँ तो मुझे क्रिकेट का ज़्यादा नॉलेज है अदर स्पोर्ट्स के अपेक्षा. तो सर अगर मुझे इसमें अपना कैरियर बनाना है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर, तो क्या मुझे सारे स्पोर्ट्स का बराबर नॉलेज होना चाहिए, या फिर मैं किसी एक स्पोर्ट्स को टारगेट करके उस पर अच्छा वर्क करके मैं अच्छा जर्नलिस्ट बन सकता हूँ? जिसको भी जानिए बहुत अच्छे से जानिए. मतलब अगर आपको क्रिकेट में बहुत अच्छा इंटरेस्ट है और आपसे पूछ ले कि आपने 5 कौन कौन सी किताबें पढ़ी हैं पिछले 2 साल में क्रिकेट की, ठीक है, तो उस किताब के बारे में आपसे लोग पूछ लेंगे, है ना. आपने कॉर्नर ऑफ ए फॉरेन फील्ड पढ़ा है या नहीं, सनी डेज पढ़ा है या नहीं, वो लोग पूछ लेंगे. दूसरी बात है, क्रिकेट में बहुत भीड़ है, बिकॉज रेवेन्यू जनरेटिंग है, चैनल के लिए भी, न्यूज़पेपर्स के लिए भी. आप ट्रैवल करते हो क्रॉस वर्ल्ड, एशियन ओलंपिक स्पोर्ट फॉलो करते हो तो 2-2 साल में आपको मौका मिलता है कॉमनवेल्थ गेम्स, एशियन गेम्स और ओलंपिक्स जाने के लिए. तो हर एक चीज़ का आंसर वही, आप कितनी अच्छी स्टोरीज निकालते हो. और आप ऐसे नहीं कर सकते हो जैसे बचपन में हम लोग करते थे ना, कि बैटिंग कर लिए और फिर बैट हमारे डैड ने खरीदी है तो हम फील्डिंग नहीं करेंगे. तो वो नहीं आप कर सकते हो कि क्रिकेट करेंगे बाकी नहीं करेंगे, या बाकी करेंगे क्रिकेट नहीं करेंगे. सब कुछ करना है, बहुत ज़्यादा प्रेशर है सबके ऊपर. आपको AI भी करना है, डिजिटल भी करना है, रील्स भी बनाना है, यूट्यूब के लिए भी बनाना है, पॉडकास्ट भी करना है, और एक ही दिन में सब कुछ करना है. और कहीं गलती भी तो आपका चांस बहुत ख़त्म हो जाता है. थैंक यू सर. सर क्योंकि अभी हम कन्वर्जेंस और मल्टी फॉर्मेट की बात कर रहे हैं, ये एक सवाल एक प्रश्न आया है न्यू मीडिया कम्युनिकेशन कोटायाम से कि स्पोर्ट्स डॉक्यूमेंट्रीज़ कितनी इम्पोर्टेंट हैं और कैसे इन पर काम किया जा सकता है. है मैम, इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आपको ना टॉप क्लास बनाना होगा. जैसे अभी एक फिल्म आई है डिएगो मैराडोना पे, वो नेटफ्लिक्स पे जी 7 और 8 सीरीज़ है. बहुत अच्छी सीरीज़ है, लेकिन उसमें ना वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से बना है. मैराडोना को थोड़ा विलेनिश दिखाने का भी, उसके पर्सनल लाइफ को थोड़ा ज़्यादा ही ड्रामेटाइज करके वो करके. तो अब स्पेस है, लेकिन आपको अभी वाला जो जनरेशन है इनके पास बड़ा चैलेंज भी है, अपॉर्चुनिटी भी है कि इनको रेवेन्यू साथ साथ ढूंढना होगा. ज़रूरी नहीं है कि ट्रेडिशनल नौकरी जो हम लोगों ने की वो ज़रूरी नहीं है कि वो मिले, क्योंकि आप अभी किसी चैनल में स्पोर्ट्स का स्पेस ही नहीं है. आएगा 5-7 साल के बाद आएगा, लेकिन इनका एरा निकल जाएगा. तो इनको अपना यूट्यूब, अपना इंस्टा, अपना नंबर्स खुद ही अभी से क्रिएट करना होगा, ताकि आप 2 साल में जब तक जाओ तो आप किसी भी चैनल को बोल सको कि आपके यहाँ जो स्पोर्ट्स एडिटर है उससे ज़्यादा मेरे नंबर्स हैं. तो यू बिल्ड योर केस दैट वे. सो ये सलाह हम भी यहाँ पर सब स्टूडेंट्स को देते हैं कि वो अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करें. जो भी पाठ्यक्रम में वो हैं, जिस पाठ्यक्रम का हिस्सा हैं, उसके हिसाब से और अपने इंटरेस्ट के हिसाब से वो पोर्टफोलियो बिल्ड करें. मुझे लगता है ये बात उसमें भी सर ऐड होती है. यहाँ पर एक क्वेश्चन हम लोग एक प्रश्न ले लेते हैं पहले. गुड इवनिंग सर. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सर आपका कि आप स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के लिए आए, और हमारी जो हौसला है वो ज़्यादा दुगना बढ़ गया आपके आने से. सर मेरा एक क्वेश्चन है कि क्रिकेट की कमेंट्री होती है जिसमें हमारे IIM से पास आउट हैं जतिन सर, बहुत कमाल की करते हैं और उनको हम पसंद करते हैं. हम नहीं, बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं. लेकिन सर जो क्रिकेटर्स होते हैं उनको ज़बरदस्ती वहाँ बिठा दिया जाता है. अरे नहीं नहीं सर, मेरी एक क्वेश्चन पूरा होने दीजिए सर. सर वो मतलब क्रिकेट अच्छा खेलते हैं, उसके ऊपर मेरी टिप्पणी नहीं है सर, लेकिन वो कमेंट्री उतनी बेहतर नहीं कर पाते हैं, उस पर मेरी टिप्पणी है. क्योंकि यहाँ से जो जर्नलिस्ट जाते हैं उनके पास बेहतर अपॉर्चुनिटी होती है, वो बेहतर कर सकते हैं. तो सर उनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती. जैसे IIM से सिर्फ हमें जतिन सप्रू सर दिखते हैं, बाकी सारे क्रिकेटर्स ही दिखते हैं, औरों को आने नहीं देते हैं. सर जतिन ने अपना प्लेस बनाया है ना, उन क्रिकेटर्स के बीच में बनाया है ना अपना प्लेस. आपको बनाना पड़ेगा. आप प्रूव कीजिए कि आप उनसे बेहतर हैं. आप प्रूव कीजिए कि आप आकाश चोपड़ा से बेहतर हैं. जी सर. आपकी एनालिसिस अगर आकाश चोपड़ा से बेहतर होगी,
अब ये पूरा ओपन मार्केट है, आप नहीं कह सकते कि आप सबसे अच्छे हो। आपने यहाँ कुछ बोला और 40 लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, मैंने कुछ बोला सिर्फ 2 लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। मैंने एक रील डाला 1 मिनट का 40 सेकंड का, और आपने भी सेम बात पे रील डाला, लोग आपको यहाँ पे 50 लोग फॉलो कर रहे हैं, तो यू आर अ बेटर स्पीकर दैन मी, ठीक है। वो आप नहीं कह सकते हो कि क्रिकेटर्स बेकार बोल रहे हैं, आप कोई बेहतर आता है तो उसको रिप्लेस करता है। ये अनस्टेबल वर्ल्ड है, इसमें आप अपनी जगह बनाओ, और ये इसमें कोई बाद में होता है नेटवर्किंग और ये सब होता है, बट जतिन टिका हुआ तो है ना वहाँ पे। यस सर, उन्हीं को देख के हम IIM तक आ चुके हैं सर। और सीधे आगे आप हर दिक्कत क्या होती है ना, जितने बच्चे यहाँ से जाते हैं जो उनका मैं CV देखता हूँ मैम, तो 90% लड़के और लड़कियों का होता है कि उनको एंकर बनना है, ठीक है। अब जितने लोग जैसे अभी स्पोर्ट्स फॉलो कर रहे हैं उनको फर्स्ट डे अमिताभ बच्चन बनना है, जतिन सप्रू बनना है, जबकि बहुत मेहनत है। आप मतलब जो भी लोग करते हैं सीरियस जर्नलिज्म कर रहे हैं, चाहे प्रिंट में या टेलीविज़न में, उनका आप स्लीपिंग आवर देख लोगे, ज़्यादातर लोगों को मुश्किलें हो रही हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर वीक में उनको स्लीपिंग आवर पूरा 6-6 घंटा मिल ही जाता है। मेहनत करना है, पढ़ना है, स्टोरीज से मिलना है, नेटवर्क से मिलना है, ठीक है। आपका जॉब केवल पुलिस का भी नहीं है, केवल स्पाई का भी नहीं है, ठीक है, एक रिपोर्टर का भी नहीं है केवल, और इन सब का भी है। आपको मतलब आपको अपना इन्फॉर्मेशन गैदर करना है, न्यू स्टोरीज लानी है, उसको छिपा के रखना है, बहुत क्लोज फ्रेंड को भी नहीं बताना है, ठीक है। मतलब आपको जब तक वो पब्लिश नहीं हो जाए, कुछ चीज़ बताना भी है क्योंकि अगली बार आपको मदद भी लेनी है। तो बहुत ये नहीं है कि आपको मतलब कोई किसी को प्लेटर में कोई कुछ भी नहीं दे रहा है, ना जतिन सप्रू को ना किसी को भी। और जो क्रिकेटर्स हैं, अब उसने उसकी किस्मत है, वो 40 टेस्ट खेला हुआ है और इंग्लिश भी बोलना आता है, उसको हिंदी भी बोलना आता है। आकाश चोपड़ा के फॉलोअर्स आप देखिएगा तो जितने भी यूट्यूब चैनल चल रहे हैं स्पोर्ट्स पे, इंक्लूडिंग विक्रांत एंड आज तक, सबसे ज़्यादा है उसके फॉलोअर्स, सबसे ज़्यादा पैसे कमा रहा है। जी सर, थैंक यू सर। तो मुझे लगता है यहाँ एक बैलेंस्ड अप्रोच मिल रहा है सबको, सब सच के धरातल पर हैं। हाँ, अब नमस्ते, मेरा नाम अंशिका है, हिंदी पत्रकारिता से। इससे पहले एक प्रश्न एक छात्र के द्वारा किया गया था कि कुछ खेलों को संरक्षित करने का, जिसमें गिल्ली डंडा था। आपने एक टर्म यूज़ किया था पैसों के लिए, तो क्या यही कारण है कि आज खबरों की गुणवत्ता वो कम हो गई है? और क्या इस पैसों के लिए शब्द को हम पॉलिटिकल और हेल्थ केयर और सोसाइटी रिलेटेड जो समाचार होता है उस पर भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं कि पैसों के लिए करें? पैसा गलत चीज़ नहीं है भाई, पैसा कमाना है, आपको भी कमाना है, ठीक है, ठीक है। और आपको, आप करो काम, आप रेवेन्यू के लिए आप उसको करो, वो बहुत, मैंने तो बोला कि आप अपना आइडिया सेव करो, गो टू अ बिजनेस पर्सन। अब उनको अलाउड है 2% CSR वो लगा सकते हैं। आपको एज अ जर्नलिस्ट यू गेट एक्सेस टू मेनी अदर पीपल जो आम लोगों को नहीं मिलता है, तो आप वहाँ पे जाके एक्सेसिबिलिटी लो, आप उनके डॉक्यूमेंट्री बहुत अच्छी बनाओ, आप उसका डायरेक्टर रख लो, कौन है बॉलीवुड के सबसे बड़े डायरेक्टर को, उसको बना लो, उसको डायरेक्टर। प्रकाश झा ने मतलब स्पोर्ट्स पे भी फिल्म बनाई है, प्रकाश झा मेरे डायरेक्टर थे। आई गेट there was a friend of mine who used to work with us, who was so Avinash. आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि डेकोरम बना के रखें। So Avinash made a film. Now he is trying to contact me to do films on fallen heroes, because we don't have a niche crowd for fallen heroes in India, but in US and all it is, I mean it is a hot topic. Yes. So a friend of mine works for Warner Brothers. He said we want to make on a sports person who, of course, so fallen heroes are a subject. I mean, ma'am, basically we need to create content which appeals all of you. If मैंने शोले बना ली और शोले पहले 2 हफ्ते नहीं चली थी, तो अगर नहीं चलती तो खराब फिल्म थी, कोई किसी को पता भी नहीं होता। तो आपको फिल्में ऐसी बनानी है, या जो भी डॉक्यूमेंट्रीज आप बनाना चाह रहे हो, जो भी प्रिजर्व करना चाहते हो, सोसाइटी के लिए, देश के लिए करो, पहले अपने लिए भी करो, है ना। पहले अपने लिए भी पैसा कमाना। आपके मदर फादर ने पैसा लगा के भेजा है यहाँ पे, हॉस्टल में पैसे, उनके पैसे पे रह रहे हो, ठीक है, और बोलो कि नहीं मुझे कंट्री के लिए ही केवल कंट्री के लिए अपने आप हो जाएगा। आप अपने लिए करोगे तो कंट्री के लिए गलत नहीं होगा। इफ़ यू आर एथिकल एंड ऑनेस्ट, कंट्री को ही कंट्रीब्यूट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
इसी के साथ क्योंकि समय की सीमा है, हमें प्रश्न उत्तर यहीं पर जो क्वेश्चन राउंड है यहीं पर ख़त्म करना होगा। आप दोनों वक्ता यहाँ पर आए और बहुत इंसाइटफुल चीज़ें हमें जानने को मिली। सर, चाहे वो हम लोग हेल्थ कम्युनिकेशन की बात करें, हेल्थ जर्नलिज्म की बात करें या खेल पत्रकारिता की बात करें, सभी में ट्रेनिंग, स्किल और डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन तो है, लेकिन उससे बड़ी चीज़ जो यहाँ मुझे एक पैटर्न, जो एक कॉमन लिंक मिला, वो है समाज के प्रति आपकी जिम्मेदारी, आपके ख़ुद के प्रति आपकी ज़िम्मेदारी कि आप ख़ुद को रीइन्वेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें और आपका कंटेंट उस लायक बने कि उसका एक मार्केट हो, तो उसके लिए ख़ुद को तैयार करना होगा। तो ये आपकी ख़ुद के प्रति एक ज़िम्मेदारी है और समाज के प्रति ज़िम्मेदारी, क्योंकि यहीं पर मुझे लगता है कि एक इंस्टीट्यूशन का रोल और हम सभी का रोल, मीडिया एज एन इंस्टीट्यूशन और मीडिया एजुकेटर्स या मीडिया एजुकेशन एज एन इंस्टीट्यूशन, उसका रोल जो है वो मार्जिनलाइज सोसाइटीज़ को मेन स्ट्रीम में लेकर आना है, जो कि मुझे लगता है कि हमारे दोनों ही वक्ताओं का जितना भी अब तक काम रहा है, जितने एनेक्डोट्स हमें जो मिले यहाँ पर और जितनी चीज़ें हमने जानी, उसमें एक ये भावना सामने आई कि सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर और एक ज़िम्मेदार पत्रकार में क्या फ़र्क है। तो वो यही फ़र्क है कि हमें अपना काम जिम्मेदारी से करना है और वो खबरें या वो सूचनाएं लेकर आनी हैं जो कहीं ना कहीं छुपी हुई हैं। यहीं पर वो बाइनरीज भी हम लोग कहीं ना कहीं मिटिगेट कर पाएंगे, जिनमें केवल या तो हीरो को देखा जाता है या विलन को देखा जाता है। तो सच्ची खबरें हों, सच्ची सूचनाएं हों, सच्ची कहानियाँ हों, स्टोरी टेलिंग पर हमने बात की, तो वो खबरें अगर सच होंगी, क्रॉस चेक्ड और वेरिफिकेशन तो एक प्रोसेस है, एक ट्रेनिंग का हिस्सा है, लेकिन जिम्मेदारी उसमें एक अहम चीज़ है। तो इन सब इंसाइटफुल बातों के लिए और जितना भी सर आपने और रिद्मा जी आपने जो भी हम लोगों के साथ बातें शेयर की, जो चुनौतियां हैं और जो संभावनाएं हैं उनके बारे में बताया, आप दोनों वक्ताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद ज्ञापित करूंगी आउटरीच डिपार्टमेंट का। मैं खुद भी इससे प्रभारी हूं, तो एक तरह से मैं खुद को ही थोड़ी बहुत बड़ाई तो खुद की भी कर लेते हैं, तो खुद की प्रशंसा भी यहाँ पर करूँगी। एस्टेट डिपार्टमेंट हमारे साथ जुड़ा, उसका सहयोग मिला। यहाँ पर रमेश जी हैं, मेवालाल जी भी हैं, जिन्होंने फ़ोटोग्राफ़ी और वीडियोग्राफी का सारा काम संभाला। और इसके अलावा एस्टेट डिपार्टमेंट की जितनी भी व्यवस्थाएं यहाँ पर आज ओरिएंटेशन के लिए थी, उसका बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बढ़कर कि जिस तरह से ऑनरेबल वाइस चांसलर और रजिस्ट्रार सर, उनका सहयोग हमें इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए मिला, उन सभी का धन्यवाद। मेरी पूरी टीम यहाँ पर मैं ख़ास तौर पे नाम लेना चाहूँगी। यहाँ मानुषी हैं, आकांक्षा सिंह हिंदी विभाग से हैं, मानुषी सेमकोर से हैं, रिसर्च डिपार्टमेंट से, भुवन जी इस पूरे कार्यक्रम के लिए यहाँ पर हैं, और साथ में संजीव जी आईटी डिपार्टमेंट से। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और धन्यवाद आप लोगों का कि आपने अपने प्रश्नों के ज़रिए इस पूरे सत्र को जीवंत बनाया और ध्यान से सुना और बीच बीच में मेरी डपट भी सह ली, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आज का अंतिम सत्र है, तो यहाँ ये सत्र समाप्त होता है। धन्यवाद।